ITMU IGFRI Jhansi, Head of Divisions, dear participants, you are most welcome in the one-day training come awareness workshop on IPR in agricultural innovations and deer management. At the onset, I may like to stand up all for Vande Mataram. Thank you, Pawan. Thank you all. Participants, please take your seat. Please be seated. Now, for formal welcome of our guest, Dr. R.A. Sharma sir, may I request our director sir, please present a bouquet and shawl to our guest, Dr. R.A. Sharma sir.
Now, I request Vijay Kumar Yadav, sir, in charge ITMU, to present bouquet to our director, sir. Thank you very much, sir. Now, I may like to invite Dr. Vijay Kumar Yadav, sir, for formal welcome and brief about the workshop. Thank you, Dr. Tejbir. Good morning to all of you. First of all, I convey our greetings on the auspicious occasion of रामनवमी. आप सबको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं. भगवान राम की कृपा आप सब पे बनी रहे. Today's workshop is a special workshop. We are first highly thankful to the UP Council for Science and Technology for supporting us to organize this workshop. Respected Director Sir and our colleague from ICR, old colleague, Dr. Ramota Sarma Sahab, who is now technical consultant at PBFRA. Our head of division, all the scientific staff, participants from the different organizations, from IGFRI, RLV Institute of Agriculture Sciences, BU, Bundelkhand University. Meanwhile, we have been joined by our another expert, Dr. Aswini Siwal. May I request to our director sir to present a bouquet and welcome to Dr. Aswini Siwal sir. Dr. Aswini Siwal is presently at Delhi University. He is heading the IP intellectual property rights wing of the Delhi University. And we are thankful to both of the speakers who have taken time to join us for this program. Thank you, sir. We all aware because being a agricultural research institution, we know that the research is also a dynamic process, and research is always based on the problem which is arise time to time. And today's workshop will indicate you that what are the innovations which need a IPR protection. Because in our research program we come up with the many kind of the findings. Sometimes those valuable findings goes unattended by the IPR laws of the country. And we know that there are the different IPR laws available in this country, which can be extended to protect our legal rights on those innovations. Our learned speaker, we are fortunate that we have very experienced learned speakers for this workshop. Two of them, Dr. Aswini Siwal and Dr. R.A. Sarma sir, is with us. Meanwhile, we are going to join online by our two another speakers, Dr. H.B. Singh, who have been at head of division plant pathology Banaras Hindu University, and he is one of the highest, you can say that the patent in his name. And then fourth speaker would be Dr. Vikram Singh from the IPTM unit ICR. So I hope that through going through this workshop, you will be going to be upright about the different kind of the IPR procedure which is available in this country. In our institute also, we have taken many steps to protect our IPR that include the patent, filing of the patents and getting patents, design registration, and the copyright and all the form, even the trademark, all those have been processed from this institute, and we have been. I'm happy to share with you that this institute is in the process are obtained about 10 patents, and we have been also applied from the copyright. We have designed, and we have also technology commercialization other part which we are leading. Last year, we have commercialized the technology about the value of about 42 lakhs. And this year, we have been continued, and we hope that we will be continue with our that process of the technology commercialization.
Our scientists has also taken very keen interest, but sometimes we face problem in the writing of the patent, prior search, all those things. It's going to be create problem when we think about the getting a patent. Similarly, the other procedures of the methods of the IPR, which require the knowledge that include the copyright, trademark, design registration, the GIE, PVF, that PVF Act 2001, all those where we can protect the breeder rights and the farmer side as well. So today's workshop will be effort to renew whatever you have learned and to update whatever the new procedure has been emerged, whatever the new laws has been now implemented by the government. So all those things are going to be discussed. So this is going to be very, very interesting day for you, all of you, and where you are going to some of the things which might be aware, which which is going to be refreshed, and other things which you might be heard the word you have heard, but you are not aware about the detailed procedure. Our learned speaker is going to focus on those aspects, and I hope when you will complete this program by 5:30 in the evening, I hope and am confident you will be having very sound knowledge about the IPR procedure of the country. So I welcome to our experts who have been taken pain to be here, Dr. R.A. Sharma Saab and Dr. Siwal Saab, who traveled from the Delhi, and two other speaker, very learned speaker, who is going to join with us online. So thank you, and I hope that we are going to have very fruitful day today. Thank you. Thank you, Yadav sir. Now, uh, to listen about uh, our guest who joined recently, Dr. Ashwini Siwal sir. Sir, you are requested to give remarks about the workshop. Just brief remarks, sir. A very good evening, sorry, good morning to each one of you. With the permission of the chair, Honorable Director Kaushal sir, and my other learned colleagues on the days and off the days, it is indeed my proud privilege to be here. Dr. Vijay was saying that I have taken a trouble to be here. It is not a trouble, in fact, it is my opportunity that, and it is indeed a privilege that I am here with this august gathering of the stars and scientists here. So far as this subject is concerned, Dr. Vijay has already apprised you that there are a lot of kinds of intellectual properties on which you guys are working. Uh, Patents, copyright, trademarks, geographical indications, plant varieties, etc. I, in my address today, shall be taking you to the most lucrative and most important intellectual property, that is patents. And I know that the patent word is a buzzword these days. Everybody talks about it, and we have been for almost 3 decades, talking about that it is a new area. Even today, if I teach my student, he says, "Sir, I have opted this subject because it is a new area." But for us, it is no more a new area. It is area where our scientists have been working. In fact, I am the odd man out in this crowd because I am the lawyer by education, and by profession I am an academics, and I teach law, intellectual property law. But I say that it is the scientists who create the intellectual property. They go for the patent. We lawyers, do assist them, and the patent attorneys also assist them in filing their respective intellectual properties, especially the patents. So I really admire and salute the hard work which you guys invest in creating, in bringing out the new products and processes and new works which are patentable. I believe everyone over here understands that it is a Herculean task to create something which is patentable. It takes time. It is easy to say that patents does not require much efforts.
sometimes you might hear somebody saying that it is not a rocket science, but it really requires an effort because you have to fulfill the very, very, I'll say that strenuous criteria or a stringent criteria of getting the patent protection, which requires a lot of effort. So at the outset, I would like to extend a thanks to this great institution, ICR. This institution has hosted me 30 to 40 times so far, but this is my maiden physical visit to any of the ICR institutions. I have I have delivered talks at the ICR institutions here and there. Uh, Dr. Vikram and Bhushan ma'am had involved me in certain such endeavors or certain efforts in the ICR institutions, but I have appeared online. So again, I extend a heartfelt thanks to this great institution for inviting me and for having me here. Thank you so very much, sir. And I'm looking forward to interacting with all of you. Thank you. Thank you very much, Shival sir. Now, I request our guest, Dr. R.A. Sharma sir, for remarks, please. Dr. Pankaj Kaushal Saab, Director of IGFRI, and today's Chief Guest, Dr. Vijay Kumarji Yadav Saab, who is handling ITMU and this function also, Dr. Tejveer Singh Ji, uh, Dr. Shival Saab, who is something very important for this workshop, giving us different dimension of the patents. Then I also remember our HP Singh Ji and Vikram Singh Ji who are joining online. They are important speakers of this. I thank the team of Director Saab and Director Saab himself for giving me this opportunity to interact with you. And I also thank to my chairperson, Dr. T. Mahapatra, and our Registrar General, Dr. Dinesh Agrawal Saab, who has been from IGFRI. He worked here sometimes for giving this opportunity to me. In fact, I congratulate and thank Director Saab for keeping this subject for this workshop, for this discussion, because we are still evolving on patents or protection in the plant system. And this is an opportunity to everyone, every Indian, every farmer to participate in this, to convert his knowledge and genetic resources into monetary terms. So it is very important topic. And of course, the involvement of each Indian is required to protect our genetic resources and convert into the marketable product. So we'll be discussing all those things. I thank you very much. Thank you, Sharma sir. Now, I request today's chief guest, our director sir. Please encourage our participants, sir. आप सबको मेरा नमस्कार। जो हमारे गेस्ट हैं उनका आईजीएफआरआई में स्वागत है। आवर स्टीम गेस्ट डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर सहवाल, ऑनलाइन जुड़े हुए डॉक्टर एचबी शर्मा और विक्रम। वी आर ओल्ड कलीग्स
Sharma sir has stature of our senior and teacher sir. और जैसे आपने कहा कि ये आपकी पहली विजिट थी सहवाल सर की आईसीआर इंस्टीट्यूट में, तो मुझे लग रहा होगा कि आप भी इक्वली एनकरेज होंगे बाकी आईसीआर इंस्टीट्यूट जाने में. दिस इज द लेगेसी ऑफ आईसीआर इंस्टीट्यूट्स कि एक छोटी सी क्रॉप जो हम देखते हैं, एक छोटा सा दाना होता है राइस का या व्हीट का या एक छोटा सा सेब का फल, एंड देयर इज अ होल इंस्टीट्यूट वर्किंग ऑन दैट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स genotype into environment interaction that leads to a particular phenotype. ये जेनेटिक्स का प्रिंसिपल है जिस पर कि सारी वेरिएबिलिटी डिपेंड करती है. सो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स वो स्टडी है जो ये बताती है कि आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो तो क्यों दिखते हो, और अगर नहीं दिखते हो तो क्यों नहीं दिखते हो. हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो ये एनवायरनमेंट एंड योर आइडिया व्हेन दे आर प्रॉपरली fed up in a beautiful environment where you know कि आपको क्या बनाना है, क्या रिसर्च करनी है, who is the taker, what is the potential. तो वो जो एक पैमाना है वो जब आपको समझ में आ जाता है तो अल्टीमेटली जो आपका एक लाइन ऑफ वर्क होता है वो उस लाइन पर आ जाता है कि वो प्रोडक्ट के साथ साथ आपके इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपका जो दिमाग में जो ग्रे मैटर है आईपीआर उसको भी प्रोटेक्ट करता है. And now we talk everything ki what is the economic return. And this IPR is one of the ways that economics is returned by the stakeholders or the contributors of particular khoj, particular research. I'm very happy to see so many participants here. This is one of the rarest occasion at this institute कि हमको chairs extra लगानी पड़ रही है इस कमरे में. Otherwise, we have a capacity of about 300 chairs in auditorium. But this is very good कि दो चीजें, एक तो ये हॉल पूरा फुल है, that shows कि people are really interested in understanding this topic, this theme, this idea. And number 2 जो और एक चीज करी है कि आज शायद अगर एवरेज एज निकाले हम इस हॉल में बैठने वालों की, तो अभी तक के जो 64 साल जो हुए हैं आईजीएफआरआई को, आज यहाँ बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स की एवरेज एज सबसे कम होगी. आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स, देयर यूनिवर्सिटीज. आई हैव बीन टोल्ड कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हैं, आरएलबीसीयू से आए हैं, और हमारे इन हाउस काफी स्टूडेंट्स भी हैं. मे आई रिक्वेस्ट बीयू से आए हुए स्टूडेंट्स हाथ खड़े करें प्लीज. गुड नंबर्स, वेरी गुड. एंड आरएलबीसीयू से वेरी नाइस. अब बचे हुए हमारे हैं, आई कुड सी दैट. एनीवे, सो दिस इज गुड. वी वेलकम यू ऑल. सर हमारा एमओयू है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से भी, आरएलबीसीयू से भी, and we have been constantly exchanging ideas, HRD trainings, as well as students for their masters and PhD degree. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप अपने अपने हिसाब से यहाँ से ज्ञान लेकर जाएंगे और एक चीजों को देखने का तरीका शायद बदलेगा. एक एक्सपीरियंस जो हमको कहता है, जो आज की तारीख में चेंज हुआ है, जब हम लोग आपकी एज के थे और आज जब आप यहाँ बैठकर इसको अटेंड कर रहे हैं, तो एक जो नजरिया चेंज हुआ है कि पहले हम सब कुछ जो हमारा आउटपुट था वो रिसर्च पेपर्स के तौर पे नापा जाता था. आज की तारीख में जो आपका आउटपुट नापा जाता है, दैट इज बेस्ड अपॉन आउटपुट्स, वेदर यू हैव पब्लिश्ड इट, वेदर यू have some IPR on that, whether it is a copyright or it is a patent or it is a trademark or whatever idea. So you can have that appreciation of the idea once you complete this workshop today, कि कैसे आप अपने ideas को, projects को आप कैसे उसको protect कर सकते हैं. What exactly you should start learning, what exactly is IPR protection. Protection क्या होता है IPR का, और intellectual property क्या होती है, कौन कौन से phases, कौन कौन से parts इसमें आते हैं, कौन कौन से components नहीं आते हैं. At the end of the day, what I request you should be very clear कि आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, आपको पता है कि आपको उस काम से क्या निकालना है, और उसमें से कितना पोर्शन छापना है और कितना पोर्शन छुपाना है और कितना पोर्शन को आपने मनी में कन्वर्ट करना है. दैट्स ऑल. एंड ये एक पैराडिम शिफ्ट आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में आ रहा है ड्यूरिंग कपल ऑफ ईयर्स.
we have been selling the technologies directly or indirectly. जैसे सर कई बार हमसे पूछा जाता है कि फॉडर क्रॉप्स का क्या इम्पैक्ट है, वो आप दिखता नहीं। आपने एक वर्ड यूज किया था सर, रॉकेट साइंस, तो वहां से एक आइडिया दिमाग में आया था। वी ऑल अप्रिशिएट efforts of ISRO because we can see a 400 crores rocket going to the sky and a beautiful commentary and live telecast of that. हम लोगों ने हमारी फॉडर क्रॉप्स वैरायटी का इकोनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस कराया सर। जिन लोगों को पता नहीं है, फॉडर क्रॉप्स में वी वर्क ऑन मोर देन 50 क्रॉप्स, डाइवर्स क्रॉप्स, जिसमें कि सीरियल्स भी हैं, लेग्यूम्स भी हैं, एनुअल्स भी हैं, पेरिनियल्स भी हैं। And in these about 50 crops during these 62 years, we have released more than 450 high yielding varieties. और ये high yielding varieties जब farmers पर गई तो धीरे धीरे जो सेल्फ रिलायंस आया फॉडर क्रॉप्स में, वो इमीडिएटली सामने नहीं दिखता है until and unless you have a deeper observation of the situation. During these days, अगर आप सर 25 से 30 साल पहले डेफिसिट देखो फॉडर क्रॉप का, इट वाज अ डेफिसिट अबाउट 60% इन ग्रीन मैटर एंड 50 प्लस डेफिसिट इन ड्राई मैटर, जो जानवर खाता है, हरा चारा या भूसा। आज की तारीख में पैन इंडिया एवरेज हैज कम डाउन टू 11% इन ग्रीन फॉडर एंड अबाउट 23% इन ड्राई फॉडर। एंड आवर साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट कि जब तक ये विकसित भारत वाली कहानी आएगी 2047 पर, वी आर एनकरेज्ड एंड वी आर कमिटेड कि ये जो डेफिसिट है इसको 5 से 10% के बीच में ले आएंगे। एंड वी हैव टेक्नोलॉजीज फॉर दैट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट हैज गॉन टू द फार्मर्स फील्ड। तो ये 480 है बल्कि आज की तारीख में, इफ यादव सर कैन करेक्ट मी, तो 480 हाई यील्डिंग वेराइटीज फील्ड में आई हैं। और जब हमने इनका इकोनॉमिक एनालिसिस कराया by trained economists, we have 2 economists at this institute. Dr. Bhaskar is here. Dr. Bhaskar is our economist. जब ये एनालिसिस कराया तो we got analyzed the economic impact of 13 high yielding varieties only, and you will be surprised to know that during 10 years the contribution economic impact of these 13 varieties is more than rupees 50,000 crores. And this is the impact what we have generated at this institute. एक variety maize की है that has given more than 15,000 crores rupees addition to the contribution to the Indian GDP. तो कभी कभी हम बात करते हैं सर, एक साइड आप इसरो का रॉकेट खड़ा करो वो 400 करोड़ का है, और एक साइड हमारा मेज की अफ्रीकन टॉल खड़ा करो वो 15,000 करोड़ का है। So this is how you present the things in more convincing manner. The best paper is the paper which can convert a routine data into very interesting findings and discussions. और उसमें से निकालिए आप क्या करते हैं। We have been working on grasses since last 25 years, and we are the only institute at this in India who can breed grasses, who can make crosses. But वो एक हमको इम्पीडस नहीं मिला, क्योंकि घास तो घास है, चारा बेचारा, घास तो घास है। But our scientists gave a different view to the system of grass utilization. छोटी सी एक जो दूब होती है वो भी घास होती है, और जो गन्ना है और बैम्बू है वो भी घास होती है। They proved the diversified use of grasses in bioenergy, in stress tolerance, in providing nutritional security. शाहिद साहब हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है क्रॉप इंप्रूवमेंट डिवीजन के। इनका डिवीजन हमेशा एक चीज कहता है कि ग्रासेस आर द बिगेस्ट रिजर्वायर ऑफ डिजायरेबल जीन्स because they grow at the places where other crops refuse to grow. Taking out these desirable genes and putting into the crop of your interest has tremendous utility and potential. And IGFRE has sold this potential to Reliance Industries in 100 crore rupees.
With the help of Reliance Industries, we are in the process to establish a center of excellence for research on bioenergy grasses. This is how you sell it. We are also trying to sell the ecosystem services being evaluated by one of our departments in grassland and silvipasture management. Calculation of carbon credit is more than 50,000 rupees when the grassland is used as a system. तो ये वो चीजें हैं कि how can you give a different dimension to the discoveries that you have made, और वो different dimension क्या होगा, वो आइडिया कहां से जनरेट होगा, वो आइडिया प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा टू अट्रैक्ट स्पॉन्सरशिप. What should be the line of work that you should be taking when you go for execution of a project? And ultimately उसमें से क्या छुपाना है, क्या दिखाना है और क्या बचाना है और किससे कमाना है, इसकी समझ, और अल्टीमेटली द लीगल इश्यूज. तो ये जो 4 या 5 स्टेप्स हैं, आप क्या आईपीआर में कर सकते हैं, क्या क्वालिफाई करते हैं, आप कैसे बेस्ट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ग्रांट्स आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूशन, और उसके बाद गेटिंग द आईपीआर. ये जो 4 या 5 पॉइंट्स हैं, ये चारों पांचों पॉइंट्स, वी आर वेरी लकी दैट वी हैव एक्सपर्ट्स टू स्पीक ऑन दीज लाइंस ऑफ वर्क. एंड स्टूडेंट्स, dear friends and our young scientists, this is an opportunity because you are at the start of your career. कि अगर आप इन चीजों को अपने साथ लेकर चलेंगे, ये एक डायमेंशन आप अपने थिंकिंग में जोड़ेंगे, definitely is going to pay you very, very high, both in terms of remuneration and also in your career graph statistics. With these points, again, we welcome you all at IGFRI with a request कि ये जो वर्कशॉप खत्म होगी, इसमें से डेफिनेटली यू विल टेक डाउन सम गुड मैसेज होम, imply it, and the best utilization of what you have done today in this hall. I am very thankful to the sponsors who have sponsored this one-day training, and to our learned experts who have agreed upon to share their knowledge of decades into minutes, summarized into minutes, and also to the ITMU of our institute, who has very timely arranged this workshop and also were able to get the best minds on the dais. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Thank you, sir. Now we are at the end of inaugural session of this workshop. Before going to the IT, we will assemble at the lawn of this institute for photograph. So I may request all, please assemble at the lawn. After photograph, we will so please join us for high tea at outside of this hall. Please join us. Thank you each and every participants who have joined this program. ये सब लाइव है याद
respected guest, dear participant, you are most welcome in post-inaugural session. We are going to start our first lecture, that is IPR in Indian agriculture. Dr. Vikram Singh, who is going to join recently. Before that, I may like to read his biodata. Dr. Vikram Singh is currently working as senior scientist at IPTM unit, ICAR. He has about 15 years experience of management of IPR in agriculture. He did his MSc and PhD from NDRI Karnal. Currently, he is coordinating with 50 ABI centers and 89 ITMU under ICR, National Agriculture Innovation Fund, for their innovation and agribusiness management activities. So, I may request Vikram sir to please present his lecture. Thank you. Thank you, Dr. Tejveer ji. Am I audible to you all? Yes, sir, you are very well audible. Thank you. Thank you very much. A very good morning to all. Respected Director of the Institute, Dr. Kausal Sahab, Dr. Sharma Sahab. There is a relation and attachment with Sharma Sahab. His father was our teacher, Dean of the college and Dean PGS. Dr. Sharma Sahab ko namaskar, pranam. Dr. R.K. Sharma ji was a renowned scientist in spices in India at the time when we were in the West. So today I'm lucky to see the son, though he was in IRI, we never got a chance to meet him. But today I got a chance to interact and see him face. Dr. Siwal Sahab, IP professional, not only professional, a best teacher, innovator, and a scholar in IP. Though many professionals are there in the law domain who are working in IP, in Delhi University, NLU, Bangalore, Jodhpur, Bhopal, Lucknow, even in Mumbai also. But his keen interest from 2008 onwards put him in on dais, silver screen, and now from last 4 or 5 years, he is kind enough to spare his time from his busy schedule to work with ICAR, to give his knowledge, and many a times he just like a learner listening to us also. I congratulate to IGFRI and respect to the director sir who gave us this opportunity to invite Dr. Siwal and facilitated and felicitated him at IGFRI family event. Thank you, Dr. Siwal sir, for joining us. Two of my student life senior, Dr. Patwaji and so there were my senior scholars at this time. I respect to them also. All the professionals from different universities, academia, industry. Today we are here to learn IP in agriculture. As Dr. Siwal has mentioned in his initial remarks, that from last 30 years he is trying to convey the message that IP is a subject, and still people are feeling, no, this is a dry subject, this is not a proper main theme subject. But some databases may attract you to the time has come that we should not and we must not avoid all these things. These are the part of our research life now. And not only they are part by burden, they are giving in the form of knowledge, in the form of case and kind. They are giving recognition and they are giving fame and name also. If you can see the NIRF ranking of the country, where government is having a separate website for that one, a separate department is working on that. Most of the bank loans, specifically in the
innovation or research in education sector based on that NIRF ranking. People from the ICR background who are here in this hall, they know in last 3 years ICR is distributing technology certificates on our foundation day on 16th July. More than 20% of the criteria for selection of these technologies are innovations based on IP. NIRF ranking mostly 10 to 12% based on the IP. Very recently, last month, we had AI mission, AI summit, International AI Summit at Delhi. And we got 1 or 2 universities' name, positive or negative, you may know because you've gone through different papers. How IP impacts. Last week itself, one medicine come out from the 20 years negative regime of patent in the market now, and how people are eagerly waiting for that medicine which can sort out the problem of obesity and diabetes. Not only India, throughout the world, many countries developing, even some developed countries also waiting for such medicines because now they are coming in the public domain. So in such a scenario, people we all are who are working in the science background, we must know about some facts and figures of IP. Though I'm not an IP professional, just like learner from you all, Dr. Sival is here. We are lucky enough that we are having a professional here who can teach us, who can guide us about fact and figures of IP subject. For example, when we are going to study or read about the patent, there is 3 major criteria of a patent. In general, we can remember, we can write, we can read, or we can say or we can narrate different programs. But Dr. Sival will tell you what exactly these 3 parameters are there. And that 3 parameters, if we can understand, I don't think we may lose our patents. We may have any hurry or any fear to file patents in any of the area of subject domain. Dr. Yadav sir has mentioned only 10 patents filed by IGFRI. 60 plus years old institute. But a small institute which is having only 15 or 20 years age in ICR system itself, in the corner of the Northeast is filing more than that one. Why it happened? Only and only due to awareness. I'm happy and on behalf of all the participants who are here, I will convey my best regards to Dr. Kosal Sahab, who took keen interest from last 3-4 years. This institute come up well. Not only in IP filing, even in startup ecosystem, entrepreneurship activities also. And not alone, this institute is every time, whenever they are organizing any program or any activity, they are inviting their sister institutes, nearby institutes, and adding the value in their research domains also. So today I will share with you the initiatives taken by ICAR in this IP system. I hope that may add the value in your knowledge or give me opportunity, if any lacuna is there, to learn from you all. Is it visible to all? Not yet. Now visible. Make it full screen. I have made from my side. Yeah, thank you. Now it's visible and complete. Yeah. Thank you very much. So we are here to discuss about IPR in Indian agriculture. When we are talking about IP, we should have innovation. In agriculture, Green Revolution is the best example, not only in agriculture sector, even in allied also. This is the revolution which changed the scenario of the country, not only for the production point of view, economic point of view, social point of view, and specifically international relations point of view. This one revolution, this one innovation changed the country from beggar to donor.
we must have to innovation, not only in any life sciences sector or health sector or in engineering aspects, in agriculture also. We have to manage our innovations. How to manage? First, we have to protect. If we are having a land, we are having a plot, we are having any vehicle, we have to register. Otherwise, nobody can claim, anybody can claim for that. How to fight for that? We should have some registration. If we are having technology innovation, you have registered, protected, it has to reach market. Otherwise, in general way, people are blaming to us that in agriculture sector, research is lying in the laboratories. It's not reaching the farmers. There is the lab to land is not working, but the gone are days. Now things has totally changed. How to interact industry with us to increase such innovation transfer? Incubation is essential. Startup ecosystem came in the new idea in the country, which changed economic scenario of the country, and then the way forward. Why we need the innovation? To feed the world's largest population. There is no alternate with us. Now, the growing policy and political will of the country, the responsibility is not only for the country's population. Now we are responsible for many countries' population to feed. India is becoming a disease hub day by day, specifically lifestyle diseases. 10 to 12% role in the disease burden in the food habits. 85 plus varieties we have already released, the biofortified varieties, to add the value in health sector. In the same way, we have to do a lot. We have to provide food alternatives. Food habits are changing like anything. To maintain the balance of food market, source of innovation, our system is there. You all know, world's largest agriculture research ecosystem is there in the country. We are having innovations in all possible domains: crop production, protection, food processing, fish, mechanization, fish production, animal sciences. But we have to have a tech transfer mechanism, and more than that one, a feedback system. If you can see the initiative in the IP sector, before independence, 3 laboratories were there in the country. Later on, they merged in ICR system. Mumbai, one cotton research laboratory, Kolkata, jute research laboratory, then Ranchi for lac research laboratory. Because in 1911 itself, India had its own IP system, though it was for the Britishers, but it was in function that time. More than 21 patent applications filed by these laboratories before independence. After independence, Dr. Sival will discuss in detail that how Indian patent system grown up and how it started and all. The first patent application was filed by IPR, and that was a Desi plow. Still, the document is available on Patent Office website. Now, we used to call that plow is MB plow, mold wood plow, to pulverize the soil to increase the root depth. That's still in function in the rural area. There was no system of IP protection in the council up to 1995. But due to the interest of individual scientists, 74 patent applications were filed by scientists of ICAR. And it's very interesting to share with you all that 74 patent applications all got granted, not a single got abandoned. Because they filed with their own interest. There was no pressure. After that, in 1996, our seniors, they realized the importance of IP. Same time the WTO regime came, TRIPS regime came, and we started to realize the knowledge
know-how of ICR which are generating in their laboratories and come up with a separate guideline to manage our professional knowledge. That is now also in function with the revised. Then after, when the Patent Act changed and process patent and product patent issues came in the market, and our professional realized that council should have its own policy to transfer the innovations. In the government department, the first time council implemented a separate well-professional guideline on IP management and technology commercialization in 2006 itself. That was first time in all line departments in the council. That system works. And luckily we got a project, World Bank funded project, National Agriculture Innovation Project, NAIP. Both the systems work together. And in 2006 onwards, the IP scenario, management, licensing, everything started. How to implement, institutionalize the system in council to work together. A three-tier IP management system was institutionalized, where each institute will have Institute Technology Management Committee and unit. Director will be the chairing that unit committee, and institute professional will be part of that one. They will think, they will discuss, they will finalize what should be protected, what should be licensed, what should not. Institute is empowered to take a decision on all national level matters up to 50 lakh rupees. Just now, Director Sir has mentioned that they have signed an MOU with the Reliance. That MOU itself showcasing the value of the institute's research, interaction between public and private, and to work together for the farmers community. To support this institutional system at a zonal level in the particular subject domain, zonal technology management units are working in 10 institutes, like crop science, horticulture, engineering, animal science, fisheries, like that. At central level, to support, to guide, to add value, to understand, to listen the complaints or suggestions, Institute IT, Intellectual Property and Technology Management Unit is also in function with the support of all these institutions. To support the licensing activity in 2011 itself, a for-profit company, very recently, 2 days back itself, Council has issued an order to simplify, to add the value in the licensing activity of the Council. This company is only and only to support the institutions to transfer their innovations, national and international level. Now, what is the IP filing scenario at national level before we go to the agriculture sector? How policy works. In 2016, when new IP policy was implemented in the country, Dr. Sival will discuss about that policy in detail. I'll just share with you the fact. In last 5 years, you see 50, near about 40,000 patent applications were filed by different institutions, the Indian Patent Office. And that number is increased, is before you know. But before that, if you can see, who are the filing agencies? More than 60% foreigners. In 2020, only 24,000 applications were filed by Indian applicants, and 34 by one minute, some movement is there. Yeah. 2015-16, only 27.86% applications were filed by Indian applicants at Indian Patent Office. With the impact of these guidelines, today 62% patent applications are going to file by Indian applicants.
That shows the value of IP filing, that value of this policy impact. At present, Indian Council of Agriculture Research in total has filed more than 1,800 patent applications out of the 733 granted. If you can see the plant variety, though PPF authority will be discussed by Dr. Sharma Sahab, more than 20,000 plant variety applications received by PPFRA in last year, in my knowledge. But Council has filed 1,649 applications up to 2025. After 2016-17, due to the different awareness programs, copyright applications also increased in the council. More than 1,100 copyrights we are in our account. And 50% of that one filed in last 2 years only. Due to rigorous awareness, Dr. Sival was also part in all these activities. And to Dr. Sival, this is before you that 1,100 copyrights we have already secured at Copyright Office. 292 designs, patent designs also we have filed. Earlier it was not there. And 438 trademarks. Indian Patent Office is receiving every year near about 5 lakh trademarks. This is the Desi flow diagram which we have filed in 1950. This is the scenario how patent, I'm discussing about patent more specifically here because now in general people are thinking about the patent only in the IP. So in agriculture sector, in specifically ICR is only the leading applicant in India for patent application. CSIR also has filed 430 patent application in agriculture sector in last 15-20 years. But ICAR started from 1950 to 2000, only 117 applications were there. Growth you can see only 16-20 period. Worldwide there was a fall in patent filing, not only in India. Worldwide is a fall due to the COVID also, it was one factor of the COVID, and then the industrial applications were also the part of that one. 85 institutes, overall 95 ICR institute having one or more than one patent application now. And 28% of these applications were filed for animal science sector and 24 from crop science. This institute for the crop science sector. So we are having a good number of applications filed in this sector. The growth you can see in the last 5 years, near about 40% growth in IP filing in ICR. This shows that how IP is important. Why we should protect our IP. Now we can't hide our innovations. We can't sit to be alone. We can't go in the high silos that we will file or we will not file. This is not useful. No. Most of the international projects are based on IP file. And one thing, some noise is there. Dr. Tejveer, some noise is there. Yes. This growth can be an opportunity for all of us to increase our IP file. This fourth slide, patent legal status. See, in the next slide, I'll also brief about this one. These 3 facts which we got from our different analysis, and shortly you will receive a separate book also on this patent filing trends in ICAR. But if you can have a view or a look on the IP filing in agriculture sector, specifically in the ICAR here, more than 70% of patent filing top 25. And out of that, IRI is the leading center, followed by NDRI, IVRI, records effect. IGFRI, because we are having up to 2025 data, so we are having only 9 applications here. 48th rank of this institute.
and that should increase, I hope, shortly. These applications filed in which sector? This shows that where we are having more scope in the market. When we are going to file a patent, when we realize there is a market for this one, then only we will go for a patent. Food processing sector is having 18.2% share in this IP filing with 52 institutes. 300 plus food processes recipes of Indian Council of Agriculture Research are already published and submitted to food processing industry, and most of them got licensed. That shows the strength of food processing sector in the ICAR and in the market demand. Animal health sector, crop protection, technologies. One single institute of the council, IHR Bangalore, is having more than 30% share in this plant protection sector due to the biopesticides. Biotechnology and life sciences also having 9.91% share. Now, Dr. Siwal will add value here in his presentation that filing is not important. To maintain that application is important, because once we are going to file a patent application or a trademark application or copyright application or any design application, specifically patent we have to maintain for 20 years. You have to pay for that. And our patent application should have fulfill the 3 criteria which Dr. Siwal will discuss, then only it will reach to the grant. But due to lack of awareness, earlier what happened, in 2001 to 2005, out of total filing, 60%, 64% loss was there. 64% patent application generally used to go for abundance. 2006 to 10, that improved by 60%. 4% we have reduced. 11 to 15, again we reduced it by 44. Then 16 to 20 come up to 10%. Now it is 0.66%. I hope Dr. Siwal will add value in his presentation. There will not be a single institute specifically in the government sector which is having such a scenario of a minimum level of abundance of patent application in the country. For 57.6% of our patent applications are in force. What is in force? Dr. Siwal will explain in his presentation. USPTO, European Patent Office, and in American Patent Office, eSpaceNet and USPTO, their grant success ratio is 52%. Our enforce ratio is 57.6%. This is a strength, value, and opportunity for the council, specifically in the agriculture sector. Thanks to all the professionals who are working together, supporting us, guiding us, giving their suggestions. Thanks to leadership like Dr. Kaushal Sahab for always supporting us to add value in the agriculture research sector and in this domain. Technology licensing. After filing these patent applications or plant variety applications or trademark or design or copyright, or if you are not filing, then also our know-how should transfer. With the policy support, public-private partnership support, government policies, new IP policy, near about this data is updated up to 2024, so 1,000 is less. Near about 6,000 licensing agreements we have signed with more than 2,700 public-private organizations in last 18 years. We have licensed, we have transferred more than 1,800 technologies, per se technology. 85 plus ICR institutes involved in this activity. There is no state and union ICR research easily through proper agreement. This is the strength of ICAR. As Dr. Kaushal Sahab has mentioned, the value of their research. So see, 103 research institutes are in the council. What value of that institution's research is there? If one institute having this much value, then what about others like IRI, NDRI, CIFE Mumbai, IBRI, IHR Bangalore, giant institutes in the subject domains.
If you can see the plant variety sector specifically, 32 ICR institutes are working in the plant variety, and they have licensed their 458 varieties, 83 crops, 458 varieties to around 2,300 agreements they have signed. And that has reached through 975 public and private. One single wheat variety of IRI is covering more than 15% area. If you can see the total technology domain, where we are having more innovation and where we are having less innovation, which innovation is more important in the market, because these are the innovation which classified on the basis of market demand, which are already reached to the market. 21%, in the first slide also I have discussed, 21% of our patent applications are innovations in the food sector, 22% in the seed and planting method. This institute is working in the seed and planting method. Signed agreement with Reliance, it's a valued material. I know the strength and prosperity and research domain of Reliance. I was there for different positions in Reliance earlier. So this is an opportunity for this institute to work. In plant variety, you can see 2 years back we have published which crops variety has already reached. 74 cereal varieties already licensed and market now. Flowers, fruits, oilseeds, spices, textile, vegetables, 88 vegetable varieties are there in market. Now, before licensing activity, we are talking about the patents. And in patent, the third criteria is to reach to the market. We have filed this month. I have discussed that these many patent applications we have filed and secured at Indian Patent Office, and we are not losing now, only come to 0%. But how much we are licensing? The world average is to 5 to 7%. Dr. Sibal may discuss in his discussion. But at Council, 19.73% of our filed patent applications we have licensed to 1,000 plus, through 1,000 plus agreements. Though we are not having any data from CSIR or ICMR or DRDO because they are not publishing it, but I have worked on the working of patents, one of the Form 27 part of Indian Patent Act that is mandatory to file by an institution who got a certificate of patent, that licensed or not. That data also shows the same trend. But interestingly, in that data, more than 60% applicants are from abroad. I'll just share with you some international facts also there. See, China is the leading applicant in the world. Most of the IPs. Second is USA. Third is European countries, specifically. Then come to this Germany and then Japan. But in agriculture sector, who are the applicants? Bayer is a company which is the highest patent filing applicant throughout the world in agriculture sector, followed by China's Forestry University in Ninjiang, then Monsanto, then D-Level, then SAP, then again China's University Sichuan, then Pioneer, BASF, Syngenta, and Dow Agriculture. These are the organizations, universities, companies who are filing patents. If you can see the Indian patent databases in agriculture sector, specifically, I'm sharing with you that every week, some of the companies like Bayer, Monsanto, Pioneer, they are filing patent on every week basis. One example I'll quote here from the animal science sector.
ICR's 2-3 institutes are working on foot and mouth disease FMD. ICR is having a very good hold in this research. Already released vaccines, they are in market. Country had very good control on this disease also. If you see the patent portfolio of this particular disease worldwide, you will not find Indian applicants anywhere. Same time, if you see the Indian Patent Office databases that how much applications we are filing to protect our foot and mouth disease sector of research, you will surprise most of the applicants are from different other patents. What it impacts us, they stop us in our country to do the research because patent it is geographical matter. I will request Dr. Siwal, this is very critical fact that you have to discuss and I urge to you to discuss this in your presentation. And 2-3 things which I should not forget to add here. Dr. Siwal will add 2-3 points here for you all, that what are the opportunities for the researchers, scientists to protect their innovations after publishing a paper, after publishing a research paper. How we can go for the early publication. In general, earlier, 5 to 6 years we used to take for the granting in a patent, but now ICR institutes are getting 5 to 6 months a granted patent. How we can get that? Form 27 and many other new avenues are there in the Indian Patent Act that supports our research domain. One more thing I want to share here with you. It is regarding licensing. So how to attract the industry to transfer our innovations? Business incubation is a new concept. Though it's not new, in 2006 itself Council adopted that one. But particularly in engineering sector, it was on a higher side. Now slowly it entered in different other domains, also in medicine and agriculture and then in food processing. 50 agribusiness incubation centers are in function in ICR as we mentioned. After 2016, when the Government of India implemented Startup India Mission policy also, with the department support from the DPH. And you all know we were with only 400 startups. There was no definition at the time that what is startup or not, but on the basis of the client definition, we listed the 400 startups out there. Now, world's second largest startup ecosystem is functioning in the country. That shows the policy, support, and political will. And specifically, the research domains support to these policies. There are about 1,600 startups are in market who got support from ICR sectors. This photograph specifically I made it here. Brazilian embassy with their startups and incubators came to ICAR to learn our nations and add the research value in their system. If you can see this data I updated in the last year, I think December for the time. In agriculture sector, how many startups we are having? 1,100 incubators are in function in the country, but in agriculture sector, not more than 100. Out of that, 15 ICR. So there is a huge scope in this sector. Now, in last 2-3 years, what are the awareness initiatives we have taken here? The base for that awareness was, I think this may help to you to how we can improve our own IP portfolio and why we should have this one.
if you can see the overall databases of NAR system and ICR system here, how much IP we are having and what should do for to increase it. Patent, if you can go for 5,000 scientists and overall, only 0.56. Plant variety 0.34. Corporate 0.36. Design and trademark before you. Overall, if you can see, we are not even at 1. How slowly we are increasing. Students are here from the university and some scholars also may be there in this studies. Friends, if you can visit Indian Patent Office design database, most of the designs filed by MSc, PhD scholars who are working in the engineering sector. Scholars, due to awareness, nowadays young minds are very curious and they are fast, and through online system they are protecting it because government gave many leverages to them to fight for that. How to increase that one? We set targets. One project, one IP. If you're filing a 1 minute, sir. Jayant, I'll join you after 10 minutes. No. One project, one IP. And that helped us. With this support, we are increasing day by day. Why we should file? Near about 5,300 scientists are in job at ICR in different institute, regional stations, and different subject domains. Out of that, 2,300 scientists are having their 10-year service still. And they all are working in these subject matter divisions where patents are coming. They are laboratory-oriented scientists. Animal science, engineering, crop science, fisheries science, horticulture science. I took the scientists who are in biotechnology, biochemistry, food science. I have not taken general economics or extension scientists here. Scientists who are working in the laboratory, they are 2,300 and they are having 10 years service still. If one scientist can file one patent in a year, how much it will be? Because I will name here, there is no hesitation for that. Indian Patent Office annual report is publishing now. Galgotia University, lovely professional university, MIT University. Their life is not more than 10 years. They are filing 1,000 and 1,000 patent application every year. And many of them are in the process of grant. I will request Dr. Siwal Sahab to add some value on that because that screenshot is taken from the Indian Patent Office annual report. If we are not going to file, we are not going to protect. But one scenario I will share with you, before 5 years, in general at IPTM unit, we are receiving different research projects to comment on the IP issues. Before 5 years, in general, every day, 1 or 2 projects we used to receive, specifically from the international grants in animal science or fisheries and crop protection or biotechnology. That number reducing day by day. Most of the grants are hijacked by such institutions with the name and fame of such portfolios. You have to be alert. People are hijacking our research domain and grants. The impact of IP policy, if you want to see here, I have analyzed one databases of 1,100 universities of the country, 1,170 UGC approved universities. Out of that, 421 university initiated IP protection after 2016. Before 2000, only 7 universities filed 94 patent applications. 7 universities. This is not only alone in India, even abroad also the situation was same, except few universities. 2001 to 5, 43 universities initiated
filed 588 application. But see, in 2021 to 24, 80%, 34,000 applications plus applications filed by these universities. But out of all these universities, only if you can see the top 50 university of these this system, only one university from the government side in the top 50. I hope this slide may attract you why we should find. So this is all about the glimpses of IP filing in agriculture sector and specifically patent system in ICR and other institutions. I am here to listen from you, learn from you if you want to add something. If I can add some value, please. Thank you, Dr. Vikram, very beautifully presenting the scenario of patent and other IPR regime in agriculture in particular, and how we stand as a institute, as ICR, and you have already indicated that where IGFRI stands. This rank 48 in terms of the filing of patent. We are trying our level best, and hopefully this situation going to improve very soon. May I request to the audience, the who is very there, anyone like to raise any question to Dr. Vikram, please? Anyone like to ask any question? Yes, please. एक्चुअली सर लगता है लेक्चर आपका सबको समझ में आया, और चूंकि इतना डिटेल्ड आपने बताया है इनको सब सिनेरियो के बारे में, प्रोबब्ली दे हैव गॉट दी Dr. Yadav, anything else which I can add here?
Dr. Yadav, am I audible to you? Must have he must have seen somewhere on the internet. Yeah, though it is old information, but it was more than enough for the introduction of any speaker. Thank you so very much for this elaborate introduction, sir. Dr. Vikram has set the stage. In fact, I'll say that the director of this institution, Honorable Dr. Kaushal, had set the stage in the morning by giving a introduction and by emphasizing on the importance of intellectual property. And after that, Dr. Vikram has given you a lot of statistics on the improvements of IP filing. He has given you the statistics of ICR's progressive approach in overall IP filing, which we all witnessed in his session. And I feel proud that the ICR has done this amazing job. And if you noticed in the presentation, it was in last 3 to 4 years or 5 years, there has come an exponential increase in the filing of all the intellectual properties. So I really admire and appreciate the efforts of the ITMU unit Delhi and other associated units across the country, that they're working in the right direction. And I feel proud on myself also, being a contributor in some small sense. I have been a part of the ICR's initiative on awareness campaigns conducted by them for the last 3 to 4 years. So this increase and this, you may say that growth is encouraging, is definitely giving us this uh, uh, encouragement to file more, to create more. So statistics do tell a story of growth, but my job here shall not be to focus more on the statistics, because I see a lot of students in the audience
and my learned colleagues also in the audience, who create, who produce, and who happen to aspire for all the intellectual properties. So I think that I must discuss the intellectual property ecosystem and the regime in detail. I'll try to cover specifically the patents, but I feel it is an onerous duty of a speaker like me today to apprise these young minds about the potential in other intellectual properties also, because we just saw the statistics there, and we learned that trademarks are being filed, we learned that copyrights are being filed. We also learned that the designs are being filed. So each intellectual property carries equal importance. I told in the morning brief address to you that it is a patent which is most of the times, discussed, and it has become a buzzword. But that doesn't mean that other intellectual properties are unimportant. You have to give them the equal value. And your organization and the other ICR affiliated institutions across the country are creating other intellectual properties also simultaneously. So we must not undermine those. So my lecture, I'll try to, in my lecture and address, I'll try to articulate it in a way where I tell you briefly about all intellectual properties. I tell you specifically about patents, and specifically the patent, patentability and patentability criteria and the patent prosecution. This is what I've chosen for my talk, or these 3 to 4 things, which are very important things I believe I must cover. So let us begin. Intellectual property in this house, everybody is aware about what does intellectual property mean, and why there is so much fuss about it. So we all have been seeing the statistics and the growth stories which our honorable director also told in the morning, right? The revenue that it generates and the money that it attracts, right? So in my classrooms, when I teach intellectual property law, I tell them that it is not a charity or anything like that. It is a business law, or it is a business basically. And it is on this notion, the whole idea of intellectual property regime uh, started. And it evolved on the lines of business. It is evolving even today on the lines of business. But at the same time, it definitely addresses social concerns. It definitely covers or addresses social concerns, social welfare. But the primary objective is the money and the business associated with it. Inter alia, or definitely the social welfare portion is also an integral of it, and it is something which we cannot sideline, right? Intellectual property is something that you create through your intellect. It's an offshoot of your intellect. There may be multiple manifestations of the offshoot or of the outcome of your intellect. Multiple manifestations. कोई एक चीज तो होती नहीं है आपके दिमाग से जो बनती है. Since you are working in the field of agriculture, most of the offshoots of your intellectual, shall be in the direction of agriculture or surrounding it, right? आपका तो उसी तरफ काम होगा या उसी एरिया में काम होगा. But it doesn't confine you to that. Working in a particular field or in a particular discipline doesn't mean that you have to necessarily work in that area. There are multiple areas in which you can work simultaneously, which is why it is important to know all intellectual properties. Quickly, जब तक ये इसको broadcast करें, quickly let me tell you, हमारी जो types हैं IPR में, patents, trademarks, designs, geographical indications, and your trademarks, and lastly जिसको मैं बोलूँगा trade secrets.
ट्रेड सीक्रेट्स पे कोई लेजिस्लेशन इंडिया में अभी नहीं है, बट दैट डजंट मीन दैट इट इज नॉट प्रोटेक्टेड और इट इज प्रोटेक्शन लेस, रेमेडी लेस। नहीं, उसमें भी प्रोटेक्शन है, उसमें भी रेमेडीज अवेलेबल है, बट अभी कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है। सो फार एज अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, पेटेंट्स तो मैं बताने ही वाला हूं। मैं बहुत कर्जरी ग्लांस एक आपको हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दे देता हूं टू सेट द बैकग्राउंड, बिकॉज आई सी यंग माइंड्स, यंग फेसेस है। बहुत क्विकली, ट्रेडमार्क्स में आप सब जानते हैं कि कोई मार्क, लोगो, डिवाइस, न्यूमरल लेटर, वर्ड, सिंबल, ये सब चीजें प्रोटेक्ट होती हैं। और ये कब प्रोटेक्ट होती है? व्हेन यू यूज सच थिंग्स इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, when you use such things in the course of trade. Every intellectual property gets the protection only when it qualifies for the protection, when it fulfills the criteria set out in the legislation, set out in the law. तब तक अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं। What is the criteria for getting a trademark protection? Quickly मैं बताऊं, बहुत समय नष्ट नहीं करूंगा उस पर। The mark और द वर्ड, लेटर, लोगो, न्यूमरल, सिंबल, डिवाइस, कलर कॉम्बिनेशन, जो भी आपकी चीज है जिसको आप कोर्स ऑफ ट्रेड में यूज कर रहे हैं, विद द गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज आप दे रहे हैं, देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्टिवनेस इन दैट मार्क। वो मार्क आपका डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। अब हो सकता है ट्रेडमार्क्स, क्योंकि आईसीआर के बहुत सारे हैं, मैं देख रहा था नंबर 438 ट्रेडमार्क है। आपकी इंस्टीट्यूशन के कितने हैं मैंने नंबर नहीं देखा, 2 हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी अभी ड्यूरिंग द टी ब्रेक वी वर डिस्कसिंग, ऑनरेबल डायरेक्टर सर वाज टेलिंग मी दैट, एंड इवन इन हिज एड्रेस टुडे मॉर्निंग, इनॉग्रल एड्रेस में भी उन्होंने बताया था कि देयर आर many things which we are creating here in this institution, and जिनमें हमें ट्रेड करने का भी मौका मिला है। the revenue they were the revenue which the particular commodities have generated, so definitely कोई ना कोई ट्रेडमार्क आपने देने की कोशिश की होगी। we were talking about बाजरा also during the tea break, perennial bajra in Rajasthan, and otherwise also in this institution also some varieties of the डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। कोई ना कोई ट्रेडमार्क देते ही होगे आप, अगर खुद से ट्रेड करते हो तो, या किसी के साथ लाइसेंसिंग करते हो तो। रजिस्टर्ड 2 हैं आपने बता दिया, लेकिन आपका ट्रेडमार्क डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, ये एक प्री कंडीशन है। मैं डिस्टिंक्टिव होना क्या होता है वो क्विकली बता देता हूँ। कल को आप अगर सोचें या अस्पायर करें कि मुझे ट्रेडमार्क लेना है, तो यू हैव टू हैव अ मार्क, a word, letter, numeral, logo, device, or combination of any of these things, right? उसमें वो डिस्टिंक्टिव हो, लेकिन डिस्टिंक्टिव मतलब वो ऐसा हो जो अपने को डिस्टिंग्विश कर सके दूसरे के गुड्स और सर्विसेज से। सपोज योर प्रोडक्ट, योर गुड is bearing a trademark, if it has the potential to distinguish those goods from the goods of others and the services of others, that fulfills the criteria of being called distinctive. ये होने से आपका मार्क एक स्टेज क्रॉस कर गया। कुछ प्रोहिबिशंस होते हैं कि कुछ मार्क जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, डिवॉइड ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होते हैं, कॉमन लैंग्वेज या कस्टमरी होते हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, उनको नहीं मिलेगी। वो प्रोहिबिशंस भी आप ट्राई करोगे कि इवेड करो या अवॉइड करो या प्रिक्लूड करो। सो द पॉइंट इज, if you are choosing a mark and you are thinking of going for the trademark protection, then you must assure that there is a requisite distinctiveness in it. Requisite distinctiveness means that there has to be what? Again, I'm repeating it. There has to be a capability in the mark to distinguish itself from the goods of others or the services of others or other enterprises. That is it. इसके beyond मैं ट्रेडमार्क में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं। एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में विक्रम जी ने बताया कि 1100 हैं आपके आईसीआर के पास कॉपीराइट। कॉपीराइट मैं कहता हूं 1100 कुछ भी नंबर नहीं है। एवरीथिंग दैट योर इंस्टीट्यूशन इज प्रोड्यूसिंग, से अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस, देयर मस्ट बी सम literary work behind it, there must be some data behind it, there must be some intellectual output
exercise applied, judgment, labor, exercise applied behind it. हर वो चीज जो उसको क्रिएट आउट फाइनल आउटकम से पहले आपने किए या फिक्स्ड फॉर्मेट करने से पहले जो आपने एफर्ट लगाया है, कोई जोट डाउन किया है, कहीं कुछ किया है, सभी कुछ तो कॉपीराइट हो सकता है, क्योंकि कॉपीराइट इज समथिंग विच इज नॉट मैंडेटरी टू बी ऑब्टेन्ड, इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन. Copyright is optional for you. You may go to the copyright office and seek a copyright protection. But even if you have not done that, you have an automatic protection. It is an automatic protection regime. You enjoy a copyright on your work if it is, again, the qualification has to be fulfilled. If it is original, वहां ट्रेडमार्क में आपने देखा था कि डिस्टिंक्टिवनेस जरूरी है, यहाँ कॉपीराइट में ओरिजिनलिटी जरूरी है. अब ये ओरिजिनलिटी का रिक्वायरमेंट मैं क्विकली बता देता हूँ, वन लाइनर. बहुत मशक्कत लगी इसको वन लाइनर बनने में. उससे पहले दे वर कंफ्यूजिंग एंड वेरीड नोशंस प्रिवेलिंग एंड वेरीड इंटरप्रिटेशंस प्रिवेलिंग. बट ये ओरिजिन क्या है? समथिंग दैट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑथर एंड which is not a substantial copy of someone else's work. ये ओरिजिनलिटी चाहिए for you to get a copyright on what? अब copyright subsist किस पे करता है? Copyright subsist on literary, artistic, dramatic, musical works, cinefilms. आपके केस में बहुत सारा विजुअल ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होता होगा, आप जो काम करते हो. आपके केस में लिटरेरी वर्क भी कुछ क्रिएट होता होगा. अब लिटरेरी वर्क में ही कंप्यूटर प्रोग्राम भी आ गया, लिटरेरी वर्क में ही कंप्यूटर प्रोग्राम के अलावा डेटाबेसेस भी आ गए, तो वो सब होता ही होगा. उसको कॉपीराइट करा लो, नहीं भी करा रहे हो तो इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन. एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ. व्हाटएवर यू आर स्क्रिबलिंग हियर और व्हाटएवर यू आर राइटिंग व्हेन आई एम स्पीकिंग, and it is something that you are creating. I'm not here, narrating you or dictating you, and you are not writing it verbatim. आप as it is तो लिख नहीं रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो स्क्रिबल करके. This much originality is required in a case of copyright. You have a copyright on that also. In shorthand notes पे भी आपका copyright है जो आप अभी create कर रहे हो. You may go for the protection, and it's a very easy process of 1 month, very reasonable fee of 500 rupees to be paid, and you may obtain a copyright certificate on your work, right? So 1100 नंबर को कब आप 3300 या कब आप 5500 कर दोगे? In 6 months time, I believe it can be done. It is so very easy. कुछ भी आप यूज करते हो ना, मैं बता रहा हूँ, कॉपीराइट में लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग सब आता है. ट्रेडमार्क में मैंने बता दिया था, मार्क, लोगो, डिवाइस, सिंबल सब आता है. इसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में भी बात की थी डॉक्टर विक्रम ने. 292 है आपकी इंस्टीट्यूशन के पास. अब इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में बात करूंगा मैं, बट लेट मी कम विद द डिस्क्लेमर हियर. The same disclaimer is required for obtaining the industrial design in the design registry. जब डिजाइन रजिस्ट्री में कोई एप्लीकांट जाता है तो वही सेम डिस्क्लेमर वो भी यूज करता है. उसको देना ही पड़ता है कि देयर इज नॉट टेक्निकल फंक्शन इन द डिजाइन विच आई एम सीकिंग, और द प्रोटेक्शन जो मैं सीख कर रहा हूं उसमें कोई टेक्निकल फंक्शन नहीं है मेरे डिजाइन में. सो इंडस्ट्रियल डिजाइंस आर conferred, are given on the aesthetic look of something, on the design of something. It is not given on the technical functionality. टेक्निकल फंक्शन की चीजें पेटेंट होती हैं, डिजाइन नहीं होती. तो ये डिस्क्लेमर आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन का एप्लीकांट अपनी एप्लीकेशन में लिखता है कि मैं जिस चीज पे डिजाइन चाह रहा हूं उस चीज में कोई टेक्निकल फंक्शन पे मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं डिजाइन. देयर मे बी अ टेक्निकल फंक्शन इन दी डिजाइन, देयर मे बी अ टेक्निकल फंक्शन, एंड हैविंग अ टेक्निकल फंक्शन इन समथिंग इज वेरी इजी. किसी को पेन के पकड़ने में भी टेक्निकल फंक्शन दे सकता है कोई डिजाइन से. इट्स वेरी इजी. बट डिजाइन right shall be given only on the look or the appeal in the design or on the aesthetic. It is not to be given on the technical function involved in it. Technical function की protection चाहिए तो patent ले लीजिए. This is the difference. And industrial design protection lasts for maximum 15 years. It is initially conferred for 10 years and another 5 years it may be extended to. So total मिला के 15 साल का protection होता है यहाँ पे. ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन परपेचुअल होता है. यू मे कीप ऑन रिन्यूइंग इट बाय पेइंग द रिन्यूअल फी. कॉपीराइट का प्रोटेक्शन लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस
30 to 70 years की वेरिएशन में चलता है, राइट। लास्टली ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में बात करके पेटेंट पे आएंगे। जीआईज क्योंकि अभी आपका इंस्टीट्यूशन मैंने स्टैटिस्टिक्स में देखा नहीं कोई जीआई था कि नहीं था। टू माय नॉलेज देयर वाज नो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन because geographical indication is a community right. It is an indication like a trademark only. ट्रेडमार्क भी एक इंडिकेशन ही होती है, एक मार्क होता है वो भी, जो इंडिकेट करता है आपके गुड को और दूसरों के गुड्स को डिफरेंशिएट करता है आपके गुड से। लेकिन यहाँ जो इंडिकेशन है ना वो कम्युनिटी राइट है और इसका पर्पज कुछ और है। इट हैज अ डिफरेंट पर्पज ऑल टुगेदर। इट्स पर्पज इज नॉट टू यू नो indicate your goods and services and differentiate them from the goods and services of others. Its purpose in the GIA, the purpose is to exhibit the peculiar characteristic or a trait or a feature in the product which can be attributed to the climatic conditions of a region, to the soil conditions of the region, or at times to the skill set of the people of that region. Because जो geographical indication होती है वो agricultural goods पे मिलती है, food products पे मिलती है, and it is also to be conferred on the manufactured goods पे भी मिलती है। तो कई बार जब एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं जीआई टैग के लिए जाते हैं तो व्हाट इज टू बी सीन, दैट peculiar characteristic or feature which can be attributed to the soil and climatic conditions of that region is to be seen. It has to be there necessarily. If it is missing, GI cannot be conferred, and it is a community right. It is to be conferred to the community, not to an individual. This is the difference between GI and the trademarks. इंडिकेशन वो भी है लेकिन यहाँ पर्पज कुछ और है। इसी तरह मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी, इसी तरह फूड प्रोडक्ट्स में भी जीआई मिलता है, लेकिन पिक्युलर फीचर जो एट्रीब्यूट किया जा सके। अगर कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड है तो वहां की लेबर के स्किल सेट पे कोई पिक्युलर फीचर जो एट्रीब्यूट कर सको, वो अगर अवेलेबल या प्रेजेंट है तो जीआई मिल जाएगा, राइट। अब आइए आप एक बचा ट्रेड सीक्रेट्स, जिनका जिक्र जो है इनडायरेक्टली सुबह ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने किया। वो ट्रेड सीक्रेट वर्ड तो यूज नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लाइसेंस करते हो, कुछ चीजें आपकी पेटेंट होती हैं जिनको आप लाइसेंस करते हो या ट्रांसफर या साइन करते हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, जैसे उन्होंने बोला, मैं उनके वर्ड्स रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहा हूं, बट आई गोट द सेंस दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स which are basically secrets which you transfer by entering into non-disclosure agreements, by entering into the contractual arrangements, जिनकी डिस्क्लोजर नहीं होती है। आप कभी भी देखेंगे फार्मा कंपनीज इतने सारे लाइसेंसिंग करती हैं, साथ में एनडीएज भी होते हैं। जितने पेटेंट लाइसेंस है साथ में उतने ही एनडीए भी हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स भी हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो शेयरिंग और दे आर ऑल्सो डिस्क्लोजिंग देयर सीक्रेट्स। एंड सीक्रेट पे अभी मैंने बताया कि लेजिस्लेट नहीं किया है इंडिया में कोई, या हमारे यहाँ कोई कानून तो नहीं है वहां पे। वी हैव डिफरेंट लेजिस्लेशंस लाइक पेटेंट्स एक्ट 1970, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यहाँ विदाउट लेजिस्लेशन में भी हमारे पास प्रोटेक्शन अवेलेबल है। बट इसमें प्रॉब्लम एक है, ट्रेड सीक्रेट में प्रॉब्लम ये है कि सीक्रेट तब तक सीक्रेट है जब तक यू मेंटेन द सीक्रेसी। The moment the secrecy is divulged, you cannot assert any right on it. And there is no ethical or unethical, stealing or divulging or concealing of it. कोई unethically भी ले लेता है तो भी secret गया, कोई steal भी कर लेता है तो भी secret गया। And there is no term specified for it. जब तक secret रख सको तब तक secret रखो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेटेंट्स में और ट्रेड सीक्रेट्स में अगर चूज करना हो तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल थंब रूल है कि अगर कोई वर्क ऐसा है जो इजीली रिवर्स इंजीनियर हो जाता है तो यू गो फॉर द पेटेंट प्रोटेक्शन। एटलीस्ट यू गेट 20-year monopoly or exclusivity because you know that it may be easily reverse engineered and it can be easily reverse engineered by anyone. लेकिन दूसरा आपको पता है कोई ऐसा वर्क है विच इज नॉट सो वेरी इजी फॉर एनीवन टू रिवर्स इंजीनियर, सो यू हैव द बेटर एंड लॉन्गर प्रोटेक्शन अवेलेबल, दैट इज ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, जिसमें आप उसको सीक्रेट रखोगे
क्योंकि आपको पता है मैं 200 साल भी चला लूंगा या 100 साल भी चला लूंगा या 50 years भी चला लूंगा उसे. So the choice can be made by you because uh, it is you who has created it, and it is you who know whether it is so very easily reverse engineered or not, or can be reverse engineered or not. So choose it very carefully. बहुत सारी बार आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. कई बार कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में भी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट मैटर्स हैं. कई बार डिजाइन में भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि मैं डिजाइन में प्रोटेक्ट कराऊं या मैं कॉपीराइट में कराऊं, क्योंकि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट मैटर है. एक एग्जांपल के तौर पे अपैरल डिजाइनिंग जैसे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट मैटर है, अपैरल्स का डिजाइनिंग जो होता है. अब आते हैं पेटेंट पे. ये स्लाइड मैं मूव कर पाऊंगा? ठीक है. देखिए मैं कुछ चीजें अब पेटेंट्स पे बता दूं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है मेरे सेशन का. इस पोर्शन में मैं ट्राई करूंगा कि पेटेंट की ग्रांट को लेके जो थोड़े से मिथ्स हैं या पेटेंट की ग्रांट को लेके आप लोगों को जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. एट द आउटसेट लेट मी टेल यू, पेटेंट जो होता है ना, ये तो टाइप्स हैं बेसिकली. पेटेंट जो होता है ना, वो दिया किस चीज पे जाता है. हमारे कई बार मिसकंसेप्शन है क्योंकि दूसरी सब्जेक्ट मैटर्स को ओवरलैप कर लेते हैं हम. It is granted on or conferred on products and processes. The law that deals or caters to this aspect, I mean the products and processes. Unfortunately, the law hasn't defined what does product mean and what does process mean here. उसने खुद ही डिफाइन नहीं किया है कि प्रोडक्ट क्या है या प्रोसेस क्या है. जब आप पेटेंट्स एक्ट 1970 खोलेंगे ना और उसको कंट्रोल एफ करके देखेंगे तो प्रोडक्ट की और प्रोसेस की डिफिनेशन नहीं दी है. अब ये डेलिबरेट है. लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो होती है ना, वो बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद और बहुत सारी यू नो सराउंडिंग थिंग्स को देख के की जाती है. क्या चीज प्रोडक्ट होगी, क्या प्रोसेस होगी, अगर आप उसको स्ट्रेट जगह डिफाइन कर देते हो, then the definition is exhaustive and it becomes exhaustive. You cannot go beyond that defined version of it, and you cannot go beyond it. एक तरह से आप confine हो जाते हो. So it is better not to have a definition in the eyes of the law, because something which is undefined may transcend to certain things which are not foreseeable now, which may be foreseeable after some years, and which may be perhaps the potential inventions after some years. Our law has a check. I'm not saying that our law grants a patent to everything. In the US, there is a very popular credo that everything under the sun is patentable. Our law doesn't do that. On the contrary, we have certain checks. We have exclusions, lot of exclusions in our law. These things are not inventions. सीधे clearly लिख दिया section 3 में कि ये inventions हैं ही नहीं. But apart from that, product ना define करना या process ना define करना, clearly ये है कि कोई भी चीज product हो सकती है, कोई भी चीज process हो सकती है, if it fulfills the criteria. Then criteria भी कहीं एक section में defined नहीं है. It is interspersed in the definitional clause. एक सेक्शन 2 है जो जनरली हर एक्ट का डेफिनेशनल या इंटरप्रिटेशनल क्लोज बोला जाता है. मैं लॉ की टर्म्स में बात करूं तो जहां बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, है ना, जहां बहुत सारी चीजों की इंटरप्रिटेशन होती है, तो वो जो सेक्शन 2 है उसमें इंटरस्प्रेस्ड है रिक्वायरमेंट्स कि क्या चीज रिक्वायर्ड है प्रूव करना, तब प्रोडक्ट पे या प्रोसेस पे पेटेंट मिलेगा. फॉरगेट अबाउट इट. पेटेंट का वर्ड जो पेटेंट है ना, उसका भी जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या दिया है. पेटेंट मीन्स अ पेटेंट. पेटेंट मीन्स अ पेटेंट granted by the government. This is the language used in the Patent Act. Patent means a patent. It's not something which is inadvertent error or something like that. No, it is deliberate. It's not an inadvertent error committed on the part of the legislature. Patent means a patent granted under this act by the government. Under this act by the government. वो होता है पेटेंट. अब लिटरल मीनिंग देखोगे पेटेंट का तो क्या है? टू ओपन, क्योंकि इट्स एंटोनियम इज लेटेंट, टू हाइड समथिंग. यही तो हो गया ना लिटरल मीनिंग.
So the fundamental underlying philosophy on which the patent regime works is disclosure, is opening your work. To whom? To the government. In lieu of that, the government grants you the patent. जब आप disclosure कर देते हो government को, so patent means a patent which is granted by the government, right? When you disclose your work to the government, they give you the exclusive monopoly, which is a territorial monopoly for 20 years. इसमें लिखा है territorial, temporal. टेम्पोरल वर्ड क्या है? टेम्परेरी मोनोपोली है, क्योंकि पेटेंट की वैलिडिटी जो है ना, वो एक प्रिजम्पशन है कि पेटेंट मेरा वैलिड है। प्रिजम्पशन क्यों है भाई? पेटेंट ऑफिस ने मान लिया कि सही है, अभी कंटेस्ट तो हुआ ही नहीं ना, हो सकता है गलत हो। सो पेटेंट इज अ टेम्पोरल मोनोपोली और अ टेरिटोरियल मोनोपोली, इन फैक्ट टेम्पेरोस्पेटियल मोनोपोली, लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। स्पेस की बात करें तो टेरिटरी में, भारत में पेटेंट लिया तो भारत में ही। सर जो विक्रम जी बोल के गए थे कि थोड़ा सा इसके ऊपर आप हाईलाइट करना, तो टेम्पोरल मोनोपोली है अनलेस यू फाइल अ पीसीटी एप्लीकेशन और अ कन्वेंशन एप्लीकेशन एंड सीक अ पेटेंट इन मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस, तब तो उन कंट्रीज में, डेजिग्नेटेड कंट्रीज में भी पेटेंट मिल जाएगा, नहीं तो ये पेटेंट आपका कन्फाइंड है टू योर टेरिटरी। बट वाइल कन्फरिंग इट टू यू on the disclosure made by you, the patent office had done the extensive global search. उन्होंने ग्लोबल सर्च करी है, लेकिन आपको वो टेरिटोरियल मोनोपोली देगा। उन्होंने देखा है कहीं एंटिसिपेटेड तो नहीं है, कहीं यूज में तो नहीं है, कहीं पब्लिकेशन में तो नहीं है, राइट? कहीं स्टेट ऑफ द आर्ट तो नहीं बन गया है, कहीं प्रायर नॉलेज तो नहीं है। दे हैव चेक्ड इट थॉरली एंड दे हैव ग्रांटेड यू अ टेरिटोरियल राइट एंड अ टेम्पोरल राइट। टेम्परेरी है 20 साल के लिए, और वैलिडिटी कल कंटेस्ट हो जाए और वो इनवैलिड निकलाए तो कल ही खत्म, राइट? स्टैट्यूटरी राइट है ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में मिला है। कोई कॉमन लॉ राइट नहीं है ट्रेड सीक्रेट की तरह कि मैंने कोई चीज बनाई, क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं है वहां। तो यहाँ जो राइट है वो स्टैट्यूट ने दिया है हमें। स्टैट्यूट कौन सी है? पेटेंट एक्ट 1970। इसमें भी राइट विद एक्सेप्शन है ये, ऐसा नहीं है कि इट इज अ एब्सोल्यूट राइट, तो कुछ होता ही नहीं है। आपकी बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, फंडामेंटल राइट्स पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस के साथ आता है ये। आपको 20 साल की मोनोपोली मिली, उसको आप इंजॉय करते हो, लेकिन दैट 20 years ऑफ मोनोपोली कम्स विद सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे बोलार प्रोविजंस हैं। मैं उनके बारे में अभी जिक्र नहीं करूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दूंगा नहीं तो मैं। कई बार रिसर्च के लिए और कामों के लिए आप पेटेंटेड वर्क का भी यूज कर सकते हो, बिना ओनर के कॉन्सेंट के, बिना पेटेंट होल्डर के कॉन्सेंट के। वो बोलार प्रोविजन है, सेक्शन 107 देखेंगे पेटेंट एक्ट का तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। वो सारी एक्सेप्शंस हैं, भले ही किसी का पेटेंटेड वर्क है लेकिन आप यूज कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ योर रिसर्च और समथिंग लाइक दैट। बोलार केस था एक यूएस का, उसकी जजमेंट में ये आया था कि इस तरह का यूज हो सकता है, और बोलार प्रोविजन इसलिए बोला गया उसे। जो हमारे यहाँ वो एक्सेप्शन के प्रोविजन डाले गए, दे आर पॉपुलरली नोन एज बोलार प्रोविजंस, BOLAR। इसमें देखिए अब इसके बाद पेटेंट्स आर ऑन इन्वेंशंस नॉट ऑन डिस्कवरीज ऑफ कोर्स। अब कुछ लोग इस बात पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई नॉट ऑन डिस्कवरीज, because to discover something also requires an calculated effort sometimes. Discovery doesn't mean that you just happen to discover something. और बहुत सारी तो चीजें सेरेंडिपिटी में हुई है ना, एक्सीडेंटली हुई हैं। इन दी you know in the human evolution and civilizational evolution, you all have seen, and a lot of people have been conferred with distinctions for doing certain works which they did serendipitously, accidentally हो गए, और कर कुछ रहे थे, कुछ हो गया।
लेकिन डिस्कवरीज पे लेजिस्लेटिवली उसने वर्ड यूज नहीं किया कि डिस्कवरीज पे पेटेंट मिलेगा, जबकि आप ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है जिससे हम गवर्न होते हैं या जिसके हम मेंबर नेशन है या सिग्नेटरी हैं, और मोस्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द वर्ल्ड या कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर द सिग्नेटरी ऑफ दैट, और उस ट्रीटी की लैंग्वेज में जाएं तो उन्होंने तो कहा है कि इन्वेंशंस और डिस्कवरीज, साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज पे पेटेंट होता है, लेकिन हमारी लॉ ने बिल्कुल एक्सप्लिसिटली वर्ड इन्वेंशन यूज किया है, डिस्कवरी वर्ड को यूज नहीं किया है. सो पेटेंट्स आर ग्रांटेड ऑन इन्वेंशंस, not on discoveries. It is a statutory monopoly granted to innovators by the government in return of disclosure of invention and for investing their time, money and intellectual labor, which I have already discussed. कि ये disclosure जब आप करते हो इसको ना quid pro quo बोलते हैं. It is called quid pro quo, in lieu of something. ये एक मैगजीन है, लेटिन मैगजीन है, जिसका मतलब होता है मैंने आपको डिस्क्लोजर दिया, आप मुझे मोनोपली दो 20 साल का. Patent is a negative right to exclude others from performing, manufacturing, using your invention without your consent. अब ये negative right क्यों है? Because you are excluding others. The right in the law given to you is a right to exclude others. उसमें कहीं नहीं बोला that you get a right to sell, offer it for sale. The language used over there is you have a right to exclude, thwart others from using, offering it for sale, manufacturing, etc. Indirectly आप use करो ये है, लेकिन the language is negatively worded where it says that you have a right to exclude others. If a third party starts using it without your consent, you have a right to stop that person. You have a right to bring an infringement action against that person. Life is 20 years from the date of filing. Patent is a valuable IP and can spur industries, of course, which we all have been discussing since morning. ये टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है कुछ. नॉर्मल एप्लीकेशन है जो अंडर सेक्शन 7 और 10 मैंने लिखा है डाली जाती है फॉर पेटेंट्स. अब ये थोड़ा सा पेटेंट प्रोसिक्यूशन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा. पेटेंट प्रोसिक्यूशन इज वेरी इलैबोरेट एंड very wide and vast, but I would like to give you a brief introduction about the patent prosecution. Normal patent prosecution doesn't mean that there is a prosecutor required, a lawyer required to contest or dispute the matter in the court of law. वो ये word prosecution here signifies that procedure क्या है patent filing का. ये prosecution का मतलब यहाँ है procedure क्या है patent filing. तो जो नॉर्मल एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 7 और 10 डाली जाती है. अब इन दोनों को पढ़ने का समय तो नहीं है यहाँ पे, बट मैं जस्ट बता देता हूँ कि पेटेंट जो है ना वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर फाइल कर सकता है, उसका कोई असाइनी या उसका कोई लाइसेंसी फाइल कर सकता है. ठीक है जी. इसके अलावा there is another requirement that is to be fulfilled. Section 10 की कुछ most important requirements, procedural requirements की अगर बात करूं, out of many other procedural requirements which are important, section 10 की कुछ procedural requirements हैं which you all need to understand और उनके ऊपर मैं थोड़ा emphasize भी करूंगा. 10 में एक important requirement है कि आप disclosure करें, fully and particularly describe करें अपनी invention को, fully and particularly describe करें. कई बार आप लोगों को पेटेंट अटॉर्नीज जिनके पास आप जाते होंगे या आपके यहाँ एम्पैनल्ड होंगे, कुछ आपके यहाँ कोई लॉ फर्म एम्पैनल्ड होंगी, आप उनको बोलते हो जी ये मेरा वर्क है, मैंने डिस्क्लोजर इन्वेंशन डिस्क्लोजर बता दिया आपको, ये मेरा इन्वेंशन है, एंड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो आपको देते हैं कि इस पे इन्वेंशन डिस्क्लोज कर दो. उसके बाद अब क्लेम ड्राफ्टिंग जो है ना, जहां फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करना है वर्क को, that's an art. And any inventor or any institution who has created the work must do the work alongside the claim drafter. Claim draft करने के लिए उसे silos में मत छोड़ो. Most of the patent applications see no success because they are left to be taken care of by the patent attorneys when
They draft the claims, they wrongly draft the claims. When they share the draft with you, you overlook certain things which you should not have done. अब उसमें मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको कि कहाँ गलती होती है और क्या गलती होती है. सुबह ऑनरेबल डायरेक्टर साहब कुछ बात बता रहे थे कि कितना क्लेम करना है, क्या नहीं करना है. तो मैं उनकी बातों का समझ रहा था इशारा कहाँ है. इफ आई रेड हिम करेक्टली, जितना आप क्लेम करते हो उतने पे आपको पेटेंट मिलता है. ध्यान से सुनना. व्हाट यू क्लेम, you are conferred a patent on that claim if found fulfilling the requirements for obtaining the patent. If found fulfilling the requirements. जो चीज क्लेम नहीं की उसके ऊपर आप मांग नहीं सकते कुछ. और अंडर डिक्लेरेशन और ओवर डिक्लेरेशन ऑफ क्लेम क्यों फेटल होते हैं? अंडर डिक्लेरेशन ऑफ क्लेम इज फेटल बिकॉज समथिंग विच यू could have covered in it, you would have involved in it, you did not do that, somebody else had done it, somebody else might get the patent. You cannot then later on say that it is something which I would have sought in my application, it is something which is ancillary or related to me. Na, फिर नहीं है scope खत्म. You should have claimed it then and there. हाँ जी, ऐसे मेरी क्लास में होते हैं 2-4, है ना. क्या मिलेगा? what are you guys doing, 2 of you? आप ही दोनों. डोंट शो इग्नोरेंस. अगर नहीं सुनना है ना तो you may enjoy your time somewhere else. 2 लोग specifically, the entire whole is glued to what I'm saying, but 2 of you are disturbing me since the beginning of it. I request you not to do it. मैं टीचर हूं तो मैं बोलता हूं ऐसे क्लास में, पिन पॉइंट कर देता हूं. बेशक आप ऑडियंस की तरह आए हैं पार्टिसिपेंट्स, आई कैन डू दैट, आई डू इट यूजुअली. अगर नहीं सुनना है तो यू आर फ्री टू गो. 2 ही व्यक्ति हैं बस, बाकी पूरा होल शांति से सुन रहा है. एंड आई बिलीव वी आर ऑन द सेम पेजेस, सारे लोग एक्सेप्ट यू टू. रिदम तोड़ दिया, एक टेम्पो बना हुआ था. नहीं कोई बात नहीं, जवान बच्चे हैं से. हाँ, मैंने कहा कि कैसे ओवर डिक्लेरेशन अंडर डिक्लेरेशन फेटल हो जाती है. अंडर डिक्लेरेशन में फेटल हो गया क्योंकि समथिंग दैट यू कुड हैव involved and you could have covered, you could have perhaps asserted, वो आपने नहीं किया, आपको नहीं मिलेगा. क्लेम पे ही मिलेगा ना जितना क्लेम मांगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी ओवर डिक्लेरेशन में सर्च उतनी ओवर डिक्लेरेशन के हिसाब से की जाएगी. they'll search the patent on the basis of the claim made by you. if over declaration or over extensive things are claimed, तो वो chances are very high that it will get negated in the search. कि उसकी novelty पे ही reject हो जाए वो, या उसकी inventive step पे reject हो जाए वो. Are you getting my point? So be very specific what is to be claimed. अब एक और बात है यहाँ जो मैं बताना चाहूंगा, फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब. ये लैंग्वेज यूज हुई है सेक्शन 10 में कि आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो फुल्ली और पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करे आपके वर्क को. अब 2 चीजें होती हैं, एक होता है जी कवरेज, एक होता है डिस्क्लोजर. कवरेज क्या है? कवरेज है whatever you assert in your claim, you specifically mention this is what I have invented and I need the patent on it. Disclosure क्या है? Something that enables the researchers of the same field. Enablement का एक requirement है जिसको fulfill करना ही पड़ता है. तभी ये सेक्शन 10 का जो लैंग्वेज है ऐसा है, फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब. और इतने एक्सटेंसिवली आपके वर्क को बताना ताकि आपके फील्ड के रिसर्चर्स उस नॉलेज से लाभान्वित हो. दे गेट बेनिफिटेड एंड दे create more advanced work, right, by referring to your work.
इनेबलमेंट कि आपने इनेबल किया उसको, आपने बताया कि x plus y plus g is equal to this, so he get enabled. Coverage, you seek a patent on x plus something, you get a patent. बट ये जो कवरेज डिस्क्लोजर का कनंड्रम है ना, ये भी बड़ा नाइटमेयर है साइंटिस्ट के लिए. दिस कवरेज डिस्क्लोजर कनंड्रम इज अ नाइटमेयर फॉर द साइंटिस्ट, स्पेसिफिकली जीनस स्पीसी पेटेंट्स. बहुत सारे लोग स्पीसी पेटेंट्स पे काम करते होंगे या स्पीसीज पे काम करते होंगे. अब कोई व्यक्ति जीनस पेटेंट करा के बैठा है, आप स्पीसी पे काम कर रहे हो, तो वो ये कहता है कि ये तो मेरे वर्क में डिस्क्लोज है. अब वो डिस्क्लोज बोल रहा है और उसने डिस्क्लोज किया था, लेकिन कवरेज में नहीं था उसके में, उसने अपने क्लेम में नहीं मांगा था, ये उसको पेटेंट नहीं मिला था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज समथिंग दैट even went to the courts of law in the country. A very recent case law in Delhi High Court of 2021 or 2022, where diabetes drug or its new form of the drug was there in the question. डेपा ग्लिफलोलिन करके आती है मेलेटिस डायबिटीज के लिए, उसका एक केस हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग. उसमें कवरेज डिस्क्लोजर पे क्या होना चाहिए बात हुई. जब ये कवरेज डिस्क्लोजर पे बात हुई ना, आप ये सारी चीजें आपको क्लेम ड्राफ्ट करने में मदद करेंगी जो मैं बता रहा हूं. आवाज नहीं आ रही? अच्छा. सो this battle went to the court of law where it was discussed that way back in 2013 in the Novartis AG versus Union of India, Supreme Court of the country has categorically said that there should not be humongous gap between the coverage and disclosure. 2013 में सुप्रीम कोर्ट नोवार्टिस के केस में बोल चुकी थी ये बात कि कोई कवरेज और डिस्क्लोजर में ना ह्यूमंगस गैप नहीं होना चाहिए. क्योंकि आप करते क्या हो ना, आप कहते हो जी मैंने तो ये डिस्क्लोज इनेबल करने के लिए किया था, कवर्ड ये था, अब मैं इस पे भी पेटेंट चाहता हूं. यू आर ट्राइंग टू एवरग्रीन इट बाय डूइंग इट. कोर्ट पहले बोल चुकी है कि ह्यूमंगस गैप नहीं होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल गैप नहीं होना चाहिए, व्हाट इज कवरेज व्हाट इज डिस्क्लोजर. लेकिन लॉयर्स का आर्ग्यूमेंट या स्पीसी रिसर्चर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट इवन टू find a new species, and you know we are definitely going to get or should get the patent protection on a separate species. मिलना चाहिए. क्योंकि ये एक एनालॉजी में अगर ड्रॉ करूं या पैरेलल ड्रॉ करूं, तो एक जंगल में छोटा सा लीफ ढूंढ के लाना जिसके ऊपर आप क्लेम कर रहे हो पेटेंट के लिए, और पहले से इतने लाखों लीव्स पड़े हैं, तो जीनस में से स्पीसी पेटेंट जब लेने जाता है वो कहता है कि ये मेरा वर्क है. लेकिन यहाँ कोर्ट ने कहा कि देखो आप जब भी क्लेम ड्राफ्ट करो, आपके कवरेज और डिस्क्लोजर में एस्ट्रोनॉमिकल गैप नहीं होना चाहिए. बिकॉज एस्ट्रोनॉमिकल गैप होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा. कल को हो सकता है कि फार्मा कंपनीज जनरली ये करती हैं, वो क्या करती हैं कि वो एवरग्रीन करने का अटेम्प्ट करती हैं बाद में वर्क को. फ्रॉम द पेटेंट होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ गुड पॉलिसी टू कीप इट ग्रीन फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि 20 ईयर्स में मोनोपोली खत्म, नो रेवेन्यू, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा. लेकिन उसको चाहिए कि मैं तो 20 साल और बढ़ा लू जी, 20 साल और बढ़ा लू जी. नया फॉर्म ले आया ऑफ द नॉन सब्सटेंस और उसमें कुछ एफिकेसी दिखा दिया नॉन सब्सटेंस में और आगे एक और पेटेंट सीख कर लिया. लेकिन कोर्ट ने क्लियरली बोला कि एस्ट्रोनॉमिकल गैप नहीं होगा. आपका कवरेज और डिस्क्लोजर ऐसा हो जो बैलेंस्ड हो, जो इस तरह का ना हो जिसमें कल आप बोलो ये चीज तो मैंने कवर की थी, ये डिस्क्लोज किया था ना, ये नहीं चलेगा. सो क्लेम ड्राफ्टिंग इज अ वेरी टेक्निकल थिंग और बड़े आपको ना बड़े स्मार्टली करानी पड़ती है. अलोंग साइड दी पेटेंट अटॉर्नी खुद उसको मॉनिटर करें, सुपरवाइज करें, ओवर क्लेम अंडर क्लेम ना करें, एस्ट्रोनॉमिकल गैप ना रखें कवरेज और डिस्क्लोजर में. डिस्क्लोजर नहीं करोगे तो पेटेंट नहीं देगा वो. ये बात कोई बताता नहीं है, कोई भी ये बात बोलता नहीं है अपनी प्रेजेंटेशन में. 3 चीजों पे ऑफ्टन कोटेड पैरामीटर्स पे बात करते हैं लोग, नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, यूटिलिटी.
कोई नहीं बताएगा कि डिस्क्लोजर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर और इक्वली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट। अगर डिस्क्लोजर नहीं किया वो पेटेंट ही नहीं देगा। अब डिस्क्लोजर में भी क्या डिस्क्लोज कर रहे हो, क्या कवर कर रहे हो, सो वो क्लियरली दोनों जजमेंट्स में और इसके बाद और भी जजमेंट्स में रीआइटरेट हुआ, रिपीट हुआ, जहां ये निकल के आ गया कि it has to be balanced. It has not to be too big a gap between the, or there should not be too big a gap between the what is to be covered and what is to be disclosed, or what is disclosed and what is to be covered. मार्कुस क्लेम्स में ये ज्यादा होता है, बहुत बार मार्कुस क्लेम्स में ये होता है कि आप डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में जाते हो और सीख करते हो पेटेंट प्रोटेक्शन स्पीसीज में, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं। अभी तक तो लो ये है, देखो दूसरे कंट्रीज का लो जब मैं देखता हूँ इस पे, तो मुझे हमारी कंट्री का लो बहुत स्ट्रिक्ट लगता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेटेंट होल्डर मुझे लगता है बहुत स्ट्रिक्ट है, और इसका कारण है, मैं इसके कारण के पीछे दौड़ा तो मुझे कारण मिला कि क्यों ऐसा किया गया, बड़ा सोच समझ के किया गया। बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड इन आई से 1911 की अगर बात करूं, जब हमारा पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट होता था तो कॉलोनियल था, उसको तो मैं स्टार्ट ही नहीं मान रहा। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे पास 1970 का एक्ट आया, जिस समय हमने स्टार्ट किया सारे वर्ल्ड की डेवलपिंग नेशंस के पास 1% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी और 99% 5% के 5 कंट्रीज के पास थी। तो हमें तो स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा ना क्राइटेरिया, मल्टीनेशनल कंपनीज को कम से कम हम पेटेंट दें उस समय। डोमेस्टिक फाइलिंग अब जाके हमारी इंप्रूव हुई है, वो भी एट पार नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज के या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के। तो वो जो डिवाइड है उसके चलते हमारा ये स्ट्रिक्टनेस था, और वो आज भी है। जितना सेक्शन 3 के बारे में पढ़ोगे उतना पाओगे कि ये बड़ा जानबूझ के बनाया गया है। ऐसे नहीं है कि हमें स्ट्रिक्टनेस लानी थी, क्यों भाई, हम भी तो चाह रहे हैं ना हमारे पेटेंट की स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव हुए, लेकिन हमें ये पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आर यूजिंग आर इकोसिस्टम टू गेट अ पेटेंट, एंड देन वर्किंग ऑफ द पेटेंट हमारी कंट्री में होती नहीं है। उन होल्डर्स को आपने देखा होगा पेटेंट ले लिया बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। इनफैक्ट जेनेटिक रिसोर्सेज भी हमारी कंट्रीज के होते हैं, बस बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में डिपॉजिट करा दिया, बायोलॉजिकल मटेरियल डिस्क्लोज कर दिया, और फिर आप लेके निकल लिए। वर्किंग करो ना उसका इंडिया में, व्हाट द लॉ सेज, वर्किंग इन इंडिया ऑफ द पेटेंट, इट इज अ ग्राउंड फॉर रेवोकेशन। अगर वर्किंग नहीं करते हो इन इंडिया, अगर वर्किंग नहीं करते हो इन इंडिया, कंपल्सरी लाइसेंस का भी प्रोविजन है। लेकिन कितनी बार एक्सरसाइज हुआ है कंपल्सरी लाइसेंस का प्रोविजन? ट्वाइस थ्राइस सिंस 1970। सेक्शन 84 को 2 बार 3 बार यूज किया गया है सिंस 1970। 84 है जिसमें आप कंपल्सरी लाइसेंस का प्रोविजन है, बेयर नेटको में किया गया था एक बार 2012 में, उसके बाद 2013 में नोवार्टिस केस आ गया था जिसके बारे में इतना हल्ला हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि स्विस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोवार्टिस इन्वॉल्व थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, और भारत ने कहा कि न्यू फॉर्म ऑफ द नॉन ड्रग शोइंग नो एनहांसमेंट इन द एफिकेसी, हम इसको नहीं दे सकते जी पेटेंट। वो बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म था, है ना जी, इट वाज अ बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ इमानिथिन मेसाइलेट। पहले से इमानिथिन मेसाइलेट आपका पेटेंटेड है, आप बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म पे मांग रहे हो, लेकिन एनहांसमेंट तो दिखाओ ना। हम पर से मना नहीं कर रहे पेटेंट देने से, हम कह रहे हैं जी न्यू फॉर्म है तब देंगे जब एनहांस एफिकेसी प्रूव कर दोगे। ये जो 2 वाक्य हुए 12 में 13 में, इसकी इमीडिएट जो रिएक्शन आई, वो वर्ल्ड वाइड रिएक्शन क्या आई, उसकी इमीडिएट रिएक्शन ये आई जी कि हमारे ऊपर सैंक्शंस तक की बात चलने लगी। और यूएसटीआर का एक यूनिलेटरल रिपोर्ट आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का स्पेशल 301 रिपोर्ट, उसमें बोला गया कि भारत जो है इन्फ्रिंजिंग नेशन है। एंड जब से यूएसटीआर की वो रिपोर्ट आती है, यूनिलेटरल है, इट्स अ यूनिलेटरल रिपोर्ट, अपने आप एनालिसिस किया, अपने आप बना लिया, नो बायोलेटरलिज्म नो मल्टीलेटरलिज्म, और उसमें आप घोषित कर देते हो कि इन्फ्रिंजिंग नेशन है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे डाल दो जी इनको। पिछले जब से ये यूएसटीआर रिपोर्ट 301 आ रहा है तब से लेके आज तक हम इन्फ्रिंजिंग नेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे प्रेशर्स माउंट होने लगे,
जब ये प्रेशर माउंट हुए तो 2016 में नेशनल आईपी पॉलिसी लानी पड़ी। अब नेशनल आईपी पॉलिसी वाज अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। काम तो वहां पहले भी कर रहे थे हम सारा एज इट इज। सो द पॉइंट इज, क्लेम जब आप ड्राफ्ट करोगे ध्यान से करोगे, बहुत केयरफुली करोगे, और ये जो चीजें जो मैंने 2-4 एस्पेक्ट्स बताए इनको फोकस करते हुए करोगे। इसके बाद कन्वेंशन एप्लीकेशन होती है। अगर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं तो कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या है? आपने पेटेंट यहाँ फाइल कर दिया, अब आपको दूसरी कंट्री में भी चाहिए। अब जिन कंट्री में चाहिए उनका विद इन 12 मंथ्स टाइम ऑफ द फाइलिंग इन इंडिया आपको प्रायोरिटी डेट वहां भी मिल जाएगी वही सेम। मैंने मेरे कंट्री में 1/1/2026 को डाला, उस कंट्री में भी 1/1/2026 ही प्रायोरिटी डेट मिल जाएगी मुझे, क्योंकि कन्वेंशन एप्लीकेशन का प्रावधान है। और अगर आप पीसीटी रूट से जाते हो तो मल्टीपल कंट्रीज में इन वन गो डाल सकते हो। मैं तो जी 6 कंट्रीज में डेजिग्नेट या 6 कंट्रीज में पेटेंट फाइल करना चाह रहा हूँ, XYG जो भी कंट्रीज हैं। दैट इज अ पीसीटी एप्लीकेशन, इंटरनेशनल एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। डिविजनल एप्लीकेशन जो होती है वो सेक्शन 16 में होती है। इसका पर्पज रहता है कि कल को कुछ आपने फाइलिंग के बाद नया कुछ किया, पेटेंट इन एडिशन एक चीज है, साथ में डिविजनल एप्लीकेशन भी, बट इट इज टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ इन्वेंशन। अब उस समय आपको लगा कि ये मैंने डिवाइड कराना चाहता हूं, मैंने डाला था उस समय क्लेम, लेकिन नाउ आई वांट टू डिवाइड दीज इनटू 2। इन दो चीजों को अलग अलग करना चाह रहा हूं मैं। यू विल गो अहेड विद द डिविजनल एप्लीकेशन बिफोर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट जा सकते हो, बाद में नहीं जा सकते। फिर तो अफ्रेश पेटेंट एप्लीकेशन लेके आना पड़ेगा नया, ऑल टूगेदर पूरा प्रोसेस कम्बरसम फॉलो करना पड़ेगा। FER आएगी, ये आएगा, वो आएगा, सब होगा, ऑपोजिशन आएंगे। फिर देखिए मैंने बताया था कि सेक्शन 6 में ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। अब ये वर्ड जो है ना, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, बड़े मिसनोमर तो नहीं है, ये मिसनोमर नहीं है ये, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ढूंढना बड़ा कठिन है कि कौन है। हमारा जो सेटअप है उसमें आप देखोगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में है, हु इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। कमीशन कर दिया किसी के वर्क आपने किसी को, तो हु इज द ट्रू इन्वेंटर। अब मैं इन्वेंटर वर्ड यूज कर रहा हूं तो इन्वेंटर तो वही है जो एम्प्लॉई है। इंस्टीट्यूशन इज बिकमिंग द एप्लीकांट, आपकी इंस्टीट्यूशन एप्लीकांट है, यू आर द इन्वेंटर। ट्रू एंड फर्स्ट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर कल को कंटेस्ट होती है ये बात तो इन्वेस्टिगेट करा जाएगा हु इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, राइट। इंडिया में या वर्ल्ड वाइड अभी फर्स्ट टू फाइल प्रिंसिपल फॉलो होता है। US has recently also aligned with the world. Earlier they used to follow the approach who is the true and first inventor. उनके यहाँ ये अप्रोच होती थी, अब वो भी इसी पे आ गए हैं फर्स्ट टू फाइल, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिविटी है ना, जिसने जिस डेट पे फाइल किया नाम लिखा है जी, इसी यही है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ये असम्पशन है हमारी, या प्रिजम्पशन है। उनके यहाँ उल्टा कई सालों तक वो चलाया उन्होंने, लेकिन उसमें क्या होता था कि बहुत अर्ली स्टेजेस पे लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाते थे लोग। जब आप डेट से डिटरमाइन ही नहीं कर रहे हो, so of course there is a possibility that people will go into the litigation to decide as to who is the true and first inventor. यहाँ सीधे सीधे डेट है, मैंने 1/1/26 को डाला, आपने 2/1/26 को डाला, सो मेरा फर्स्ट टू फाइल का प्रायोरिटी है वो मैं सुपरसीड करके आपको इस मामले में। सो यू whenever you conceive an idea, you think of gestating that idea in the period of 12 months। 12 महीने में आपको लगता है कि जस्टेट कर दोगे कंसीव करके उस आइडिया को, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द प्रोविजनल फाइलिंग ऑफ द पेटेंट। प्रोविजनल एप्लीकेशन में आपको फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब नहीं करना होता, वो सेक्शन 10(5) की, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 की मैंडेट नहीं लगती आपके ऊपर, वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में लगती है कि फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करो। वहां पे आप ब्रीफली भी डिस्क्राइब कर दोगे और बता दोगे ये काम है जी, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डल जाएगी। उसके 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डालनी होती है। एंड यू ऑल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ
फाइलिंग द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डायरेक्टली। आपको लग रहा है आपका काम तैयार है, यू फाइल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डायरेक्टली, सीधे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से भी जा सकते हो। ये पढ़ लिया होगा आपने कि अंडर सेक्शन 20 अगर आप एप्लीकांट को चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो बिफोर द ग्रांट, असाइनमेंट कर दिया, कुछ और कर दिया, वो नाम वाम में चेंजेस हो जाते हैं। पोस्ट ग्रांट सेक्शन 69 इज यूज्ड टू रजिस्टर असाइनमेंट ट्रांसमिशंस और इंटरेस्ट अराइजिंग ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब अगर ग्रांट हो गया उसके बाद आपको नए लोग ऐड करने हैं तो सेक्शन 69 से जाते हो। ये आ गया वो ऑफ्टन कोटेड 3 स्टेप टेस्ट, novelty, non-obviousness, utility. This is an often quoted text. It is a very popular test, and it is the foundational, test or the requirements for getting the patent protection anywhere. पूरे worldwide, these 3 protections are usually referred and usually relied upon: novelty, non-obviousness, and utility. I am reading them as novelty, non-obviousness, and utility. But in Indian scenario, आगे जा रहे पीछे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। In Indian scenario, neither the word novelty nor the word non-obviousness or utility is traceable in the entire act. कहीं नहीं मिलेंगे words आपको लिखे हुए पूरी एक्ट में। These words are borrowed basically for the purpose of सिंक्रोनाइजेशन पर्पज है कि ठीक है, दूसरे जुरिस्डिक्शंस में भी, उनके जजमेंट्स में भी, उनके लिटरेचर में भी ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो हमने यूज कर लिए, नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस और यूटिलिटी। लेकिन असल में हमारे यहाँ न्यू फॉर नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप फॉर नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर यूटिलिटी आर यूज्ड इन आर एक्ट। हमारी जो एक्ट है उसमें न्यू वर्ड फॉर नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप लिखा है, वहां दूसरी कंट्रीज में नॉन ऑब्वियसनेस वर्ड यूज होता है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर यूटिलिटी, वहां यूटिलिटी यूज होता है। ये 3 टेस्ट हैं। इसके बाद मैंने ये जो लिखा है ना सारा, आप देखेंगे नोवेल्टी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, these 3। इसके बाद what are not inventions? Section 3 and 4 tells us what are not inventions. This section 3 and 4 which tells us what are not inventions. And lastly, disclosure और written description, जिसके बारे में मैंने बात की कि अगर ये भी मिसिंग है ना तो पेटेंट नहीं मिलेगा, भूल जाना। तो इट इज एज अ क्विड प्रो क्यो फॉर ग्रांट, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये भी होना जरूरी है, और ये वैसा होना जरूरी है जैसा मैंने बताया कि क्लेम और डिस्क्लोजर में ह्यूमंगस गैप ना हो, नहीं तो बात जो चीजें रेड में डाली गई है ना, ये चीजें नोवेल्टी को निगेट करने के लिए देखी जाती है कि वर्क कहीं एंटिसिपेटेड तो नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट तो नहीं है, पब्लिकेशन तो नहीं है, यूज में तो नहीं है, पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, राइट? ऑल ऑफ दीज आर टू बी चेक्ड टू निगेट द नोवेल्टी। हु डज इट? इट इज द पेटेंट ऑफिस व्हिच डज इट व्हाइल कंडक्टिंग द पेटेंट सर्च। और इनके बेसिस पे एफईआर आती है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, जिसको आप रिप्लाई करते हो। 6 मंथ्स का टाइम होता है कि जी आप लोगों ने जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी है वो सही नहीं है, मेरा वर्क डिफरेंट है, मैं ये मांग रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, वहां नहीं आ रही है, अगर मैं वहां
एंटीसिपेशन डिस्ट्रॉयज नोवेल्टी। एंड नोवेल्टी क्या है? न्यू क्या होता है? व्हाट इज नोवेल्टी? जो एंटीसिपेटेड ना हो। और एंटीसिपेटेड क्या है? पब्लिक डोमेन में ना हो, प्रायर नॉलेज में ना हो, प्रायर यूज में ना हो, प्रायर क्लेम में ना हो कहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायर आर्ट, प्रायोरिटी डेट एंड पर्सन स्किल इन दी आर्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ इसको आपको। सेक्शन 29 से 34 तक तो एंटीसिपेशन की एक्सेप्शंस दी हुई है कि कुछ चीजों में एक्सेप्शंस हैं, जो हम बात कर रहे थे शुरू में भी कि कुछ चीजों में एक्सेप्शंस हैं। आप अगर उसको उस तरह से यूज करते हो, जो मेरे ख्याल से सुबह विक्रम जी भी बात कर रहे थे कि कुछ चीजें आप पब्लिकेशन करके भी पेटेंट के लिए जा सकते हो, वो सब यहाँ डाला हुआ है कि अगर पब्लिकेशन से एंटिसिपेट हो भी गया तो भी इन सर्टेन सिचुएशंस novelty will not get affected, novelty will not get negated, novelty negate नहीं होगी, affect नहीं होगी। novelty है क्या? a new invention, जो what does our law require? that there has to be a new invention। तीन चीजें इकट्ठी हैं यहाँ पे इस डेफिनेशन में। new invention which involves an inventive step and capable of industrial application। all three parameters have come into this two-line sentence। new invention which involve an inventive step and capable of industrial application is to be granted a patent। उसको पेटेंट मिलेगा। न्यू इन्वेंशन जो पेटेंटेड, जो सॉरी एंटिसिपेटेड ना हो, जिसमें इन्वेंटिव स्टेप हो और जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का हो। अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। व्हाट इज दैट फीचर? अब जब हम बात करते हैं ना इन्वेंटिव स्टेप की, तो वो क्या फीचर है जो चाहिए? What is that feature? Feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge, or having economic significance, or both, and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ लिखा है something that involves that technical advancement or economic significance or both। या तो आइदर टेक्निकल एडवांसमेंट हो, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, दोनों चीजें हो। एंड दैट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू हुम? ये हाइपोथेटिकल पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। उस आदमी के लिए जो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट है, उसके लिए वो चीज ऐसी है जो टेक्निकल एडवांसमेंट इन्वॉल्व करती है, या कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इन्वॉल्व करती है, या वो दो। तो फिर से रिपीट करूंगा, बीच में डिस्टर्बेंस आई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ एक बार मैं बता देता हूँ, पहले उसकी एक रूपरेखा बना देता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये जो तीन फैक्टर्स है ना, जब आप अपने वर्क में ये तीन फैक्टर देखते हैं कि आपका वर्क नोवल होना चाहिए, आपका वर्क में इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए। नोवल कब होगा? जब एंटिसिपेटेड नहीं होगा, वो हमने समझ लिया। इन्वेंटिव स्टेप कब होगा उसमें? जब उसके कोई ऐसा फीचर होगा जो टेक्निकल एडवांसमेंट वाला होगा, या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वाला होगा, या दोनों होंगे। एंड दैट फीचर विल मेक दैट इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। और वो फीचर उसको नॉन ऑब्वियस बनाएगा टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रूव करना। खाली टेक्निकल एडवांसमेंट हो किसी चीज में, दैट अलोन विल नॉट वर्क। देयर has to be what? That technical advancement along with the fact that it makes it non-obvious to the person skilled in the art। और वो उसको किसकी नजरिए में नॉन ऑब्वियस बनाता हो? पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट के नजरिए में। ये वर्ल्ड वाइड अगर आप कंपेयर करेंगे ना, हमारी लो सबसे स्ट्रिंजेंट इस मायने में भी, क्योंकि इसी पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट को
यूएसए में क्वालिफाई किया है ऑर्डिनरी वर्ड से, वहां लिखा जाता है पर्सन ऑर्डिनरली स्किल इन दी आर्ट। अब कोई ऑर्डिनरी स्किल का बंदा और एक पर्सन स्किल्ड इन दी आर्ट, दोनों में तो अंतर हो गया ना। हमारे यहाँ टेस्ट जो है बहुत स्ट्रिंजेंट है, इन्वेंटिव स्टेप प्रूव करना बहुत स्ट्रिंजेंट है। उनके यहाँ तो आप दिखाते हो उसको कि इन्वेंटिव स्टेप है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन ऑर्डिनरली स्किल्ड इन द आर्ट। ऑर्डिनरी वर्ड से क्वालिफाइड है ये वहां। हमारे यहाँ लिखा कि पर्सन स्किल इन द आर्ट के नजरिए में चाहिए आपको क्या, इन्वेंटिव स्टेप और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ, तब बोलोगे कि जी ये वर्क में इन्वेंटिव स्टेप है, ये नोवल भी है, फिर आप बोलोगे इन्वेंटिव स्टेप। अब एक और बात है, जब भी आप नोवल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और ये सब पेटेंट सर्च करता है जब पेटेंट एग्जामिनर, तो क्या ढूंढता है? आपने कोई क्लेम में अपने कीवर्ड्स दिए, आपके एब्स्ट्रैक्ट में आपने कुछ चीजें लिखी, क्लेम जब बनाते हो, he picks up those things and does the novelty search, and if he comes across any single prior art in use somewhere, any anticipation, any publication somewhere similar to your work, your novelty gets destroyed। आपकी नोवेल्टी खत्म, आपको बोलेगा जी नोवल नहीं है। जब वो इन्वेंटिव स्टेप ढूंढता है इसका या नॉन ऑब्वियसनेस का टेस्ट करता है, he does it more extensively of course, because it is that person skilled in the art or his view। तो वो पर्सन स्किल्ड इन दी आर्ट वो पेटेंट एग्जामिनर बन जाता है उस टाइम हाइपोथेटिकली, कि मेरे व्यू में ये वर्क नॉन ऑब्वियस भी होना चाहिए। एंड हाउ डज ही चेक इट? ही चेक्स इट बाय आल्सो रेफरिंग इट टू मल्टीपल प्रायर आर्ट। वो देखता है 10 आर्ट, 50 आर्ट, और कहता है आपने जो वर्क किया वो मोजाइकिंग है, आपने तो 50 आर्ट को रेफर किया और मोजाइक करके कहा कि ये मेरा वर्क है। दिस विल नॉट वर्क, इट लैक्स द इन्वेंटिव स्टेप। It is something which is obvious to the person skilled in the art. Person skilled in the art means someone knows it. A biochemist, mechanical engineer who sits there as a patent examiner, he knows the basic principles of his field. From his point of view, if the work is obvious, it means it lacks the inventive step. And how does he check it? By referring to multiple prior arts. He may reject the inventive step or non-obviousness in your claim or in your work by simply saying it is a mosaic of several works. Multiple arts को रेफर करके आपने वर्क बनाया है। सिंगल प्रायर आर्ट तो नहीं मिली उसे कोई रिजेक्ट करने के लिए सीधे सीधे स्क्वायरली। सिंगल प्रायर आर्ट मिलती तो नोवेल्टी पे ही रिजेक्ट कर देता। वो अब मल्टीपल प्रायर आर्ट देख के कह रहे हैं ये ओबीएस है टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। और मैंने ये भी बता दिया कि यूएसए में ऑर्डिनरली लिखा है पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट से पहले, वहां स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जितना नहीं है, यहाँ ये बहुत स्ट्रिक्ट है। जो इस हर्डल को या इस सेकंड टेस्ट को कवर कर गया वो आगे पहुंचता है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मींस व्हाट? यूटिलिटी होनी चाहिए वर्क में। वर्क में यूटिलिटी कैसे होती है? वर्क में यूटिलिटी क्या होती है और व्हाट डज यूटिलिटी इन अ वर्क मीन? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, समथिंग व्हिच इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज ऑफ यूटिलिटी। अब इस पे भी एक बड़ी सागा है, एक स्टोरी है भारत में। हमारे यहाँ nobody used to maintain the patent office. Initially was not that digitized and not equipped, so had very less resources. They never maintained the record as to which patent is being worked in India and which patent is not being worked in India. Working तो होगा तभी तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का पता चलेगा ना। तो वो जो फॉर्म 27 विक्रम जी मेंशन कर रहे थे सुबह, वो इससे डायरेक्ट बेयरिंग रखता है। इट इज अ डायरेक्ट बेयरिंग विद द रिक्वायरमेंट। एंड व्हाट डज इट मीन? कि आपको एनुअली बताना पड़ेगा कि कितना वर्क किया आपने, कितना उसको इंडस्ट्रियली यूटिलाइज किया। यू हैव टू प्रोक्योर दैट डिटेल और दोज डिटेल्स टू द पेटेंट ऑफिस एनुअली। बट ये होता नहीं था। तो 2016 में एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में गई थी
पहले आरटीआई गई थी पेटेंट ऑफिस, तब कोई आया नहीं था अच्छे से रिस्पॉन्स। फिर एक रिट पिटीशन डाली गई थी, उसमें डायरेक्शंस इशू हुई थी पेटेंट ऑफिस को कि वर्किंग का डेटा दो सारा। उसके बाद से लोग मेंटेन करने लगे, फॉर्म 27 की एक रिक्वायरमेंट भी लेके आए कि एनुअली, अदरवाइज यूटिलिटी जो एक रिक्वायरमेंट है वो ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी प्रिजम्पटिव है, मान ही लिया जाता है कि यूटिलिटी का होगा वर्क, पर होगा कि नहीं होगा वो तब पता चलता है जब उसकी वर्किंग होती है। एंड इट हैज इम्प्लीकेशंस ऑन सेवरल थिंग्स। अगर वो वर्क नहीं हो रहा है तो कंपल्सरी लाइसेंस कराओ जी, क्योंकि आप तो डोरमेंट बैठे हो आपकी पेटेंट पे। You have been granted an exclusive right, you are not working on it, sitting idle and dormant on it, killing it in fact. So you should license it. State has the power to compulsorily license it to any interested person on a ground that it is not worked in India, on a ground that it is not affordable, on a ground that it is not available. बहुत सारे केसेस में हुआ है, 2-3 में। इसका इम्प्लीकेशन ये भी है कि कल को रेवोकेशन में भी जा सकते हो आप कि जी रिवोक करो, वर्किंग तो है ही नहीं इसका। Utility is a very important requirement. Before going ahead with the patent, also explore the possibilities of utilizing it. Third party utilization, commercialization, licensing, assignment, सब हो जाता है, right? ये मोज़ाइक मैंने बताया था अभी अभी आपको। ये सेक्शन 3 है, व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या चीजें इन्वेंशन नहीं होती, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें इन्वेंशन नहीं होती। सबसे पहली लाइन में तो लिखा है ऐसी इन्वेंशन जो फ्रिवलस हो। ये वर्ड मैंने इन्वेंशन वहां से उठाया नहीं पूरा, लेकिन जब एक्ट पढ़ोगे तो देखोगे एन इन्वेंशन विच इज फ्रिवलस। कई बार क्वेश्चन करने का मन करता है कि इन्वेंशन भी है फिर भी फ्रिवलस है, लिखने में गलती हुई या ऐसे ही बिना समझे लिख दिया। ऊपर लिखा व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, मेन लाइन में, मेन हेडिंग में, मेन लैंग्वेज में नीचे लिख रहे हैं इन्वेंशन विच इज फ्रिवलस or anything obviously contrary to well established natural laws shall not be granted a patent। ये वो चीजें जिन पे पेटेंट नहीं होगा कभी भी। तब जब भी आप अपना पेटेंट पे काम करो, आइडिएशन के टाइम से ही पहले ये चीजें माइंड में रख के काम करना, क्योंकि if you will not refer to these things, you may perhaps end up creating something which is outrightly excluded, which is not a subject matter of grant of a patent। वो इन्वेंशन तो है आपकी नजर में, लीगल पार्लेंस में इन्वेंशन नहीं है। वो कॉमन पार्लेंस में तो इन्वेंशन है, लीगल पार्लेंस में इन्वेंशन होने के लिए ये अवॉइड करना पड़ेगा सब कुछ जो सेक्शन 3 में लिखा है। कोई चीज फ्रिवलस है, कोई पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी से कॉन्ट्रेरी है, कोई मियर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कोई मियर एडमिक्सचर है, न्यू फॉर्म ऑफ द नॉन सब्सटेंस है, have not shown any enhancement in the efficacy। फिर आपका मियर एडमिक्सचर मैंने बता दिया पहले, या कोई चीज मियर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ द नॉन डिवाइसेस है। अब मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, आपकी इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर की इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने कहा मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इज नॉट पेटेंटेबल, और सुबह से हम बात कर रहे हैं कि पेटेंट ले लो। ये तो इसने मना कर दिया, फिर कैसे लोगे? वो सर बताएं, सर आप बताओ, है ना? पेटेंट लोग मना कर रही है कि मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को हम पेटेंट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? सर कह रहे मेथड्स को नहीं करेंगे। वो सर बताएंगे। मेडिसिनल, सर्जिकल, curative, prophylactic, diagnostic, therapeutic, other treatments of animals or humans, plants and animals in whole, प्लांट वैरायटी से सर आए हैं, प्लांट्स को भी मना कर दिया पेटेंट देने। लेकिन हमारे पास ना जो ट्रिप्स है जिससे हम गवर्न हुए, हम मेंबर्स कंट्री बने या सिग्नेटरी नेशन बने हैं, सॉरी मुझे क्लासरूम में घूमने की आदत है, आप लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया यहाँ माइक ऑनलाइन ट्रांसमिशन के लिए। तो
ये प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ एंड इंक्लूडिंग सीड्स वेराइटीज एंड स्पीसीज। सर सुबह कह रहे थे हमारे यहाँ पे सीड भी हमने बनाए हैं, तो ये तो सीड को भी पेटेंट देने से, इंक्लूडिंग सीड, सीड भी पेटेंट नहीं होते इसमें। 3J में, 3J यही है, बड़ा पॉपुलर है ये। इसमें एक ही चीज है जो पॉजिटिवली वर्डेड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी नॉन नेचुरली अकरिंग। पूरे सेक्शन 3 में एक चीज है जिसके ऊपर उसने कहा कि पेटेंट हो सकता है, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बाकी सारी चीजें एक्सक्लूजन्स की हैं। प्लांट्स एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग सीड वेराइटीज स्पीसीज एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर द प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैं बता रहा था कि हमारा जो ट्रिप्स है या अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या और सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं which we follow and the basic tenets of those we follow, उसमें ये क्लियरली लिखा है कि आपको साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को पेटेंट देना है। उसने कोई एक्सक्लूजन्स नहीं दिए हमें। उसने ये कहा आप इनको, सॉरी पेटेंट नहीं, उसने कहा कि आपको इनको इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करना है। आप उनको पेटेंट दो या आप उनको प्लांट वैरायटी से रजिस्टर करके प्रोटेक्शन दो, कोई सुई जेनरिस प्रोटेक्शन दो यूनिक तरह की, वो आपकी कंट्री पे लार्जली डिपेंड करता है। वी लीव इट टू योर कंट्री टू डिसाइड इट। तो हमारी कंट्री ने डिसाइड किया पेटेंट नहीं दे रहे जी, हम कुछ और देंगे। अच्छा, यहाँ पेटेंट ना देने का सोशल प्रिमाइज है, सोशल रीजन है, एक्सक्लूजन क्लियरली। कई जगह पे इकोनॉमिकल रीजन है कुछ चीजों के मॉरल रीजन हैं, कुछ चीजों के डिफेंस रिलेटेड रीजन हैं। सेक्शन 4 देखोगे तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशन पे पेटेंट नहीं होता, डिफेंस के रीजन है अपने। So this is a very important section which I urge you to all to have a look at many times. इसमें लिखा है मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम पर से। अब कंप्यूटर प्रोग्राम पर से पे भी पेटेंट नहीं होता। मैंने बताया था कि लिटरेरी वर्क की कैटेगरी में आता है कॉपीराइट में कंप्यूटर प्रोग्राम, बट आपके यहाँ कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन CRI पे पेटेंट होता है। सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग नहीं बोलते हम उसे कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन की पेटेंट बोलते हैं। फिर लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क सारा कॉपीराइट में जाता है। नियर स्कीम रूल मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट। अब मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूं तो मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, धोनी कह रहा है हेलीकॉप्टर शॉट पे पेटेंट दे दो, नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है मैजिकल मैजिशियन है, वो कह रहा है जी मैं मैजिकल एक्ट मेंटल एक्ट करता हूँ, नहीं मिलेगा जी पेटेंट। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वी हैव इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड लेआउट डिजाइंस एक्ट सेपरेटली। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ कोर्स नॉट पेटेंटेबल, टीके पे पेटेंट नहीं होता है। सेक्शन 4 में इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी एंड फॉलिंग विद इन द एम्बिट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट नॉट पेटेंटेबल। तो 3 और 4 से क्लियरली कुछ चीजें पेटेंट नहीं होती। उसके बाद जो डिस्क्लोजर का था मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेक्शन 10(5) का, कि अगर ये भी मिसिंग है, फुल्ली पर्टिकुलरली डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, है ना, तो सफिशिएंट इनेबलमेंट नहीं है, अगर बेस्ट मोड नहीं बता रहे हो, बेस्ट मोड नहीं बता रहे हो अपने वर्किंग का एब्स्ट्रैक्ट देते हो 150 वर्ड्स का, ड्राइंग देते हो, कुछ मॉडल्स देते हो, ऑप्शनल होती है। डिस्क्रिप्शन एंड इनेबलमेंट 10(4) की रिक्वायरमेंट है, वो होना ही चाहिए। फिर इसके बाद बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन, क्लेम्स देते हो मस्ट रिलेटेड टू सिंगल इन्वेंशन, डिमार्केट द आउटर बाउंड्री। फिर डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, फॉर्म 5 में बताते हो कि मैं इन्वेंटर हूँ इसका। डिटेल्स ऑफ फॉरल फाइलिंग भी देते हो सेक्शन 8 में, फॉर्म 3 में। अगर बायो पेटेंट है तो डिपॉजिट करते हो इसको अंडर बुडापेस्ट ट्रीटी, और डिस्क्लोजर ऑफ ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ रॉ मटेरियल करते हो अंडर सेक्शन 6 ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। आपको एक बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में डिपॉजिट भी करना पड़ता है, वो अप्रूवल भी लेनी पड़ती है ना। अब ये एक पेटेंट ग्रांटिंग का प्रोसेस है पूरा, पेटेंट एप्लीकेशन, फिर उसकी पब्लिकेशन, यहीं पे प्री ग्रांट अपोजिशन भी आ जाती है कई बार, सेक्शन 25(1).
So what? You have to defend it, which is why the time in granting a patent is quite, lengthy. Design में emergency उसको. So this is the glance or glimpse of the process to be followed. ये बड़ा कर्जली बता रहा हूँ मैं. इसकी एक एक चीज की डीप में जाने लगेंगे तो एक एक पे हर पे 2-2 लेक्चर चाहिए, 2-2 घंटे. पब्लिकेशन पे लेक्चर, एग्जामिनेशन पे लेक्चर, एप्लीकेशन ग्रांट, ग्रांट के बाद पोस्ट ऑपोजिशन. पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन भी होती है सेक्शन 25(2) में. ग्राउंड सिमिलर ही होते हैं कि ये पेटेंट नोवल नहीं है, नॉन ऑब्वियस नहीं है, यूटिलिटी का नहीं है, स्टॉलन है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का नहीं है. All these same grounds are used for pre-grant and also for the post-grant opposition. The only difference is pre-grant is before the grant and post-grant is after the grant. After the grant of the patent, you may file the post-grant opposition within 3 years of the time. Post-grant के बाद 3 साल के अंदर अंदर डालनी होती है, उससे बाद में अलाउ नहीं करते हैं. So thank you very much. I think it is the time to conclude. If there are any queries, I am happy to take up the queries quickly. Yeah, that's डॉक्टर पी के पाठक है, माइक दे दीजिए इनको. वैसे तो सर ऑडिबल हैं. डॉक्टर पी के
Hello, hello. Are you?
चलो आ रहे
इसको बाहर अंदर आने के लिए, ठीक है। और जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं प्लीज, आगे आ जाओ इधर। Sir, Dr. HB Singh sir has joined. Sir, are you there? So, good afternoon, friends. Yes, Vijay, I've joined. Yes, sir. We can hear you, sir. Sir, good afternoon, sir. Yes, sir. Uh, your voice is not very clear, sir. I'm just. I will be talking only through my mobile. Now, as I told you, there is no power. Okay. So, So आवाज बढ़ाइए। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप थोड़ा वहां से वॉल्यूम बढ़ा लो। वॉल्यूम हमने फुल कर रखा है सर, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर कि आवाज कम आ रही है सर आपकी। अच्छा, और जोर से बोलूं? आप बोलिए तो मैं मेरी मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आ रही है सर, बट वेरी लाइट, स्लाइट, वेरी स्लो एंड लाइट। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन चलो मैं थोड़ा हमको उनका वॉइस बहुत क्लियर आ रहा है। वो इवन दो देर इज सम कनेक्शन इशू है, लेकिन वॉइस क्लैरिटी है। नहीं, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर विनोद, So इन yeah, I आवर think हॉल we can ना। continue. या राइट, ओके सर। From my side, your voice is very ओके सर, ओके ओके clear. सर। आपको आ रही है आवाज सर की? आ रही है सबको? ओके सर, नाउ वी कैन स्टार्ट सर। Dear friends, welcome to post lunch session, and we are going to start with a very important lecture, and that is going to delivered by Dr. HB Singh sir. And before I invite Dr. HB Singh sir to deliver the lecture, just in brief for the audience, I would like uh, to tell something about the Professor Dr. HB Singh, Professor HB Singh sir. Professor HB Singh sir is basically did his MSc in botany in 1977 from Gorakhpur University, PhD in 1981 from the Banaras Hindu University, and currently he is serving as an advisor cum coordinator for Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
He has worked in the various capacity in various organizations. Started with the career from the GB Pant University. Then he went to the uh, Banaras Hindu University and NBRI and CMAP Lucknow, and he was the head of plant pathology division from 1992-1998 at NVRI Lucknow, and he has contributed in the field of the sustainable agriculture through the identification, characterization, and yield validation of the novel biocontrol agents for the management of the various plant pathogens, a novel environmental friendly protection technology. In this process, Dr. Singh developed several formulations containing the microbes, that is Pseudomonas, Rhizobium, Bacillus, Trichoderma, that can be used in the as a biopesticide, biofertilizer, and biostimulant. The official of IPM labs of the government of Uttar Pradesh have been trained That's how I regularly. think you just cut down my CV. Right, I sir, will. right. I will do that, Yeah, sir. yeah, And beside that, what I'd like to emphasize that he has been awarded with the several awards that include the CNR Rao Award from BHU, the Gyan Ratna Award from the CST UP in 2012, Professor Panchanan Maheshwari Medal by Indian Botanical Society in 2011, and he has guided more than 32 PhD students and 6 postdoctoral students, and that include the women scientists. He established the fruitful research collaboration with academic and industry researchers, published jointly with the national and international collaboration. He has published 19 patents in USA, Canada, and 10 patents, Indian patents. So you can see that the how much he has given his valuable emphasis on the commercialization of the technology and their protection through the IPR, like the patent procedures. He has published many publications, more than 320 research papers, including the 96 book chapters, 50 edited books from the different international organizations, publishers like the KV, Springer, and elsewhere, CRC, etc. So you can understand that the how much he has contributed in the area of the specialization. We are fortunate that we requested to Dr. H.V. Singh sir to deliver the lecture, and he agreed to spare his valuable time. And although he is busy in some meeting, but we requested him to be available for this training program, this workshop, and he is with us. So now I request to Dr. H.V. Singh sir for the delivering his lecture on the topic of the IPR in Indian agriculture. That's thank intellectual you. property for the research. Introduction. Wonderful introduction. My dear friends, I will be talking on intellectual property opportunity for research and innovation. I was listening some of the lectures delivered by eminent persons this morning, and most of the things have already been covered. So fundamental part I will leave, but I will try to tell you the most important crux of the IP. In fact, if you see my CV, you will appreciate I was the first person in the country to patent micro from India. Number one. You see, when I patented the micro and varieties, that time India was not allowing patenting variety as well as the micro, live micro. So that way, that time what we did in CSIR, that we patented all our innovations in US and other part of the world. And you may be knowing that there are different kind of intellectual property right protection offices. The most commonly used outside is the US Patent Office, European Patent Office, WIPO, and the PCT is the most important, Patent Cooperation Treaty, and in common language that is known as Global Patent. So what the priority of the CSIR was that time, that if you feel that your innovations and your IP can fetch some licensing from outside the country,
So the CSIR is promoting PCT applications. Now, if you know, friends, PCT filing means first of all, you have to file in India, and then you have to select the countries in which country you want to file your patent. Then certainly your application will be forwarded by the Indian Patent Office to those countries, and they will be examined in the respective countries, and accordingly you will get award. So this is the procedure. And unfortunate or fortunate part is that even CSIR is now not that liberal in filing patent, because most of the patents filed by Indian scientists, they are never commercialized. Even if they are commercialized, the license fee is so minimal that the institution cannot afford putting that much money. Now see the screen, friends. As you know, intellectual property is not only patent. It is industrial property and copyright, trademark, and geographical indication. And in the industrial property, you have patents, trade secrets, plant variety, integrated circuit, and the industrial design. As a plant scientist or as agriculture scientist, if you have developed a novel variety, you can just file your registration with plant variety production. So what is patent? This is a very simple definition of the. No, once I say go ahead, then only you move the slide. Na? Okay. Now, patent is a legal. This is the technical definition of patent. Patent is a legal monopoly that is granted to the owner of the new invention. Please remember, discoveries are never patented, and that is capable of industrial use for a specific period of time. Most of the time, what is happening in our country, that scientists, to increase their CV, they are filing number of patents. And in the morning, there was a example that some private universities, they are filing thousands and thousands of patents, but none of them they are commercialized. So if you read the definition of patent, it must have industrial use, number one, and it should be commercialized also, because until it is commercialized, there is no way of filing patent. What is the advantage of filing patent? It empowers the owner of a new invention to prevent others from manufacturing, using, importing, or selling the patented invention. This is the legal definition. Now the next slide, please. That who are the controlling authorities of intellectual property right in India? You see, there are three distinct type of authorities. Ministry of Commerce and Industry, they regulate the copyrights. Ministry of Human Resource Development and the Act and Layout Design and Integrated Circuit is administered by the Ministry of Telecommunication and Information Technology. And in case of protection of plant varieties and Farmers' Right Authority, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare administer the Act on Plant Varieties. So as agriculture scientists, our focus should be on protecting the variety under this authority. Next slide, please. Now, for the students, I was told that large number of students are participating in this. So friends, listen this one. The Patent Act was passed by the Act of Parliament in 1970. Later on, several amendments had taken place. Design Act was passed in 2000, Trademark in 99, Copyright in 1957, Layout Design Integrated Circuit, it was 2000, Protection of Undisclosed Information, that is trade secret, is in 1872, and GIE in 99, and last one, Plant Protection, the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act was passed in 2001. So these are the year in which year the Parliament activated these act through the legislation, and the Gazette notification has already been issued during that. Next one, please. Now, why the IP is important in context to Indian, particularly Indian context, I will tell you. Since the act was passed very late, 1970, and if you compare, the US started patenting way back in 1790. 1790, US started patenting, and if you read the history of other different kind of patent offices across the globe, you will find that Indian patent office started very late. So we are quite late. Why you have
forwarded the slide. I said, let me say forward, then only you go ahead. Go back to the previous slide, please. Yeah. Next. Next slide, please. Yeah. What are you doing here? Okay. So filing of intellectual property right not only helps innovator to protect their invention, but also provide better collaboration and funding. I will tell you my own example. Serving at different institutions, I was in the university, I was in CSIR Institute. So I was the one who got maximum grant from different type of agencies, including some foreign grants. And this happened to me only because my IP portfolio is very strong. And at the end of my talk, I will be showing you when I started patenting, that time ICR was not having even awareness that patent has to be filed. So this is one important example why one should file patent and get the patent awarded. Then with the increasing focus on research across border collaboration, the need to learn about IPR to safeguard their innovations has increased among the researcher. All over the world, even small countries like Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, they have now started thinking and they have started filing patent also. So they are asking the researcher from India that please come to my country and help me in filing patent. After my retirement, friends, you will not believe, I used to get a lot of queries from different countries, these developing countries, that please come to my country and help me. And I have visited few countries and helping the scientists of those countries in filing patent. And demand of IP is increasing in developing countries, I told you. Next slide, please. Now, this particular program organized by, Fodder and Grassroots Research Institute, I hope, is to sensitize students as well as young researchers. As a scientist, most of the scientists, they are very senior scientists. They have the career options also, because once they become principal scientist, they feel that beyond that, there is no chance of getting any promotion. But my thinking is entirely different. We don't work for promotion or we don't work for, like this. Our aim is that work for the country, and if something new comes up, definitely the country will be benefited. And that is why people from agriculture, they must focus on filing patent and particularly the utility patent. If I ask the students, how many of you have seen the IPR policy 2016? Many of you may say I have, but I know I was teacher in the university for a very long period. Students normally don't see this type of policy document. So friends, I request you that please go through the IPR policy 2016. Then only you will realize that how much work has been done by Indians to regulate the intellectual property right in India, and what way the different universities and ICR system or CSR system or ICR system, DRDO, even all kind of ministries dealing research and innovation, they are filing patent now. And to do that, I believe that regular training and workshop has to be done by different organizations, by dedicated IP experts. I told you that there are many good speakers. You will get a lot of speakers across the country, but I'm a real practitioner of IP. As I told you, I have already filed more than 30 patents, 25 awarded, and out of 25, 19 US patents have been awarded to our group. And that shows that yes, we have really done a lot in IP, particularly in agriculture. And that is why I always tell the people that invite those people who have done something substantial in the area of intellectual property, right? This is one. So what are the benefit of registering IP? That also has to be told very categorically to the students. And I'm sure that the young students sitting in the hall, they should appreciate that once your IP portfolio is very, very strong, you will get postdoctoral fellowship, visiting scientist fellow positions, and many more positions across the globe. Because at the global level,
they see research paper as well as your IP portfolio. Research paper can be published by anybody, but intellectual property protection can be done by only those innovators who have really something novel. So novelty has to be there, and that is the only indicator of selecting those scientists as a postdoctoral fellow, as a visiting scientist. If you have 2, 3, 4 patents, certainly you will get upper edge in selecting and getting your placement in foreign countries. It will increase global research collaboration. It will attract more funding from national and international agencies. And I told you, better opportunity to visit abroad under exchange program as a PDF. Research scientists are visiting scientists. And the most important thing is attracting industries for technology transfer. See, until unless your technology is IP protected, the industrialist will not come to you. If you publish thousands of research papers, no industry will come to you. And I will tell you at the end, as I told you, my own example, why the industries came to me and gave a very handsome amount to the institution as the license fee for taking that particular technology. An incentive in the form of royalties from licensing and technology transfer is there. That is the most important part for an inventor. If you have invented something new, the incentives are given to you in the form of royalties. And my dear friends, I received crores of rupees in last 20 years from the royalty of my technologies, which have been licensed to several industries, and the products are available in Indian market. And most of the Indian farmers, they are using my biopesticide from not only in UP, from all across the country. Next slide, please. Now, if you see, next slide, please. If you see the total information on patent, over 50 million patent documents are available across the globe. 50 million patent documents, and about 1.2 million patents are added every year. And 2/3 of the technical information revealed in the patent offices, they are never disclosed. Now you see the Indian ranking. China is number 1 in the patent filing and award. Number 2 is US, Japan, Korea, then European Patent Office, Germany and India, 7th place. But do you know that this 53,000 patents filed by Indian scientists in 2009, is it a real figure or this figure has some ambiguity? I tried to find it out that who have filed this much number of patents from different universities and institutions. And you will be surprised to know that 70% patent filed in India, they are not by Indian citizens, they are by foreigners. Mostly the Americans and Chinese, the Japanese, the Koreans, they have filed patent in India, and I will be showing you the data published by Department of Science and Technology. Now, the latest figure, India has ranked 6 in patent grant, and in 2023-24, more than 1 lakh patent have been granted to Indian and the foreign national from Indian Patent Office. Okay, go to the next slide, please. Next slide. Next. Okay. Now see here, I have just put this slide only to give you an idea that if you are really a good innovator, here is the list of Indian scientists who have done wonderful job working in the multinational companies. They all are Indians. And only recently, Gurtesh Singh Sandhu was invited by Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, in the President House to honor Dr. Sandhu. Sandhu has got 1,375 patents, and he's working for Micron, a product of IIT Delhi. Likewise, you can read the name Sarvjit Singh, Sarvjit Kumar Rakshit, Deven Singh Sadhana, Ravi, all they have. Some have 750, 735, 508, 354. Means the number is very, very high. And if you see the companies where they are working,
These are IBM, a American company, General Electric, Samsung Electronic, T-Mobile, IBM, and Google. So you must think why our Indian friends going abroad, they have become so superior and they have become so much innovator that they are filing number of patents once they work for multinational companies. But once they are working in Indian universities, in CSIR system, in DRDO system, in ICR system, why we do not have that type of scientists here? I think the policy maker must think on that. इस पे हमारे राष्ट्र के जो पॉलिसी मेकर है दोस्तों, उनको सोचना पड़ेगा कि सुंदर पिचाई साहब ने IIT खड़गपुर से बीटेक किया और उसके बाद गूगल ने हायर किया, अरबों रुपए उनकी सैलरी है। ऐसे लोगों को इंडिया में रिटेन क्यों नहीं कर पाते? और ये जो भारतीयों की सूची मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे भारतीय जो हैं इन कंपनियों के लिए काम करके दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट जा रही उन कंपनियों को, ना कि इंडियंस को। सिंस दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन एंड दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू। अब आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देखिए दुनिया में एक ऐसा भी व्यक्ति है, जापान का है, जिसने 20,120 पेटेंट जिसके नाम से दर्ज, 20,120 patents have been awarded to this gentleman, Yamazaki. He is a president of Semiconductor Energy Laboratory. अब आप इमेजिन करो, ये भी इंसान है, ये भी हमारी तरह दाल चावल रोटी खाता होगा, कभी कभी फिश खा लेता होगा, अलग बात। यदि एक जापानीज 20,120 पेटेंट लेकर के दुनिया में झंडा गाड़ देता है, तो हम भारतीय ऐसा क्यों नहीं करते? और ये मेरा अनुरोध उन बच्चों से है, यंग माइंड बडिंग साइंटिस्ट से है, जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी यामाजाकी की तरह क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके अंदर इनोवेशन है तो आप ऐसी ऐसी चीजों को करिए, और आप सेमी कंडक्टर की दिशा में जो यामाजाकी ने किया है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और आज इन्होंने पूरी दुनिया को ऐसे बदला है कि आज जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो, बिना सेमी कंडक्टर के वो काम होता ही नहीं। यानी इंसान को खुश रहने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी जो पे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, और ये सारे पेटेंट्स इनके कमर्शलाइज काफी कुछ हो गए। ऑस्ट्रेलियन इन्वेंटर एक है सिल्वर ब्रुक नाम से, जिसके भी 10,000 US पेटेंट। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के यहाँ दिए हैं, सिर्फ इसलिए दिए हैं दोस्तों कि आप 5-10 पेटेंट लेके छाती फुला के कहते हो कि मेरे 10 पेटेंट है, मैंने 4 पेटेंट। मैं देखता हूँ मेरे मित्र लोग फेसबुक पे अगर एक पेटेंट, एक कॉपीराइट भी अवार्ड हो जाए, फेसबुक पे पन्ना भर लिख डालते हैं, डेली उसको महीनों डालते रहते हैं। शर्म करो यार। सोचो कि हमारे जापानीज प्रोफेसर ने 20,000 से अधिक पेटेंट लिया, ऑस्ट्रेलियन इन्वेंटर ने 10,000 से अधिक पेटेंट लिया, चाइनीज इन्वेंटर ने 5,000 से अधिक। एक एक लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एस्ट्रोफिजिक्स का एग्जाम्पल है। तो ऐसे लोग हैं इनकी तुलना में, और ये लोग प्रोपोगंडा नहीं करते, ये पेटेंट लेके कमर्शलाइज करते हैं और करोड़ों और अरबों रुपए अपने लिए भी बनाते हैं और देश के लिए भी बनाते हैं। इनकी इनकम सुनोगे ना तो आधे लोग मुरझा के गिर जाएंगे और पागल हो जाएंगे हिंदुस्तान में लोग सुन करके कि यामाजाकी साहब की एनुअल रेवेन्यू पेटेंट सेल करने के बाद कितनी। इमेजिन ही नहीं कर सकते आप, यू कैनॉट इमेजिन। तो गूगल पे जाके देखना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इंडिया स्टिल नीड मोर इनोवेशन, ये बात तमाम सारे मीडिया के लोग दुनिया के कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि चाइना ने 5,30,000 पेटेंट और अमेरिका ने 3,62,000 पेटेंट हासिल किया है, ठीक है ना? तो उसके कंपैरिजन में हम 1,000 में हैं, और उन 1,000 पेटेंट में भी क्या स्थिति है कि उनके नंबर गिने चुने हैं। अगर मैं ये कहूं कि 10-12 पेटेंट हैं जो लाइसेंस हुए हैं, बकिया सब बकवास। तो कुल मिला के मैंने जैसे शुरू में बताया, मेरी लैंग्वेज पर मत ध्यान दीजिएगा, और चूंकि बच्चे भी बहुत बैठे हैं और झांसी में प्रोग्राम हो रहा है,
तो मुझे लगा दिल की भाषा हिंदी में भी बोलूंगा तो मजा आएगा। तो आप देखो कि मैं शुरू में बता रहा था कि जब पॉलिसी मेकर बात करता है कि इंडिया 7th प्लेस पे पेटेंट फाइलिंग में 9th प्लेस पर है, तो अच्छी बात बोलने दो, वो पॉलिटिशियन को बोलने दो, अपने डायरेक्टर जनरल साहब को बोलने दो। लेकिन एज ए साइंटिस्ट जब आप एनालाइज करते हो, जिसे बार बार मुझे ये तकलीफ होती थी कि यार जब मैं बीएचयू का पेटेंट देखता हूँ तो बीएचयू ने 30 ही पेटेंट फाइल की, तो ये लाख पेटेंट किसके हो गए जरा देखूं। तो अब आप ये देखिए, डीएसटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें बताया है कि आप कलर्स देखिए दोस्तों, कि ये अलग अलग, लाल रंग का जो बार आपको दिख रहा है ये इंडिया के पेटेंट हैं जिन्होंने विदेशियों ने फाइल किया है, और ब्लू कलर का जो बार है ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। यहां से मेरी क्यूरियोसिटी खत्म हुई, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि 75% पेटेंट अवार्डेड इन इंडिया दे आर फाइल्ड बाय फॉरेन नेशनल। तो उसमें ज्यादा चौड़ी करने की जरूरत नहीं छाती को, आप अपने आप को अभी सिकोड़ कर रखिए और कहिए कि वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग काफी नीचे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे डेटा अगर आप गूगल पे जाके खोजोगे तो मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये आपको देखेंगे यूएसपीटीओ में कि अलग अलग सालों में किस तरह के लोगों ने एप्लीकेशंस डाली हैं, और अब आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है कि लोग इंडिया से भी बाहर पेटेंट फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, वही डेटा डीएसटी से वेबसाइट से उठाया हुआ है। वाइपो की रिपोर्ट कहती है कि रेजिडेंट इंडियन जो रेड बार है रेजिडेंट इंडियन है, और जो नॉन रेजिडेंट है ये रेड बार है, और ब्लू बार जो है रेजिडेंट इंडियन, ये इनके जो पेटेंट्स हैं ये फाइल हुए हैं वाइपो में। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या नेक्स्ट, या पाई डायग्राम, या यू कैन सी है डिस्ट्रीब्यूशन R&D इंस्टीट्यूशन इंडिया में देखेंगे आप कि स्टेट सेक्टर के 15% हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का 9%, यूनिवर्सिटीज का 10%, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन 3% और प्राइवेट सेक्टर 63%। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आज भी इनोवेशन की कमी है। मेरी बात को गौर से सुन लीजिए आप लोग। आईसीआर में प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बहुत बधाई कि आईसीआर लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। आईसीआर का भी पेटेंट पोर्टफोलियो बहुत बढ़ गया है, अभी नंबर काफी आप बराबरी करनी है सीएसआईआर की, लेकिन सीएसआईआर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफी आगे है आईसीआर से। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अभी हमें बड़ी मेहनत करनी है कि अगर हमें चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस आवे और पेटेंट फाइल करें, उसके लिए आवश्यकता है इंस्टीट्यूशन को ऐसा काम करने की, इंसेंटिवाइजेशन की। मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इन आवर कंट्री that most of the organization they do not have any incentive for the innovators. In CSIR we do have, as I told you, I received crores and crores of rupees from my licensing of different technologies. In ICR 2 you have a procedure of sharing the benefit which has been given to the inventor, but that is very very minimal. I think until and unless the organizational heads, the Director General of ICR, Director General of CSIR, Director General of ICMR, and such organizations, they should decide that those inventors who are filing patent and who are transferring the technology, they must be substantially rewarded. Otherwise, nothing will happen. Note it down, nothing will happen, because what is happening? Once you are promoted to professor, once you are promoted to principal scientist, beyond that there is no position. Beyond that there is only one position. Either you may become the director of institute or you may become the vice chancellor. Okay? And these positions are very, very limited. See, number of institutions are very, very limited, and therefore
You must dream that you should get one day the director of ICR institution or CSR institution or whatever may be, or the vice chancellor of Central University or State University. But at the same time, the innovator, they have to be given proper, incentives, incentive in any form. And I will tell you example of my own organization when Dr. Puspangadhan was the director of my institute, NBRI, National Botanical. He wrote to Director General that time that the inventor must be given proper share of their technology transfer. And that time CSR decided that 40% of the license fee will be given to the inventors, and the remaining 60% will be kept with the institution. So that was the ratio. And if you develop some technology in association with farming community or with the NGO, there is another rule that equitable sharing of benefit. And that has been recognized globally, equitable sharing of benefits. So you can share the benefit with the community who has given the input for your patent. So this is how one can really give incentive to inventor, then only inventors will be motivated, they will be encouraged, and then only they will file patent. Now go to the next slide, please. नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड को प्लीज दिखाइए। अभी तो क्या दिखा रहे हो भाई? मैंने एक मॉडल दिया था घर का, वो नहीं दिखा रहे हो। किरण मजूमदार साहब का दिखा रहे हो। एक मॉडल बना हुआ है, नहीं है वो, कोई Sir, बात this नहीं, is आगे not बढ़िए। showing, sir. ओके, नॉट शोइंग ना बिकॉज। अब एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। किरण मजूमदार साहब का एक एग्जाम्पल देखिए। सी इज MSc बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इनका एक सिंपल उदाहरण देखिए, और इनकी एक ट्वीट को मैं यहाँ ले आया हूँ आपके सामने। इन्होंने लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी मस्ट इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप because entrepreneurship boosts job creation, and she is writing that I've created 20,000 jobs through Biocon Limited. ये बायोकॉन कंपनी है बेंगलोर की, जिसमें इन्होंने 20,000 लोगों को जॉब दिया है। खुद की योग्यता MSc है, इन्होंने PhD नहीं किया है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि इन्होंने दुनिया के तमाम देशों से ऑनरिस काजा इनको मिला है। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजित किया है। और अगर आप इनकी प्रोफाइल देखोगे तो पता चलेगा किरण मजूमदार सर हैं क्या और करती क्या। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखिए, इंडिया जो है इनोवेशन में लैग करता है। इसकी बात यहाँ कही गई कि 2020 में 5,30,000 पेटेंट चाइना के थे और 3,52,000 पेटेंट अमेरिका के थे। दैट इंडिकेट दैट इंडिया में इनोवेशन की कमी है, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे बार बार फोकस करके कह रहे हैं कि यस वी डू हैव, कोई हमें थोड़ा कमी है, अभी इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्लाइड किरण मजूमदार साहब की दूसरी स्लाइड दिखाई। अब आप बच्चों के लिए खास तौर से देखने की बात है, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर, पोस्ट डॉक्टर फेलोज, जो लोग साइंटिस्ट बन गए उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। उनका तो जॉब सिक्योर्ड है, PS बन गए एकदम सिक्योर्ड है। अब उनको एक ही पोस्ट लेनी है, डायरेक्टर की और वाइस चांसलर। लेकिन बच्चों को बहुत संघर्ष करना है, बिकॉज जॉब्स है नहीं और आपको रात दिन मेहनत करनी ही। इस पर्टिकुलर महिला के एग्जाम्पल को खास तौर से आपके सामने पेश किया हूं कि देखिए कि इन्होंने 10,000 रुपए की लागत से एक कंपनी की स्थापना आज के 35 साल पहले, ये डेटा जहां से उठाया 10 साल पुराना था, 35 साल पहले इन्होंने कार के गैराज से शुरू किया था बेंगलोर में। और वो कंपनी उस समय बायोटेक्नोलॉजी की बनाई थी। जैसे मैंने कहा कि इनकी योग्यता ये बायोकेमिस्ट्री से MSc है, यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर से, कोई अमेरिका इंग्लैंड की पढ़ी भी नहीं है। और इन्होंने जो करके दिखाया वो दुनिया के लिए एक मिसाल है मित्रों।
इन्होंने 1200 से अधिक पेटेंट अवार्डेड हैं इनके। ये 984 जो लिखा ना, ये ऑल 1200 पेटेंट हैव बीन अवार्डेड, और 48 ट्रेडमार्क इनके ग्लोबली रजिस्टर्ड है। अब इनमें से लास्ट में सवाल पूछने का मौका मिलेगा तो पूछूंगा, कितने लोगों को पता है कि किरण मजूमदार शाह की कंपनी क्या बनाती? एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बनाती, कॉस्मेटिक्स बनाती, बायोपेस्टिसाइड का मटेरियल बनाती, और दवाई भी बनाती हैं। एक ऐसी दवाई बनाती हैं, अगर किरण ने वो दवाई नहीं बनाई होती तो करोड़ों लोग इस देश में मर चुके होते। वो दवाई क्या है? इंसुलिन। दुनिया की सबसे सस्ती इंसुलिन बनाने वाली कंपनी किरण बहन की है, बायकान, और ये लगभग 140 देशों को निर्यात की जाती। दोस्तों, ऐसे सक्सेस एग्जाम्पल को देखो। कहते हैं ना, वीमेन एम्पावरमेंट। ये वीमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड, हर फील्ड में हमसे आगे हैं। और मैं तो बीएचयू में इतने साल रहा, मैं देखता था कि जब मेडल बढ़ते थे टॉपर के, तो 90% मेडल्स वो वीमेन्स को मिलते थे, 10% मेडल मेन को मिलते थे। अब ये थोड़ा प्रतिस्पर्धा की बात है। हमें आदमियों को भी, मेल फाक को भी सोचना पड़ेगा कि भाई मेडल कुछ छीनो, इनसे इतने सारे मेडल ले जा रही हैं, थोड़ा मेडल हम लोगों को भी लेना चाहिए। ऐसी भी प्रतिस्पर्धा आपके मन में आनी चाहिए। ऐसा जब नहीं आएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि 100% मेडल वीमेन ले जाएंगी। वो इसलिए ले जाएंगी, दे आर रियली वेरी सिंसियर। अगर उनको काम कोई दिया जाता है तो उसको पूजा भावना से एक्सेप्ट करके करती हैं, इस वजह से सारे मेडल इनको मिलता है। इसी तरह से आपको भी ऐसा करना होगा। सारा टाइम मोबाइल पर लगाओगे, चैट करोगे, रील देखोगे, बर्बाद करोगे आप जब ना स्क्रीन टाइम में ज्यादा, तो आपको ना कोई मेडल मिलेगा, ना आपका कभी कोई पेटेंट मिलेगा, ना आपकी कोई टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफर होगी। इसलिए मित्रों, स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करो। और अगर स्क्रीन टाइम बढ़ाना है तो पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, ट्रेड सीक्रेट को, इनको पढ़ के देखो। और दुनिया के तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने दुनिया की सूरत बदल दी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपको मैं कुछ उदाहरण दिखाऊंगा। हमारे पूर्व के जो वक्ता थे उन्होंने कृषि के 2 उदाहरण दिखाए, आईसीआर के बड़े सारे उदाहरण दिखाए, लेकिन मैं उनसे हट के दिखा रहा हूं पूरी तरह आपको, और आपको मजबूर करूंगा सोचने के लिए। कृषि का दुनिया का पहला पेटेंट अमेरिका ने लिया था, और वो था वर्ष 1790। अगली स्लाइड दिखा दीजिए आप। ये 31 जुलाई 1790 में सैमुअल हॉपकिंस को मिला था, पोटास बनाने के लिए, जो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल होता है। और इसको जॉर्ज वाशिंगटन, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उनकी सिग्नेचर से ये पेटेंट डॉक्यूमेंट दिया गया था। और एक भोज का आयोजन किया गया था व्हाइट हाउस में, उस वैज्ञानिक को बुला करके भोज खिलाया गया, और उसके बाद वो पेटेंट डॉक्यूमेंट दिया गया। ये आप अगर आर्कीव में जाके देखे हुए तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर सैमुअल हॉपकिन की जॉर्ज वाशिंगटन के साथ आपको मिलेगी। अभी मैंने आपको दिखाई थी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जी ने भी उस वैज्ञानिक को, सरदार जी को बुला करके राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया था। तो ऐसा काम तो 1790 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी किया था। तो ये देखिए, एक एग्जाम्पल मैं कृषि से ले आया हूं। बकिया मैं आपको 10-15 एग्जाम्पल ऐसे दिखाने जा रहा हूं जो डेली आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप में से किसी को भी शायद इस संज्ञान में नहीं होगा कि पिन का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। अब आप एक पिन देखिए, पुश पिन का आविष्कार किसने किया था? 1935 में ये पेटेंट लीविस को मिला था, जो अमेरिकन ओरिजिन के थे। ठीक है ना। 1933 में पिन का आविष्कार हुआ, और सारी दुनिया में पिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेपलर यूज करते हैं आप। नेक्स्ट स्लाइड स्टेपलर की है। देखिए, ऐसा कोई छात्र नहीं है, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है जो स्टेपलर का इस्तेमाल न करता हो, लेकिन कभी भी उसने जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या ये स्टेपलर रस्किन ने डेवलप किया था या किसी और ने।
ये रस्किन इन्वेंटर थे इसके, और 1955 में ये पब्लिश हुआ था, और इसको 1953 में, आज के 73 साल पहले इसको फाइल किया गया था। स्टेपल रिमूवर का पेटेंट देखिए, ये भी जो मैं ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं जो आप डे टू डे लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट, स्टेपल रिमूवर, इसका पेटेंट 2012 में मिला। ये सारे पेटेंट अमेरिकन ने लिए हैं। तो हम विश्व गुरु हैं दोस्तों, कागजों के हैं, कागजी शेर तो हम हैं। लेकिन आप देखिए कि जो आप हर रोज कोई ना कोई चीज इस्तेमाल अपने जीवन में करते हो, इस सब का पेटेंट विदेशियों ने, ज्यादातर अमेरिकन से ने लिया है। और इसकी सारी रॉयल्टी पहले के 20 साल इनको गई है। और अब ये पब्लिक डोमेन में जेनेरिक इंफॉर्मेशन हो गई है। तो आप इसको बना के बेच सकते हैं। अब आपको किसी को रॉयल्टी नहीं देनी, ना लाइसेंस भी नहीं देनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप देखिए पेपर क्लिप्स, कौन सी इसमें भैया बताइए कि आप इंजीनियरिंग है कोई भी बना सकता है, लेकिन इसको बनाने वाला व्यक्ति 1867 में बनाया था, ये भी अमेरिकन था। ये उदाहरण जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। नेक्स्ट, पेपर क्लिप के बाद जो है फाइल है, प्लास्टिक फाइल्स हैं। ये भी जो है काफी पहले 1897 में बने, कोले ने बनाया था। प्लास्टिक के कोटिंग के साथ जो आती है क्लिप्स, उसको भी देखिए किसी ने पेटेंट लिया हुआ है। स्ट्रांग, विली स्ट्रांग ने लिया हुआ है। स्लाइड, पेंसिल का है भैया, दिखा दो। हाँ पेंसिल, देखिए पेंसिल का भी आविष्कार नेक्स्ट चार्ल्स कुरियन ने किया था। इसके बाद आपको मिलेगी पेंसिल विद इरेजर। आप देखिए ना, बच्चों को जो पेंसिल देते हैं उसमें पेंसिल के साथ रबर भी लगी होती है, इसका भी पेटेंट है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये उदाहरण दिखाने का सिर्फ मतलब ये है कि पेटेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर दिमाग को लगा के ये जो एग्जिस्टिंग पेटेंट में कुछ इंप्रूवमेंट कर दो, तो भी आपको पेटेंट मिलेगा मित्रों। और पेंसिल शार्पनर का भी पेटेंट 1897 में था। पेंसिल को नुकीली बनाने के लिए जो शार्पनर होता है, इसका भी पेटेंट अमेरिकन ने लिया था, लब ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति में, कौन बनेगा करोड़पति, करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। इसके बाद जो केबीसी में भाग लेते हैं, आप शायद वो पेटेंट के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया होगा कि वाटरमैन ने 1884 में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। हर आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन इसको जानने का प्रयास ही नहीं करता है कि किसने इन्वेंट किया था। बाल पेन का इन्वेंशन किसने किया था, अगला दिखाओ, बाल पेन। नेक्स्ट स्लाइड। ये बाल पेन का आविष्कार जो है 1955 में हुआ था। नेक्स्ट वन। ये भी रिसेंट ईयर में बहुत ही बढ़िया पेटेंट मिला है, फ्लेवर ड्रिंकिंग स्ट्रा। ये जो आप कोको कोला पीते हो या फ्रूट जूस ना, स्ट्रा लगा के, पाइप लगा के प्लास्टिक की, किसी इन्वेंटर को ये समझ में आया कि भाई अगर इसको फ्लेवर्ड बना दिया जाए, और ऐसे बच्चों को जिनकी आदत पड़ गई कोक पीने की, उनको छुड़ाना है। सपोज योर सन और डॉटर इज ड्रिंकिंग कोको कोला, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो उस लत को छुड़ानी है। तो उसने क्या किया कि फ्लेवर्ड माने कोको कोला फ्लेवर्ड ड्रिंकिंग स्ट्रा बना दिया, लेमन फ्लेवर्ड स्ट्रा बना दिया, चॉकलेट फ्लेवर स्ट्रा बना दिया। तो जब आप पानी की बोतल में वो डाल के दोगे, तो बच्चा जब पिएगा ना, तो उसे लगेगा मैं कोक पी रहा हूँ या मैं लेमन जूस पी रहा हूँ। तो ये पेटेंट करने वाला बंदा विद इन 2 ईयर ही बिकेम मिलेनियर। तो देख लीजिए कि एक प्लास्टिक की जो एक्स्ट्रा बनाने वाला बंदा पूरी दुनिया में छा गया। इसको यूटिलिटी पेटेंट कहते हैं। तो इसीलिए जो कृषि के हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि कृषि के क्षेत्र में हम कौन से नए नए इनोवेशन करेंगे, जिसकी वजह से हम उस टेक्नोलॉजी को बना के बेच सकें। एक कुछ उदाहरण से मैं
बताया कृषि से संबंधित नहीं है, बड़े सरल हैं, लेकिन इन्होंने दुनिया बदल दी है और इसके इन्वेंटर्स काफी धनी हो गए हैं। कि आप भी चाहते हो कि आपके पास सैलरी के अलावा भी पैसे आए, तो आपको पेटेंट करना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी, लाइसेंस देना होगा उनको, और फिर आप भी धनी हो जाएंगे। ये पेटेंट फाइलिंग की प्रोसीजर है, ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुका है। 4 इंडिया में पेटेंट ऑफिसेज हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता। कलकत्ता इसका मुख्यालय है, और झांसी जो है वो दिल्ली जोन में आता है, तो आप दिल्ली पेटेंट ऑफिस में अपने पेटेंट को फाइल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे कि इंडियन पेटेंट ऑफिस, नेक्स्ट स्लाइड, इंडियन पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट का पहला पन्ना है। देखेंगे कि इस पे आपको पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइट पैनल पर है। इन पे क्लिक करेंगे आप तो इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, कौन से फॉर्म भरने हैं, किस लोग को क्या करना है, ये सारी चीजें आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप देखिए कि एप्लीकेशन 4 तरह की आपको भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3 एंड फॉर्म नंबर 5। ये 4। किसी को कोई दिक्कत हो आप मेरे से ईमेल पर पूछ लीजिए। आई विल हेल्प यू इन सेंडिंग यू द फॉर्म एंड टेल यू हाउ टू राइट आल्सो। मैं आपकी मदद कर दूंगा। अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है, अगर कोई साइंटिस्ट है, तो अपने सेल में जाके वो बात करें, लेकिन ये मैं ऑफर स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ कि यदि आपको प्रॉब्लम है तो आई विल बी हेल्पिंग यू इन राइटिंग पेटेंट एंड गेटिंग इट फाइल्ड टू इंडियन पेटेंट ऑफिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये देखिए पेटेंट की फी क्या है, लोगों ने बताई होगी आपको। अब बहुत घटा दी गई है विश्वविद्यालयों के लिए, आईसीआर इंस्टीट्यूट, सीएसआर इंस्टीट्यूट के लिए। एप्लीकेशन फी 20,000 रुपये कर दी गई है। कोशिश करिए कि आपका पेटेंट जो है 30 पेज से अधिक ना हो, इसलिए कि 30 पेज के ऊपर होने से एडिशनल चार्जेस लगते हैं। क्लेम जो है लिखने में बड़ी सावधानी बरती जाती है। इतना फुल प्रूफ क्लेम लिखिए ताकि आपके क्लेम को कोई इन्फ्रिंज न कर पाए। इसलिए क्लेम लिखना एक आर्ट है, और उसमें हो सकता है आपको पेटेंट अटॉर्नी की मदद लेनी पड़े। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे जाइए प्लीज। या अभी पेटेंट के क्या क्या क्राइटेरिया, जैसे मैंने बताया, पेटेंट के क्राइटेरिया देख लीजिए आप। कॉपीराइट के क्या क्राइटेरिया हैं सबको पता है। अब कॉपीराइट के बाद ट्रेडमार्क्स दिखा दीजिए, इनके कुछ लोगोज दिखा दें, ट्रेडमार्क के लोगो दिखा दीजिए। ये मैं एंड में चाहूंगा कि आप लोग सवाल करें, उस पर जवाब देंगे, इसलिए इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इमेजेस नहीं आ रही, कोई बात नहीं है। ट्रेडमार्क, जीआई, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हैं। 300 से अधिक जीआई इंडिया ने फाइल किया है, और काफी, मैं उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। बहुत सारे जीआई हैं। अभी लखनऊ से कई जीआई हुए हैं, बनारस से हुए हैं, आपका ये जो काला नमक चावल हुआ है, दुनिया भर के जीआई हुए हैं। आप गूगल पे जाके देखिए जीआई इन इंडिया, यू विल गेट मोर देन 300 जीआई ग्रांटेड टू इंडियन। वो आप नेक्स्ट चलिए, जीआई के बाद चलिए। तिरुपति लड्डू को भी जीआई मिल चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नॉन पेटेंटेबल आइटम है, और उसमें एक लाइन लिखी हुई है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इज नॉट पेटेंटेबल। ये थोड़ी सी डिस्करेजिंग लाइन है, लेकिन इसको इलाबोरेट करने के लिए बड़े कम लोग हैं देश में। एग्रीकल्चर के मेथड को भी पेटेंट मिलता है, हॉर्टिकल्चर के मेथड को भी पेटेंट मिलता है, टिश्यू कल्चर के दुनिया भर के पेटेंट हैं, ग्राफ्टिंग के पेटेंट हैं। हाँ, उसको लिखने की तरकीब जानी चाहिए, और उसके लिए टेक्निकल लोगों की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आपके जब पास ऐसे इनोवेशन हो तो हम लोगों को अप्रोच करिए, आपको बताएंगे, कोई फीस नहीं लगेगी। जैसे मैंने बोला, स्टूडेंट्स के लिए फ्री सर्विस है, और आपको मैं सही एडवाइस दूंगा कि आपको पेटेंट कैसे मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मेरे अपने पेटेंट है। जैसे मैंने बोला, 2002 में मुझे पहला अमेरिकी पेटेंट ग्रांट हुआ था ट्राइकोडर्मा पर, जो वाया कंट्रोल एजेंट। इसको मैंने 1998 में फाइल किया था। जैसे मैंने शुरू में एक रिमार्क दिया था कि जब हम लोग को पेटेंट अवार्ड हुए थे तो आईसीआर में अवेयरनेस नहीं थी। ये कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि सीएसआईआर सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन।
वहां अवेयरनेस पहले से थी, इसलिए कि वो इंडस्ट्री के साथ काम करते थे। हम फार्मर के साथ काम करते हैं, इसलिए हमें पेटेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सोच तमाम सारे हमारे वैज्ञानिकों की है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स की है, और तमाम सिर्फ वैसे हुए डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल की भी है। इस सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। किसानों के लिए काम करने में बुराई नहीं, काम करिए आप, लेकिन यदि किसानों को, उद्यमियों को टेक्नोलॉजी देकर के उद्यमी उससे करोड़ों अरबों बना रहा है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप निःशुल्क उस टेक्नोलॉजी को उस उद्यमी को दें। और मैं आपको बता रहा हूं कि इन लाइसेंसिंग जब हमने टेक्नोलॉजी की करी थी, तो अच्छी खासी बड़ी मोटी रकम उस इंस्टीट्यूशन से ली गई थी कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दो, तब हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। अब आप देखिए माइक्रोब की टेक्नोलॉजी, ये सारी पेटेंटेड है। आप इन पेटेंट नंबर को गूगल पे डाल करके पूरे पूरे पेटेंट डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। कोई 50 पेज, 60 पेज, 40 पेज के डॉक्यूमेंट हैं। तो ये आप देखेंगे। 4 नंबर का जो पेटेंट है, ये पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन, मल्टीपल कंट्री में इसको अवार्ड हुआ है। ये सिनर्जिस्टिक कंपोजिशन बायो इनोकुलेंट, ये भी जो है पीसीटी है। दुनिया के तमाम देशों में इसको हम लोगों ने किया, ताकि जो है इसका लाभ और लोगों को भी मिल पाए और हम इस टेक्नोलॉजी को बाहर भेज सकें। तो ये 10 मेरे माइक्रोवियल पेटेंट हैं। ये उस समय के पेटेंट जो माइक्रोब को पेटेंट एरा में हिंदुस्तान में नहीं रखा गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। वेराइटीज, जैसे बोला ना कि अभी तो 2000 के बाद, 2000 के बाद यहाँ शुरू हुआ ना 2010 में, तो ये वैरायटीज के भी पेटेंट हम लोगों ने यूएस में किए थे। सीमैप में जब था मैं, तब हाइब्रिड मिंट कार्ड नीम नीरकाल का, रोजा डेमेसिना की वैरायटी है, मेंथा की वैरायटी है, सिम्बो बगन की, लेमन ग्रास की, ये सारी वैरायटीज हम लोगों ने यूएस में पेटेंट की है, और बाद में प्लांट वैरायटी इन प्रोटेक्शन एक्ट में भी इनको रजिस्टर किया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है दोस्तों। मैंने कहा कि आईपीआर कॉमर्स है। जब तक आप आईपी को टेक ट्रांसफर में नहीं बदलते, उस आईपी का कोई मतलब नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को हमने फर्स्ट माइक्रोवियल पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वाज ट्रांसफर्ड टू ए गुजरात बेस्ड कंपनी नोन एज जीएसएफसी वडोदरा। आप इस पे देखेंगे लेफ्ट पैनल पर सीएसआईआर का लोगो लगा हुआ है, और राइट पैनल पर आपको देखेंगे कंपनी का नाम है। ये 2004 में 1 करोड़ की लागत से इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया था। 1 CR किसान के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन हमने किसान को नहीं दिया, हमने एक इंडस्ट्री को दिया है। और उस समय इंडस्ट्री की जो टर्नओवर थी, वो 33,000 करोड़ की थी। तो पहले हमने टर्नओवर कंपनी का पढ़ा, फिर हमने जब उसके एमडी आए तो उनको समझाने का प्रयास किया कि ये हिंदुस्तान की पहली पेटेंट टेक्नोलॉजी है, और आप अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो यू विल बी पायनियर इन द कंट्री एंड यू विल सेल द प्रोडक्ट लाइक हॉट केक। और उसका लाभ उस कंपनी को मिला, और इन्होंने पूरे कंट्री में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके सरदार इको ग्रीन बायो फंजीसाइड के नाम से लॉन्च किया, और पूरे देश के किसानों को क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट दिया। जो लोग कृषि से हैं, आप सबको पता है कि सरदार यूरिया, सरदार डीएपी, ये इसी कंपनी की बनाई हुई है। तो सरदार इनका प्रीफिक्स है, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट का नाम भी सरदार इको ग्रीन बायो फंजीसाइड। ये पहला प्रोडक्ट था जिसको हमने कमर्शियलाइज किया था, और उस कंपनी को सेम प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी को भी लाइसेंस किया। नेक्स्ट वन प्लीज। ये प्रोडक्ट ट्राइका के नाम से बिकता है, ये भी देश में काफी बड़े पैमाने पर बिकता है। और उत्तर प्रदेश की बात बता दूं दोस्तों, आज के 15 साल पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश ने इस प्रोडक्ट को 20 करोड़ की लागत से खरीदा था। यानी एक प्रोडक्ट 20 करोड़ का लिया गया था। इमेजिन करिए कि इसकी नेशनल लेवल पे क्या सेल होगी। और 4% ऑफ द एक्स फैक्ट्री सेल ऑफ द प्रोडक्ट रॉयल्टी कम्स टू द इन्वेंटर, वो हमें मिलती है। तो इसलिए हम थोड़ा अलग तरह के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विज्ञान को कमर्शलाइज किया, और उस कमर्शियल वेंचर से मेरे परिवार को और मुझे लाभ हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेम टेक्नोलॉजी वाज गिवन टू गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आज हमारी यूपी में 9 आईपीएम की लैब्स,
और 9 आईपीएम लैब ट्राइकोडर्मा का निर्माण करके किसानों को उपलब्ध कराती हैं। हमने इनको भी 1 करोड़ रुपए में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, लेकिन उस समय कहा था कि आपको एक टेक्नोलॉजी लीजिए, 2 टेक्नोलॉजी मुफ्त में देगी, बाई 1 गेट 2 फ्री। तो इनको 2 और मुफ्त में क्या दिया था, एक दिया था बवेरिया वैसियाना और दूसरा दिया था एनपीबी। तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार इन 3 बायोपेस्टिसाइड का निर्माण 9 आईपीएम प्रयोगशाला में करके उत्तर प्रदेश को किसानों को दे रही है। जो हमने 3 टेक्नोलॉजी बना करके उनको दिया और इसका लाइसेंस सीआईबीआरसी से करा के दिया, ये भारतवर्ष में पहली बार इतिहास में यूपी गवर्नमेंट बिकेम फर्स्ट गवर्नमेंट इन द कंट्री जिसके पास बायोपेस्टिसाइड बनाने का लाइसेंस था। इसके बाद देश की और जो कृषि विभाग की प्रयोगशालाएं उन्होंने भी इसको फॉलो किया और उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट के लाइसेंस लिए। उनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये स्टेट्स हैं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और वहां की सरकारें भी लाइसेंस लेके इसको बना रही। अब आज की डेट में दुनिया भर के कृषि विश्वविद्यालय भी लाइसेंस लेके बना रहे हैं। आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, जिन्होंने टेक्नोलॉजी माइक्रोबियल डेवलप करके लगभग 600 कंपनियों को लाइसेंस किया है, डॉक्टर एमएस राव ने। तो वो भी आप लोग उनकी प्रोफाइल खोल के पढ़िएगा कि एमएस राव साहब ने आईआईएचआर से टेक्नोलॉजी डेवलप करके 600 से अधिक कंपनियों को टेक ट्रांसफर किया है। लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी कास्ट क्या थी, बिगिनिंग में 1 लाख रुपए लेते थे, अभी 2 लाख हो गई है प्लस जीएसटी, तो मुझे लगता है 2,35,000। तो ये डिफरेंस है आईपी प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी को किसी अच्छी कंपनी को बेच करके आप अच्छा पैसा लीजिए, या आप ऐसी देते जाइए, हजारों कंपनी को दे दीजिए, 1 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, कुछ न लीजिए। कई बार मेरा इस पे डिस्कशन हायर लेवल पर डीजी आईसीआर से, 2 डीजी से मेरे डिस्कशन हुए हैं कि भाई आप लोग ये 1 लाख रुपए किस किस प्रावधान के तहत इतनी कम फीस रखते हो। भाई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में अगर मुझे 8 साल का टाइम लगा, हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, तमाम सारे पीएचडी स्टूडेंट निकले, दुनिया भर के रिसर्च पेपर निकाला, तो कुछ न कुछ तो मोडस ऑपरेंडी बनानी पड़ेगी ना कास्ट फिक्स करने के लिए। इसलिए जरूरी है मित्रों कि आप टेक्नोलॉजी कास्ट को थोड़ा हायर रखिएंगे तो अच्छी कंपनियां आएंगी, आपको पैसा देंगी। और ये बवेरिया वैसियाना जो नेक्स्ट, चलिए बवेरिया वैसियाना की एक स्लाइड यूपी गवर्नमेंट वाली दिखा दी है। ये बवेरिया वैसियाना भी हमारी टेक्नोलॉजी पर प्रदेश सरकार बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक अकेला फंजीसाइड है, बायो फंजीसाइड वास के नाम से, सिर्फ बैसिलस सबटिलिस बेस का हिंदुस्तान में सिर्फ हमारा प्रोडक्ट, ओनली 1 कंपनी, एक ही कंपनी बनाती है, बालाजी क्राफ्ट केयर प्राइवेट लिमिटेड, और इस प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया बेचती है। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सबसे, आईसीआर के साइंटिस्ट से, आईसीआर में जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनसे, कि आप लोग मल्टीपल टेक्नोलॉजी डेवलप करिए, इंडिजिनस स्ट्रेन आइसोलेट करिए, उनमें नॉवेल्टी खोजिए, प्रोसेस पेटेंट करिए, प्रोडक्ट पेटेंट करिए और उनको अलग अलग कंपनियों को दीजिए। तमाम सारे लोग तैयार बैठे हैं आपकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब वाइंड अप करते हैं। ये सीएसआर न्यूज में उस समय जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था तो आया था। नेक्स्ट वन, गो टू द नेक्स्ट। कुछ किताबें दी हुई, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन, ये सारी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्ञान होगा कि आईपी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ये किताब जरूर खरीदें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अनलीजिंग द नॉलेज इकोनॉमी। ये प्रबुद्ध गांगुली साहब की बुक है, टाटा मिग्रो हिल कंपनी की है, वंडरफुल बुक। इसको पढ़ जाओगे तो आपको आईपी का महारत हासिल कर लोगे, आप आईपी पर लेक्चर दे सकोगे, आईपी कर पाओगे, और एक बार आईपी करोगे तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर पाओगे। नेक्स्ट वन प्लीज। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के गुण हम वैज्ञानिकों में नहीं है, जैसे हम आईएम के पढ़े नहीं हैं, इसीलिए आईसीआर में 1 लाख की 50,000 की टेक्नोलॉजी बेची जाती है। और अभी उन्होंने एक कंपनी को हायर किया है, वो नास कॉम्प्लेक्स में बैठती है,
एग्रो इनोवेट करके। आईसीआर में इतने मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर करके बिठाया गया है, सिर्फ इसलिए कि वहां आईएम ग्रेजुएट्स बैठे हैं एंड दे नो हाउ टू सेल टेक्नोलॉजी। मैं समझता हूं कि आईएम से आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं है। 3 किताबें यहाँ लिस्ट की हमने, उसमें एक पहली प्रबुद्ध गांगुली की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन बायोटेक्नोलॉजी। वंडरफुल बुक है, इसको लाइब्रेरी में खरीदिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को और कोर्स कोऑर्डिनेटर को कि लाइब्रेरी में इस किताब को ऑर्डर करके मंगा लीजिए, और जो भी लोग इसको पढ़ेंगे उनको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में बात कैसे की जाए उद्यमी से, कितनी फीस रखी जाए, और इस तरह से आप इसको पढ़ने के बाद ये समझ लो कि आप आईएम ग्रेजुएट हो जाओ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक कलाम साहब से मैं बहुत ही प्रभावित रहा हूं। मैंने जीवन में काफी कुछ, इनकी जितनी किताबें मैंने सब पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं, बहुत सारी किताबों को मैंने इनकी गिफ्ट किया। मैं बल्क में खरीदता हूँ, और किसी का बर्थडे पड़ता है, मैरिज एनिवर्सरी पड़ती है, तो मैं कलाम की बुक गिफ्ट करता हूँ। इनकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है, अगर आप बल्क में खरीदेंगे तो 150 से 200 रुपए की है। और खास तौर से जैसे मैंने बात किया आपको कि तमिलनाडु से रहते हुए ये जब उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे तो उनके कुछ कोट्स लिखे हैं, आप इसको गौर से पढ़ना। ये पीपीटी में रिक्वेस्ट करता हूँ ऑर्गेनाइजर को कि जो इन लोग बैठ के हमें सुन रहे हैं, अगर वो मांग रहे हैं तो उनको दे दीजिए, और इसमें आप पढ़िए ऑन वे फ्रॉम दिल्ली टू जौनपुर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन द डस्टी टाउन ऑफ बादशाहपुर। ये अपने वृतांत किया है उन्होंने, और ये वृतांत इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूँ कितने आवश्यक है कि प्रोफेसर एस के सिन्हा जो एक्स डायरेक्टर आईआरआई थे, वो एडवाइजर थे टाइफैक के। टाइफैक एक एजेंसी है जो प्रोजेक्ट देती है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन असेसमेंट फोरकास्टिंग काउंसिल, वो डीएसटी का पार्ट है। डॉक्टर सिन्हा उस समय एडवाइजर थे और डॉक्टर कलाम डायरेक्टर थे। और सिन्हा के संपर्क में आने के बाद कृषि में इनकी रुचि काफी बढ़ी, और डॉक्टर सिन्हा के साथ ही वो जौनपुर की यात्रा कर रहे थे, और उन्होंने जो देखा उसका जिक्र किया है। इवन इन दिस नॉन डिस्क्रिप्ट सेटलमेंट पीपल रिसीव मनी वाया मोबाइल ट्रांसफर फ्रॉम फैमिली मेंबर्स वर्किंग इन डिस्टेंट सिटीज। Their computer training centers offering diploma courses in भोजपुरी, हिंदी एंड इंग्लिश। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताने का था कि एक तमिलियन वो जाकर के भोजपुरी थोड़ा सा सीख करके लोगों से इंटरेक्ट किया, और वो ये अपने अनुभव को यहाँ लिखा है। और ये कलाम की आखिरी पुस्तक थी जिसका जिक्र उन्होंने आईएम में जब शिलांग में लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने जिक्र किया था कि मेरी पुस्तक आने वाली है, द एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी। मित्रों, ये किताब छपने के पहले ही कलाम की मृत्यु हो गई, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी वहां। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी श्रद्धांजलि किसी के लिए नहीं हो सकती। यदि आप इस पुस्तक को खरीद करके, जैसे मैंने बोला, बर्थडे में या मैरिज एनिवर्सरी में या किसी बड़े फंक्शन में गिफ्ट करने का सोचिए। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बल्क में खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अमेजॉन पर उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी श्रद्धांजलि कलाम के लिए नहीं हो सकती, देश के लिए नहीं हो सकती, और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा ऐसा काम करोगे तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं जब यूएस में 2 यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर था 2011 के दौरान, तो मेरी मुलाकात आनंद मोहन चक्रवर्ती से हुई। आनंद मोहन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जो दुनिया में पेटेंट के लिए जाने जाते हैं। विश्व का पहला माइक्रोब आनंद मोहन चक्रवर्ती ने किया था 1980 में, और वो काम उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में लड़ाई लड़ने के बाद मिला था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में मुकदमा लड़ा कई साल, तब उनको जीत मिली, और उन्होंने कहा कि ये जो माइक्रोब हम खोजे हैं इसमें हमारा इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन है, ये नेचर में नहीं मिलता, इसलिए लाइव एंटिटी को पेटेंट नहीं दिए जाते थे पहले। 1980 में पहला माइक्रोबियल पेटेंट आनंद मोहन चक्रवर्ती को दिया गया था। वो चक्रवर्ती की जो हियरिंग हुई थी
बड़े लंबे समय तक अगर हियरिंग का नाम पूछें तो मैं समझता हूँ कि कोई बंधु नहीं बता पाएंगे उस केस का नाम क्या था। डायमंड वर्सेस चक्रवर्ती केस डाल करके आप लोग गूगल करना तो आपको पता चलेगा कितनी लंबी लड़ाई आनंद मोहन चक्रवर्ती ने लड़ी थी। और वो जनाब इलिनॉय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ही वॉज प्रोफेसर इलिनॉय यूनिवर्सिटी और अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई। ये 2 किताब हमने संपादित किया है। पहली किताब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी जो कैवी इंटरनेशनल यूके से छपी है, और दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन माइक्रोबायोलॉजी जो स्प्रिंगर स्विट्जरलैंड से है। तो ये आप किताब लाइब्रेरी में ले सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, ये मैं आपको सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क भेज दूंगा, आप इसको ले सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड, 2-3 स्लाइडें बची हैं, मैं दिखा के अपनी बात खत्म करूंगा। कि कृषि की बात है, कृषि पे बात करने के लिए मुझे कहा गया था। मैंने जानबूझ के कृषि को छोड़ रखा था, इसलिए कि कृषि के लोग इतने उदार हैं, हमारा पूरा सिस्टम इतना उदार है। कृषि विश्वविद्यालय उदार है, आईसीआर सिस्टम उदार है, पूरे पूरे आईसीआर के सारे इंस्टीट्यूट इतने उदार हैं कि इनकी इच्छा होती है कि निःशुल्क सारी टेक्नोलॉजी या मिनिमल कॉस्ट पर उस टेक्नोलॉजी को किसानों को दी जाए। बिल्कुल सही सोच है मित्रों। किसानों को मैं चाहूंगा निःशुल्क टेक्नोलॉजी दें, लेकिन उद्यमी को पैसा लें। ये एक बज लाइन है, इसको आप मन में बिठा लो। कैरियर अपॉर्चुनिटीज की जो चॉइसेस हैं एग्रीकल्चर में इतनी हैं जो आप सोच नहीं सकते। इस पे एक अलग लेक्चर अगर कभी देना होगा, मैं डायरेक्टर को अनुरोध करता हूं, यदि आप कभी मुझे बताओगे तो मैं ऑफलाइन मोड में आ जाऊंगा। आप अपने बच्चों को इकट्ठा करिए, मैं कम से कम 200 कैरियर ऑप्शन बताऊंगा कि कृषि में हैं जो बच्चे कर सकते हैं। आज के बच्चे क्या है, विश्वविद्यालयों में उन्हें पढ़ाया जाता है कि पीएचडी करो, जेआरएफ मारो, एसआरएफ मारो, नेट मारो, एसआरबी मारो, कि साइंटिस्ट बनो, लेक्चरर बनो। बियॉन्ड दैट कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है। मैंने सोचा कि अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो बच्चे उसी में संघर्ष करेंगे और करते करते जीवन समाप्त कर लेंगे। कितनी कम पोस्टें निकलती हैं साइंटिस्ट और टीचर की। इसलिए कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं। थोड़ी से ऑप्शन पे देखिए आप कि फूड सेक्टर में जबरदस्त डिमांड। फूड साइंस एंड इंजीनियरिंग में बताने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की, नेस्ले, जो दुनिया में छाई हुई। कोई प्रोडक्ट ले लीजिए खाने पीने का, नेस्ले के पास है। स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है, उनके पास टेक्नोलॉजी डॉकेट है, टेक्नोलॉजी बेचते हैं और टेक्नोलॉजी बेच करके अरबों करोड़ों कमाते हैं। अपने देश में मैगी कौन नहीं खाता? मैगी तो छोड़ दो आप, नेम एनी प्रोडक्ट रेडी टू ईट फूड, ये सारे इनके पास हैं। और ये इस तरह के इनोवेशन सिर्फ एंड सिर्फ इनके पास है। क्यों नहीं इंडियन इंडस्ट्रीज के पास ऐसे इनोवेशन हो सकते हैं? तो हमारे स्टूडेंट को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिए एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट में रिसर्च फार्मिंग है, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये सारे मैंने लिख रखे हैं। आप इन बच्चों को दे दीजिएगा, इसको पढ़ें। और इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आगे बढ़िए, आगे बढ़ा के दिखाते जाइए आप इसको सिर्फ। और इनको कहिए कि बच्चे इस दिशा में सोचना शुरू करें, स्टार्टअप इन एग्री बिजनेस। ठीक है ना? ये कैरियर है आपके, एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हैं, फला बन, ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, सॉइल साइंटिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और स्टार्ट इन एग्री बिजनेस एंड कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करना चाहिए। आप बताइए कि एग्रीकल्चर में सिर्फ यही 3-4 ऑप्शन नहीं, 300-400 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस हैं। और आप देखिए आज के 10 साल पहले कोई खाना स्विगी से मंगाता था? आज के 10 साल पहले कोई ऐसे ब्रांड थे जो आप एक छत के नीचे घुसिए, दुनिया की हर चीज उपलब्ध है। किसान पैदा करता है और शहर में आता है बेचता, बड़ा उद्यमी बेचता है उसको। और कंक्लूजन में आप देखो दोस्तों कि आईपीआर इन एग्रीकल्चर ओपन्स diverse array of agriculture career opportunities that are both rewarding and impactful. Whether one's interest lies in research, agricultural sector offers roles that cater
to various skill set and passion. ये मतलब छोटा सा एक आपको खाली इग्नाइट करने के लिए लिख दिया है कि सोचो दोस्तों कि स्काई इज द लिमिट इन एग्रीकल्चर एंड नो कल्चर इज पॉसिबल विदाउट एग्रीकल्चर। अगर आपको इस पृथ्वी पर जिंदा रहना है तो खाना खाना ही पड़ेगा दोस्तों, चाहे और जितनी साइंस कर लो। इसलिए हमें अपने किसान भाइयों को, अपने वैज्ञानिकों को रिस्पेक्ट देनी होगी। और मैं सल्यूट करता हूं आईसीआर सिस्टम को, आईसीआर के वैज्ञानिकों को, कि उन्होंने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अन्न पैदा करके आज सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं बनाया है, हम सरप्लस कंट्री हुए हैं। और आप देखिए कि हम दूध उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, मांस उत्पादन में, अनाज के उत्पादन में, ठीक है तिलहन दलहन में हम थोड़ा पीछे हैं, हमें चीजें मंगानी पड़ रही हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने वैज्ञानिकों पर कि आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक तिलहन और दलहन में भी हमें आत्मनिर्भर कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब आप अपने प्रश्न हमसे पूछें और मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने की। मैं जो सेशन देख रहा था, मैं ऑर्गेनाइजर को ही कह रहा था कि पार्टिसिपेंट जो है क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ऐसा नहीं कि वो सारा कुछ समझ रहे हैं। पहली बार हमने भी जब पेटेंट 1996 में पढ़ना शुरू किया था तो शून्य थे, लेकिन आज हम पेटेंट के बारे में इतना जान गए हैं, पढ़ते पढ़ते करते करते, कि अब हम पेटेंट अटॉर्नीज को भी, एग्रीकल्चर में बड़े कम जो है अटॉर्नीज काम करते हैं। इस वजह से यदि आप थोड़ा पेटेंट पे पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से आपके पेटेंट अटॉर्नीज भी आपको अप्रोच करेंगे और आपको पैसे भी देंगे। सर थैंक अब यू मैं सर, रिक्वेस्ट थैंक यू सर, को आप थैंक यू अपने सर, सवाल तैयार रखिए, दागने के लिए मशीन गन तैयार रखिए, थैंक बम्बार्ड यू, क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल लेक्चर। आपने पूरे आईपीआर रिजीम को बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए आपने एक्सप्लेन किया। ना केवल एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को, बल्कि पूरे एग्रीकल्चर में जो जो जहाँ जहाँ पर आपके आईपीआर का इस्तेमाल हो सकता है। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने किया कि जो अ, आपके जो दिन प्रतिदिन की चीजें हैं उसमें किस तरह से आईपीआर इन्वॉल्व है, एंड हाउ दोज थिंग्स हैज बीन यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ, एंड यू हैव गिवन वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर दैट पर्पज. So we are really thankful to you, sir, for giving your valuable time and guiding us for that purpose. May I request to the audience, anyone who have any query, they can raise your hands and you can ask the question from Professor HV Singh, sir. इस सबको जो मन में आए पूछिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ। आपके सवाल से हो सकता है कुछ मैं इनोवेशन निकाल लूं। कोई सवाल आप लोगों के दिमाग में, जो लोग भी हैं यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी कोई पूछना चाहें? हाँ देखें रेज है। अब देखो चक्कर क्या है डॉक्टर साहब, कि जी ऐसे सर। प्रोग्राम करने के क्या फायदे जब लोग इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। आपने तो इतनी मेहनत किया, महीनों से तैयारी किया, और हम लोग तैयार होकर के लेक्चर देने के लिए आए, कोशिश की कि सरलतम भाषा में उनको समझाने का प्रयास करें, और इसके बाद भी ये लोग सवाल नहीं पूछ रहे। डॉक्टर आरबी कुमार साहब पूछना चाह रहे हैं कुछ, पूछिए, माइक दीजिए, माइक दे दीजिए, माइक कहाँ पर है? सवाल तो पूछना ही पूछा, हर हाँ कोई एक पूछिए सवाल सर, कही कि पूछिए। पूछो, तुम नहीं पूछो। हाँ, नहीं आ रही है। हाँ जी बोलिए। हम्म। डरो मत भाई, सवाल पूछो, एकदम पूछो। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा हम लोगों के बीच अपनी बात रखी। मैं भी एक यहाँ प्रधान वैज्ञानिक हूँ, जिसको आप कह रहे थे कि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद केवल डायरेक्टर बनना है या वीसी, तो हम उस लाइन में तो नहीं है, लेकिन आपने तो सही ऐसा बात है कही थी। तो सर कि एक मेरा ये मैंने क्वेश्चन है, जो हम लोग एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, हाँ हाँ सर, उसमें जैसे हम लोग को एक एप्रीहेंशन रहता है कि हम शायद जो चीज के लिए पेटेंट अप्लाई करें
या कोई मतलब, तो वो पता नहीं उसका होगा तो हम लोग का एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। हमें लगता है शायद ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो प्रोडक्ट है, इसको कोई लेगा नहीं या इसका पेटेंट होगा नहीं, इसी दुविधा में हम लोग रह जाते हैं। आवाज नहीं आ रही। हेलो। यार मैं 3-4 करोड़ रुपए अपने ट्राइकोडर्मा को बेच करके ले लिया और 40% रॉयल्टी ले लिया। ऐसा मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। देखिए, जी। उत्तर प्रदेश में एक संस्था है, पेटेंट सेल है, और वो कोई भी वैज्ञानिक जो प्रदेश में काम करता है अपने कीवर्ड को भेज दे तो आपको पेटेंट सर्च करके आपको भेज दिया जाएगा। वहां पे डॉक्टर पूजा यादव जी, उनका आप नाम नोट कर लीजिए, उनका मोबाइल नंबर कहेंगे तो मैं दे दूंगा, ईमेल दे दूंगा, ठीक है ना। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है जी। कि आप अपने इनोवेशन को चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा इनोवेशन नया है कि नहीं है, ये करने के लिए पहले पेटेंट सर्च करिए। जी। सर्च करने के लिए सर्च इंजिन आते हैं। जब हम लोगों ने पेटेंट फाइल करना शुरू किया तो सर्च इंजिन नहीं आते थे। 15-15 दिन, 20-20 दिन के लिए दिल्ली जाते थे निस्केयर में, रात दिन बैठ करके एक एक चीज को खोजते थे। आज इतनी सुविधा हो गई है कि एक क्लिक से आपको सारे सर्च मिल जाएंगे। सीडी में करके मंगा लीजिए, फिर आप उसको नैरो डाउन करके देखिए कि आपने जो सोचा है कि आपका ये सोच नया है कि नहीं है, ये आपको वहां से पता चल जाए। फिर अभी नए नए, जैसे मैंने कहा कि पहली बार हर काम करने में डर लगता है। शादी जब तुम्हारे पिताजी माने होंगे डॉक्टर साहब, तो डर लगता हो। आज के आधे बच्चे शादी करने से डरते हैं, हाँ, शादी लेकिन के एक बाद बार बाद शादी डर लगता है, तो उसके बाद भी डर लगता है। तो क्या होता है ना कि पहली बार डर लगता है, लेकिन एक बार जब डर निकल जाता है तो आप मास्टर हो जाते हो। इसलिए मैंने वॉलेंटियर किया कि जो बच्चे हमारे, आई विल गिव यू फ्री एडवाइस, आई विल गिव यू फ्री सर्च, आई विल हेल्प यू इन राइटिंग पेटेंट, और मैं आपको अटॉर्नी भी दे दूंगा जो मिनिमल पे में आपका फाइल करा देगा, ठीक है थैंक यू ना। सर, थैंक यू। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे पता है कि वो साइंटिस्ट कर सकता है सिस्टम से, लेकिन स्टूडेंट को दिक्कत आ गई। तो आप ये थैंक डरिए यू मत। सर। और टेक्नोलॉजी, बोला डॉक्टर सर साहब कि आई अगर थिंक टेक्नोलॉजी में, सर देयर इज तो अनदर क्वेश्चन आई डेफिनेटली थिंक फ्रॉम डॉक्टर सुरेंद्र। हाँ जी, पूछिए। डॉक्टर सुरेंद्र, आर यू देयर? यस सर, नमस्कार सर। हाँ। हाँ, आ, सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले साइंटिस्ट हैं इंडिया से जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेटेंट करवाया सर। सर, मैं भी माइक्रोबायोलॉजी में काम करता हूं और हिमालयन क्षेत्र में मैंने माइक्रोब को आइसोलेट्स किया हुआ है सर, जिनकी काफ़ी अच्छी यूनिक प्रॉपर्टीज आई हैं सर। तो सर, मैं आपसे इस क्वेश्चन को दो भागों में बांटूंगा। पहला कि उसको मैं पेटेंट कैसे करवाऊं सर, एक बार और मेरे को आप बताने की कृपा करें। और दूसरा कि सर, पेटेंट से पहले कुछ पार्ट क्या मैं पेपर के रूप में भी पब्लिश कर सकता हूं, क्योंकि सर पब्लिकेशन भी जरूरी है। तो ये चीज किस तरह से मैं कर सकता हूं सर, कृपया गाइड करें सर। आप मुझे अपनी मेल पर, एक मेरे मेल पे रिक्वेस्ट कर दो कि मुझे एक किताब वो भेज दीजिए। तो जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन माइक्रोबायोलॉजी में जी। एक डेडिकेटेड चैप्टर है जो माइक्रोब को कैसे पेटेंट करते हैं, सारी विधाएं लिखी हुई हैं, ठीक है ना। जी सर। उसके बता सकते हैं आपको ऐसे। अभी देखिए कि आपको लाइफलाइज कल्चर रखना होगा, ठीक है ना। जी। उसको बुडापेस्ट ट्रीटी रिकग्नाइज्ड रिपोजिटरी में जमा करना होगा। जी। के लिए आपको खुशी की बात होगी कि आईसीआर की एक प्रयोगशाला एनबीएम मऊ है जो बुडापेस्ट ट्रीटी से रिकग्नाइज है, और वहां पे अपने कल्चर को जमा करके आप पेटेंट नंबर में उसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। जी ये सर। काफी लंबे प्रोसीजर है। आपको किताब में आपको भेज दूंगा ईमेल पर, पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये पेटेंट को फाइल करने में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास नावेल माइक्रोब है फ्रॉम ए नावेल इकोलॉजिकल निच, तो आप उसका फार्मुलेशन बना लीजिए। और सरल रास्ता बता रहा हूँ, यू डेवलप ए फार्मुलेशन यूजिंग दैट नावेल माइक्रोब, जी। देन फार्मुलेशंस आर इजीली पेटेंटेड इन इंडिया। आपको 1 साल के अंदर पेटेंट अवार्ड हो जाएगा, और उस पेटेंट को लेकर के आप अपना सीवी भी स्ट्रांग बना लीजिए, और अपने इंस्टीट्यूट से उस टेक्नोलॉजी को, जैसे ग्रास लैंड और फॉडर में आप हैं जी। अगर,
तो ग्रासेस के लिए कोई बायो कंट्रोल एजेंट बनाया नहीं गया। नो लेबल क्लेम फ्रॉम ऑल ओवर। अब अमेरिका एक ऐसी जगह है जिन्होंने ट्राइकोडर्मा को ग्रास के लिए पेटेंट किया है। वो टर्फ ग्रास होती है, उस पर एक राजोक्टिनिया डिजीज आती है जी जो मेजर, और वो चाहते हैं कि पेस्टिसाइड नहीं यूज करें। तो डॉक्टर गैरी हार्मन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल ने डेवलप किया एक टेक्नोलॉजी, उसको पेटेंट कराया है। वो गैरी हार्मन का आप चेक कर लेना कि वो टर्फ ग्रास का है। ऐसी जितनी ग्रासेज में बीमारियां आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो बायोपेस्टिसाइड हिंदुस्तान में अवेलेबल है, एक के पास भी लेवल क्लेम नहीं है। तो यू विल बी Right. यूनिक Thank you. साइंटिस्ट। आप लेवल क्लेम एक्सपेंड कराओ ना, जी नावल माइक्रो, उसके नावल फॉर्मुलेशन डेवलप करो, यानी नावल प्रोसेस डेवलप करो, यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ पेटेंट्स। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर दूसरा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर मल्टी फंक्शनल है, जैसे न्यूट्रिएंट को भी सॉल्युबलाइज करता है, ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। और सर अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा लगाया हुआ है जिसमें इसकी एक्टिविटी काफी अच्छी आ रही है सर। बट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2003 में एक मेरा पेटेंट है, मल्टी फंक्शनल ट्राइकोडर्मा स्ट्रेन हैविंग प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर बायो कंट्रोलर निमेटिसाइडल प्रॉपर्टी। उसको डाउनलोड कर लीजिए वो पेटेंट नंबर से, जी और देन यू दैट पेटेंट यू विल गेट द आइडिया हाउ टू पेटेंट मल्टी फंक्शनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको वहां से मिल जाएगा। जी Thank you, sir. Thank थैंक यू you, sir. सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको मेल करूंगा सर। Sir, और anyone else like to raise any question to Professor Singh, sir? मैं I will ऑर्गेनाइज share. I will share the email of sir, and anyone who like to interact with him. आपकी मेल में बुक भेज देता हूँ अभी तुरंत, ठीक है ना? जी जी यू सर। जी कैन से पार्टिसिपेंट्स। जी थैंक यू सर। मैं ऑर्गेनाइजर की मेल में अभी जहाँ पे मैं जिनको भेजा था पीपीटी ना, उसी पे भेज देता हूँ। लेट इट बी शेयर्ड विद ऑल दी Right, पार्टिसिपेंट्स। sir. Right, sir. I will share. I will share the PPTs and the that email सर ID of sir. कई साहब ने कई भी सॉफ्ट कॉपी नहीं देता, स्प्रिंगर देता, तो स्प्रिंगर वाली कॉपी हम शेयर करते, आप सबको दे दीजिए। Thank you, sir. Thank you, sir. And थैंक यू thank सर। you, sir. I think there is no question from here from the hall. Although सुन, I अगले डायरेक्टर में कुछ लोग यहाँ से होने चाहिए। I, I will share your email ID, sir. And anyone who will require to further interact and they will write you. I request you please entertain those. Respond to them. So thank you, sir. And we are really fortunate to have your lecture today, and we witnessed and we came to know about the various aspects of the IPR, not only relevant to agriculture but other area of our daily life. So thank you, sir, and I hope that you will continue to your extend your support and blessing for future programs. Just Thank, be thank, out from. I think you will allow me to leave the meeting now. thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Here I. Namaskar, sir. Thank you, sir. Namaskar. Thank you, sir. And now we are moving to the next and the presentation. Sir, first of all, I regret and tender my apology that we changed your lecture, and now you are going to be. But definitely, that your topic is very, very relevant and very important. That the how the PBFRA Act 2001 is helping to the breeders and farmers. Okay, so that is uh, directly important to all of us who are dealing with the agriculture and the protection of the farmer rights, breeder rights. So for delivering this lecture, we have here today Dr. R.A. Sharma sir. Dr. R.A. Sharma sir is a known plant breeder. He has been a very excellent teacher at RU Bikaner. Sorry, RU Bikaner, sir? I'm right. RU Bikaner. He did his MSc in genetics from IRI, PhD also from IRI, and he joined RU Bikaner in 1989. And he did his postdoctorate from NIPV, IRI New Delhi. And later he joined as a principal scientist to Kajari. And he superannuated from the ICR in 2024.
and he joined later PVFRA as a technical consultant. He is continuing with the PVFRA and providing his that expertise, guiding to the breeders and farmers to take the advantage of the law, that PVFRA Act 2001, how they can protect their interest. So that sir has published more than 150 papers, guided students of MSc, PhD, and he had developed varieties in different fodder crop, more than 6, 7 varieties in the different fodder crop. So we have requested to the that Registrar General of PVFRA, and he have been very kind to depute Dr. R.A. Sarma sir for the participation and delivering of the lecture in this workshop. So now may I request to Dr. R.A. Sarma sir for his lecture, please. Dr. R.A. Sarma sir. बंद करो इसको. बड़ी बात है, छोटी सी चीज जिसको अपन नॉर्मली घर में ही मान लेते हैं, ऐसा तो होता ही है. छोटे छोटे इनोवेशन अपन करते हैं, उनका सबसे पहले हमने देखा हमारी सोसाइटी में या हमारे सिस्टम में हमारी सोसाइटी और सिस्टम में पेटेंट फाइलिंग का कोई सिस्टम है ही नहीं. बेसिकली हम एक कम्युनिटी हैं, एक नेशन है या एक सोसाइटी है, तो उसके अंदर इस तरह का कि मेरे पास ही सारी पावर हो, इस तरह का नहीं है. लेकिन अगर आप देखते हैं तो आयुर्वेद उसमें बहुत से ऐसे जिनको नुस्खे बोलते थे, दे यूज्ड टू बी देयर एंड दे वर नॉट शेयर. तो इस तरह के कुछ पेटेंटिंग सिस्टम कह सकते हैं या ट्रेड सीक्रेट्स कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ सोसाइटी में हमेशा रहे हैं और यूजुअली हम लोग उसी पे सर्वाइव किए हैं, थ्राइव किए हैं. एनीवे, यूएसए एंड यूरोपियन सिस्टम एक अलग तरह का सिस्टम है और वहाँ हर चीज़ पेटेंटिंग पे चलती है एंड कॉमर्शियलाइजेशन पे चलती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप देखें तो उन्हीं कंट्रीज से शुरू हुआ. हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं था. एनीवे, लेकिन अब रियलिटी यह है कि पेटेंट सिस्टम भी है, प्रोटेक्शन सिस्टम इन प्लांट्स भी है और नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी है, एनबीपीजीआर भी है. हर तरह का सिस्टम है और उस रियलिटी को हम नकार नहीं सकते. तो हमें वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. बड़ा मज़ेदार है अगर ये सिस्टम इतना इजी हो तो everybody has ideas. Some discussion was there. Can we patent the ideas? Yes, you can patent that, but then you have to convert it into something, product or something, within a stipulated time. Do you have the resources? Some examples are given from India. Majumdar Shah, madam, she created a big company. कितने करोड़ लोग हैं? कितने करोड़ जनता है और यंग स्टेज से ऊपर कितने हैं? एक एग्जांपल. ये एग्जांपल क्या एक रूटीन बन सकता है?
कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी अब सिस्टम इन प्लेस है और जहां तक हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आप लोग इसको एक्सप्लोइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि समटाइम्स यू पुल अप योर रिसोर्सेज। किसी को पेटेंट आता होगा, किसी को साइंस आती होगी, किसी के पास पैसा होगा। इफ यू डू लाइक दैट, probably success is there. Otherwise, individually, बड़ा मुश्किल हो जाता है to handle. Even to read patents beyond your own subject becomes a limitation. तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप अगर प्रोसेस करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें आपको मिलेंगी। PPVFRA, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights. This is a statutory body created by Government of India by Gazette notification. कैसे करेगा? अच्छा, हाँ, फाइन फाइन फाइन। आपको जेनेसिस और प्लांट प्रोटेक्शन कुछ आइडिया तो होगा ही। वी आर सिग्नेटरी टू WTO और WTO के अंडर ट्रिप्स का जो सिस्टम था, in that system we had to create some mechanism to protect our plant genetic resources, and we adopted to have an effective sui generis system, that is a novel system or our own system to protect our plant genetic material. There are so many countries who are signatory to UPO or they are members of the UPO, but UPO has given more stringent requirements and more rights are given to plant breeders. That was not acceptable by India because we wanted to give benefits to the farmers, the common people. So these are the UPO members in the world. It's very difficult to see and India is balancing several systems to ultimately have food security. So there are international treaties, WTO and ITPGRFA. This is particularly with respect to farmers' rights. It recognizes farmers' rights, whereas WTO is mainly emphasizing on plant breeders' rights. We have our existing seed system, which is formal and informal both, and this leads to some vibrant seed scenario. Depending on formal and informal, we have very less formal system. The seed company, we have more of the informal system of seed distribution and marketing. So we had options to adopt patent, an effective sui generis system, or any combination thereof. So our system is basically sui generis system, and we have given various rights to the farmers. And then internationally it was recognized, and several organizations have adopted the same system. So PPVFRA, मुझे लग रहा है टीचिंग ज़्यादा ना हो जाए. We will move to other things. But anyway, sovereign rights, this comes from CBD, Convention on Biological Diversity. They give sovereign rights to the genetic material or genetic resources that are present in a country.
Otherwise, it was a common heritage and accessible to all. However, later on, it was recognized that no, there should be fair and equitable sharing of benefits. Therefore, the farmers' rights were also recognized, and a combination of both comes in the formation of PPVFRA Act. So this rule was enacted in Act was enacted in 2001. Rules were framed in 2003. Then establishment of authority in 2005. Here we have a procedure to notify the varieties for which we are going to give registration. And first list of crops was only 12 crops were included. Now we have 206. I will show you slides next. So registration of crops started in 2007. So this is a particular system of working. Under the PPVFRA, I will not go in detail. We have breeders' rights, gene fund and recognition awards to the farmers and communities. This is to boost their economic well-being and to contribute more towards preservation of and conservation of genetic material. Compulsory licensing is when a breeder or company is not producing a variety which is required in the market in a large quantity or whatsoever, then authority can give some another company the responsibility to produce that seed, and this is compulsory licensing. It is to benefit the farmers. Benefit sharing, suppose some material comes from मेरे ख्याल से सारे काफी लोग बाग हमारे में से एग्रीकल्चर कम्युनिटी से है। तो कुछ मटेरियल आपके फार्म पे ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा। जैसे बहुत सा राइस हमारे यहाँ पे हर लोकेशन का थोड़ा डिफरेंट है, उसके फ्लेवर डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, यील्ड डिफरेंट है, उसका ग्रोइंग जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, वो सारा आज हमारे पास प्रोटेक्टेड है। Similarly, you have the opportunity to protect your material. Immediately आपको कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता है वो एक अलग इशू है, लेकिन with time if you can give some value to your material or recognize some valuable trait in your material, then probably some breeder or company might need that, and at that time you can ask for your benefit sharing. Researchers' rights, yes, researchers cannot be stopped even after registration of the variety to have some research work on that variety or to breed another variety using that variety until unless he goes for commercialization of that variety. Only at that time the material owner, you can say, can claim the benefit. Community rights, if community feels that the breeder has or the company has used some material that belong to that particular community, panchayat, gram or whatsoever, they can claim through PPVFRA that our material has been used in this process, so please give us the benefit of that. The benefit sharing can be facilitated by PPVFRA. Then comes the farmers' rights. Farmers have the rights to save, use, sow, resow, exchange, and sell that material. Any variety registered in PPVFRA cannot restrict these rights of farmers. They can do it freely.
That's why many a times companies say that there was a contract between farmer and company that we will buy all the material, but farmer has sold it somewhere else. In that case, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने जितना सीड कहा था या जितना मटेरियल कहा था उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो गया. फार्मर क्या करेगा? He will sell it in the market. And in market, if somebody knows this variety, वो अपना यूज करेगा. तो ऐसे केस में नॉर्मली कंपनीज स्टैंड नहीं करती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीवी आरए सिंपल है, प्रोटेक्शन देना है फार्मर वेराइटी को, फार्मर्स को एंड प्लांट ब्रीडर्स को, ये सब ठीक है, पर अल्टीमेट एम ये है कि हमें वेराइटी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करना है, एंकरेज करना है. नाउ अगर पेटेंटिंग होती है तो वेराइटी डेवलपमेंट एंकरेज कैसे हो रहा है? ये एक सबसे बड़ी बात है. भाई आप पेटेंट कर रहे हैं तो एंकरेज कैसे हो रहा है? उसके पीछे सोचना यह है कि सपोज आपने कोई वैरायटी प्रोड्यूस की, तो यू हैव गिवन सम टाइम एनर्जी. अगर आपको उसका पैसा मिलता है तो अगेन a message to the society is that through variety I can earn money. Then so many people could be there to research, produce variety and give it to the society. अगर आपको मोटिवेशन नहीं है तो नहीं होगा. एक बहुत अच्छा चुटकुला ही है वैसे तो. एक टैक्सी वाले ने होटल में किसी फॉरेनर को या किसी को छोड़ा तो उसने उसको पैसा दिया. ये सभी ने सुन रखा होगा. सपोज उसने 100 रुपया दिया तो जो था वो होटल वाला, उसने कहा मेरा 100 रुपया दे दो, तो कल लेके आता. मैं उसको दे दिया. जैसे ही होटल वाले के पास 100 रुपया आया, उसने फ्यूल मंगाया था, फ्यूल वाले के पास चला गया. और अल्टीमेट सोसाइटी इस सर्कुलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. हम लोग एक रिलेशनशिप में चल रहे थे. बट यू नो दिस मोटिवेशन, पैसा अल्टीमेटली घूम गया है, उसका आउटपुट बहुत सारा हो भी गया. वो आउटपुट हम पहले एक दूसरे को शेयर कर लेते थे. नाउ इट इज थ्रू मनी एंड दिस गिव यू इम्पीटस. एक आपको जॉय भी देता है, आपको उसमें इन्वॉल्व करता है. तो ये ब्रीडिंग हो रही है, वेराइटीज चल रही हैं, वेराइटीज का एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन जो मनी ट्रांसफर है दैट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग. ये मोटिवेशन हो जाता है. दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. सो बेसिक जो है वो यही है कि हाउ टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सीड इंडस्ट्री और इवन प्राइवेट पब्लिक institution. So basically, these three rights are very important with the marketing and business. We give dual IPR. एक्चुअली किसी भी वेराइटी का डिनोमिनेशन मस्ट है. कोई भी आप नाम देंगे उसको, वो वर्ड्स का हो सकता है या फिगर्स का हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है. नाउ दैट name or the denomination cannot be used by another person at least within that species. Nobody can use that denomination. Number one. Number two, nobody can sell this variety with another denomination. समझ गए? तो ये ड्यूअल प्रोटेक्शन है और ये ड्यूअल प्रोटेक्शन कई बार बड़ा फायदेमंद भी रहता है. ब्रीडर्स राइट्स ये है कि इफ ए breeder can be any person, group of person or even an institution. अभी सारे ही जो हमारे एक्ट के सेक्शंस हैं या रूल्स रेगुलेशंस हैं वो रिवीजन में थोड़ा सा और ब्रॉड कर रहे हैं हम डेफिनेशंस वगैरह को. वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो बी ए ब्रीडर
So they have their rights, or they can transfer their rights to the agents or licensee to produce, sell, market, distribute, import and export the seed. ये उनका एक mechanism है. The breeder may authorize any person to produce, sell, market or otherwise deal with the variety registered under this act. Even कई बार registration file भी somebody else can do. Breeder or his successor can also do. Sometimes breeder is retired, especially from public domain, then this factor is important. Breeder shall enjoy provisional protection. Provisional protection means today you have filed the application for registration. But immediately we don't give registration. 10 टेस्ट होगा, 2 साल का होगा, 2 लोकेशन पे होगा, फिर उसके बाद में रिपोर्ट बनेगी. If this variety is different from all other varieties, for at least one character, only then we give registration. Till that time, what protection we give to the breeder? If that material is being used by some another person within that period, then he will be inquired after the protection is given to the variety or registration is done by PPVFR. So this is a statutory right created by and governed by PPVFR Act this to produce, sell, market, distribute, import and export. Researcher's rights, almost similar. He can use for the purpose of research any variety registered in PPVFR, private, public, farmer or anything. He can even produce the variety. Only thing is, commercial production cannot be done till he seeks the permission and gives benefit to the original owner of the variety. Then comes the farmer's right. Communities, I just told you, compulsory licensing, I have told you, exemption from fees. Farmers' varieties can be registered without any fee involved. Registration fee not needed, even renewal fee or annual fee not needed for farmers' varieties. Innocent infringement is something, suppose a farmer uses a variety that is already protected in PPVFRA to produce it without any sharing of benefit, without knowing it, then farmer cannot be sued for that purpose. Because he can say, I didn't know about it. So he is exempted from this. Essentially, derived varieties ko he is authorized to commercialize. What is essentially derived variety? It is a variety predominantly derived from an initial variety. Normally, we define it like a mutant or transgenic that is derived from a variety which is already in commercial use but lacking some character, and that correction has been made by the breeder, then this is essential variety or essentially derived variety. Rewards and recognition. In order to motivate the farmers, whosoever are involved in conservation, preservation of varieties, they are being awarded by PPVFRA Gene Fund. We have created a Gene Fund with the notification of government, and that fund is utilized to give rewards and recognition to the farmers, to the communities, to the panchayats and all these organizations. Compensation, every breeder has to provide
a note regarding the performance of a variety under certain conditions. If those conditions are fulfilled and the variety is not performing to the mark, breeder is supposed to give the compensation. So this way, farmers have been benefited in a large way. Benefit sharing, if it is a farmer's variety, is liable to get the share. Farmer has also been, defined any person who cultivates his own farm. So most of we people have our families behind who are really farmers, and you can take the benefit of this point. Then a person who is supervising the cultivation directly, even then he is a farmer. Or any conservant preserver, singly or jointly, preserves the wild species or traditional varieties. It is farmer, then he is also a farmer. So in this case, we all may come under the category of farmer and can have the benefit of farmer. And if not today, tomorrow things may change and you may get some benefit out of it. What is farmer's variety then? A farmer has been growing some crop year after year, that is a traditional crop, or he has evolved something by selection. No, we have been selecting. Our farmers have been selecting, everybody knows. समटाइम्स वो कहते होंगे कि भाई इसमें थोड़ा सा दाना अच्छा बना, या खासतौर पे तरबूज खरबूज इस तरह की जो चीजें होती है कि ये मीठा ज्यादा था या समथिंग, तो वो सीड अलग रखते थे. एंड इन दिस प्रोसेस थिंग्स इवॉल्व. वो उसका इवोल्यूशन है. दिस इज हिज वेराइटी. He can register it with PPV FRA. Any wild relatives or land races on which he is working or for which he has a common knowledge. Sometimes he says this particular variety is good for stomach health, eyes, bones, this or that. Then that is also patentable. Extant variety. What is extant variety? See, our rule came very late comparative to international fora. At that time, we had several varieties in the market, public, private, and our own farmers variety, the traditional variety. They were not registered. If we start registering today, what will happen to those? So a window was given to everybody that they can register the notified varieties as per Seed Act, Section 5, Seed Act 1966. If they are notified, they can register it under extant variety. Anything about which common knowledge is available, any farmer's variety, they can be registered. Or even if they are not and they are available, the varieties are available in public domain, they can be registered in extant varieties. Now, this window is to be squeezed or maybe abolished now, because already 20 years have passed since this act came into being. फार्मर को वही राइट्स दिए जाते हैं जो ब्रीडर के राइट्स हैं इफ ही इवॉल्व्स ए वेराइटी. तो उसके पास अपने राइट्स हैं, वो सेल कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, जो भी उसका है वो सारे राइट्स को भी मिले. फार्मर के केस में नोवेल्टी नहीं है, जबकि कोई भी वेराइटी आप नई वेराइटी अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें नोवेल्टी आता है. अदरवाइज डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी ये आपको शो करनी पड़ेगी. देन वन कैन रजिस्टर. एंड देखिए सारी ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं. राइस से लेके, राइस इज मैक्सिमम,
Then wheat खाचिया 65 ये राजस्थान से है, पाली डिस्ट्रिक्ट का. This is the salt tolerant variety. चपाती making, drought tolerance, काली तूर बीजेपी है, resistant to drought and some diseases, good quality. अभी मैं एक राजमा कोई बेचने आए थे, ट्राइबल्स थे, in some exhibition. I bought that, and it is very easy to cook compared to other rajma what we are having. So this is a patentable product. You can patent it. और आज में कल हो सकता है उसके जीन्स की वैल्यू समझ में आ जाए. A farmer can save, use, sow, resow, exchange, share, or sell his farm produce, including seed of a protected variety. There is no restriction. Are not entitled to sell seeds of registered variety in branded manner. Branded manner की definition बहुत simple है. फार्मर पैकेज करके पैकेट मार्केट में नहीं देगा, ब्रांड नहीं करेगा, बाकी वो दे दे. सीड आपको बता के दे दे ये सीड उस वेराइटी का है, इट्स ओके. उसको कोई तरह का पनिशमेंट या कोई उसको क्यों नहीं कर सकता. लेकिन वंस ही हैज ब्रांडेड, इट मींस ही इज मार्केटिंग, एंड इफ ही इज मार्केटिंग he is liable to the same principle of a company. बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं बहुत सी चीजों के. नेशनल जीन फंड supports reward and award to farmers, community of farmers, particularly to the tribal area, rural communities, whatsoever they are, for engaged in the conservation, improvement, and preservation of genetic resources. And this has worked well. A large number of people have been benefited, and a good amount has gone to them. I will show you next. This is plant genome savior under this rule, and maximum 5 awards consisting of citations, 10 lakh rupees are given with memento. Now we can think it's a good amount. At least for 4-5 years, he can maintain those varieties which he has conserved. Then there is a plant genome savior farmer rewards or in recognition. That is only 1,05,000. This is for individual farmers. 1 lakh for recognition, and so many awards have been given. You can see how large amount it is. थोड़ा इसको हटाएंगे. ये इंटरनेशनल मार्केट है, फॉर्मल सीड का इंटरनेशनल मार्केट. It is growing, and Indian market is definitely growing better than international one, because the international market has more or less saturated with that, and US is leading in that. Most of the seed in US is formal. We don't have still that formal seed. So this is how in 2031 we think of this many USD million dollars. This I will explain. New variety is one which has, after production of this variety or development of that variety, it has not gone for distribution or commercial purpose for 1 year at least before the filing of the application for registration. बस नया का definition इतना ही. Extant I have explained. Farmers variety here. आगे नहीं चलेगा. अच्छा ठीक है. अच्छा ओके स्टूडेंट उन्होंने कर दिया. These are the requirements. PV1 form is to be filled. He has to give the declaration that no GERT affidavit.
What is NOGAT? Genetic use restriction technology. या terminator gene technology. He has not used. And GSC clearance that there is no GMO or gene introduced in that variety. Extent variety, I said, I have told you, notified under Seed Act 1966 before the commencement of this PPFRA Act. Farmers varieties, varieties of common knowledge. That can be extent varieties. New varieties, I just told, they should not have distributed or sold in the market in before 1 year of registration, filing of registration. These are requirements. Passport data should be given. Then these affidavits, applicable fee, yeah, registration fee is there for companies and even for notified varieties from public domain. Public domain fee is very nominal, 2,000 rupees, but for companies it is quite big. All applicable fees and registration fee, dust test fee is also required, but not in farmers case. Dust test is required for the new varieties for 2 years at 2 locations. And for that fee, the applicant is supposed to give. Registration is valid or the protection is valid up to 18 years in case of trees and vines, and other seed crops it is for 15 years. But they have to get renewal after 9 and 6 years and extendable for another 9 years. Distinctiveness means any variety which comes for registration in the dust test should be distinct with respect to at least one character. If it is not distinct with other varieties for at least one character, that is not registrable. Because otherwise, more or less similar materials may keep on getting registered. Uniformity, the material which comes should be uniform so that it can be identified with other varieties or materials. Stability, year after year, it should maintain its performance. Otherwise, it will be difficult to ascertain the characteristics of the variety and identification of that variety. This is fee structure. Renewal fee is quite high. Some cases, these are forms to be filled by the applicants. Even if we get an application after IPR and after dust test, those results are to be published in PVJ, Plant Variety Journal. And 3 months are given to all the Indians or anybody to oppose it if there is some issue. Suppose some breeder says it is my variety is claiming, then he can oppose it. Or any material, if it is used, your material or something, then you can oppose it. So 3 months are given for opposition. If that opposition is gone, period is gone, we serve the certificate. Renewal fee, fee for registration of extant variety. It is mostly from notified varieties, so it is 2,000. This is the procedure we follow. These guidelines are developed for each and every crop. And once developed, this is notified by the Gazette. Presently, we have 206 varieties notified. Even if there is some variety from a non-notified crop, it can be submitted at least in the case of farmers. And that will be, with some consideration, registered.
and the certificate will be given in due course. So application is received, seed is to be deposited, then this is the requirement: 2 seasons, 2 locations. For VC and farmer variety, 1 season, 2 locations. So only in 1 year you get the certificate of registration. Analysis of dust data. These are notified special centers. These are also notified by the government. Then registration is granted after dust testing and all. And even if after registration somebody can surrender his registration, there is no issue. Dust test shall be in the field and at multiple locations, at least 2 crop seasons. In the case of trees and vines, it is important. In case of trees and vines, on site, dust test is done. Suppose you have a very good tree. I will give you some examples. Any crop, pomegranate you have, and it is special. You can just file an application, say the location is this. The experts will go there and they will record all the dust tests and give the registration. Special tests, in case dust tests fail, then we have some molecular or biochemical tests to conduct and identify the uniqueness of that variety. So dust test shall be necessary for all new varieties except essentially derived varieties or essential derived varieties, because it is accepted to be predominantly derived from initial variety. So if we know the performance of initial variety, this can be exempted. इसको हटा सकते हैं क्या? We have 206 crops notified. This is the list of crops. These are dust centers. All over India, they are spread. चलो गया कहाँ गया पता नहीं कहीं कहीं बीच में आता है For perennials, we have field gen banks for perennials. There they maintain all the varieties in triplicate. फिर आ जाएंगे ठीक है okay. This is PVJ format. How we publish the dust results of a variety in our journal. Certificate of registration, we give some characters also, and then all the details of farmer with certain conditions we put it here. It is in English and Hindi both. These are crop-wise applications received all over India. These states are comparatively less represented, but there are good number of varieties from Jharkhand, Bihar, West Bengal, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, even it is good. So this area is contributing more than other areas. Rajasthan is Thule, Haryana. I think most diversity remains in this period. Of course, this period is even less represented. The total varieties forms we received were something like 21,000. Of that, most of those applications for farmers variety.
certificates issues are almost half to that of farms received. So total, again, farmers were given more certificates than other varieties. Even public sector is not that enthusiastic, but now things are improving because backlog has been cleared. Now they are submitting the variety. The farmers one are the most abundant. My goodness. मेरे वाले में तो ऐसा नहीं था, पता नहीं कब हुआ. बैक कैसे जाएंगे? See, the privates, they are more interested in the crops where they have hybrids. But in case of public, it is a mixture of hybrid and other varieties. Whereas farmers, normally it is traditional variety or and similarly the certificates were more for cereals. But other crops are also coming now with medicinal and aromatic plants now catching up. Vegetables are also catching up. But mostly hybrids are important in these crops. ठीक है. Global scenario, most of the varieties are again registered by China, US, and we are not here in this group. We are less than 10 in number, but now this year with the registration of around 10,000 applications or varieties, we will be appearing in this group. This is the example of a variety registered by a farmer and he is earning a good amount. 3 lakhs he has earned within 1 or 2 years. This is bigger than our what you call this Bhagwa variety. This was a selection from Bhagwa. And you know in horticulture, single plant or single spot becomes a variety. So he selected one plant and now he is earning a lot good. This quality is also good. This is jackfruit. See the color and taste, crispiness, everything has changed. Yield is even better. It is registered and he has earned about 1 crore or so from planting material. So these are the examples how people are earning. This is another jackfruit variety. Now, there are so many examples: tamarind, nutmeg, turmeric, guava, apple. This apple can be grown in plains. This doesn't need that wintering. These are some varieties that have been promoted by NIF, National Innovation Foundation. It's a government agency. They have facilitated their commercialization. So little variation in taste, in color, in crispiness, in yield, in shape and size. You know, पहले जो तरबूज आते थे बड़े, now nobody is taker of those. Everybody buys a small one which fits into a family of 4 members. So the varieties which are coming are small size. So this way, any flash color from red to yellow, even that fetches market.
So all those things are registrable and commercial work. EDV is still an issue. They are deliberating on this, and some guidelines are under revision. These are more important activities we are taking up. Pendency we have reduced. Oh. आप लोग कुछ ज्यादा ही थक गए थे तो मैंने कहा ज्यादा टाइम ले लिया क्या? नहीं लिया। कुछ कहीं फायदे की चीज है क्या? क्या चीज फायदे की है? कोई बताएगा? या कुछ फायदा नहीं होने वाला है? Thank you, sir. Although I missed because I have some expenditure related queries and other things, so I want to attend those queries. Thank you, sir. I think मैं सर को जानता हूँ, तो इसलिए I hope कि you might have enjoyed that his lecture. और PBFRA इतना important topic है for the breeders, for the students and for the farmers also. और चूंकि आप सभी लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और ज्यादातर लोग हम लोग किसान परिवार से आते हैं, ठीक है, वी आल मोस्टली वी कम्स फ्रॉम दी फार्मर्स या फार्मिंग कम्युनिटी बैकग्राउंड। तो ये जो आपके लाज हैं जो which has become effective from 2003, although that act was passed in 2001, तो you might have learned many thing new thing। सर के टॉक से आपको बहुत सारी बातें नई मालूम चली होंगी। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं। यू मे लाइक टू ask few questions from sir if you have any query, please anyone among the students। स्टूडेंट ने कोई सवाल नहीं पूछा है और अब स्टूडेंट्स की बारी है, कम से कम 3 स्टूडेंट सवाल पूछेंगे। मैं नाम लूँ इसके पहले आप ही लोग पूछ लो। पूछो पूछो, खड़े हो खड़े हो। के पूछ रहे हो? पूछो, क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ पूछो। PBFRA चलिए बैठिए 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 बैठिए। मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं तो भी उसका क्या होना है? आप रजिस्टर नहीं करवाते हो, आप रजिस्टर नहीं करवाते हो तो भी उसका क्या होना है? बैठो बैठो बैठो। सर पहला ये कि क्या ये रजिस्टर्ड करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप फार्मर्स के नाम से करवाइए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, डर हमेशा रहेगा, चीजें ऐसी हैं, बट यू नो देर इज सम सिस्टम दैट मे सपोर्ट यू। वीट की वैरायटी है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, आप शेयर तो करेंगे ही करेंगे, तो बेटर टू रजिस्टर इट। आपका कुछ भी तो नहीं लग रहा है। दिस इज ए प्रोटेक्शन। मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिखाए फ्रूट्स के, वो कटिंग से चलते हैं, फिर भी 1-1.5 करोड़ तक कमाया लोगों ने, बिकॉज पीयर साइकोसिस तो काम करता ही है ना कि भाई रजिस्टर्ड है मेरी वैरायटी, आप नहीं कर सकते। असेसमेंट के फॉर्म देखो इसको। यू हैव टू फॉलो योर वैरायटी, नहीं नो डाउट अबाउट इट। आप फॉलो करेंगे तो लोगों को रोक पाएंगे, नहीं तो आप शिकायत भी कर सकते हैं और एक्शन कुछ तो होगा ही होगा, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं है। इकट्ठा कर लिया, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब बात रही एनालिसिस डीएनए वगैरह की, तो ऐसी कोई अभी रिक्वायरमेंट आपके उस पर नहीं आ रही है। हाँ, अगर वैरायटी कॉमर्शियलाइज करते हैं तो दूसरा सीड एक्ट आ रहा है, उसमें वो डेफिनेटली
जो है कोऑर्डिनेटेड ट्रायल्स वगैरह का एक मैकेनिज्म है, तो वो एक इशू आता है। लेकिन आप अगर पीपीवी एफआरए में रजिस्टर करके कमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं, तो अभी सीड एक्ट आया भी नहीं है, वो सीड एक्ट कैसे रिएक्ट करेगा वो बात की बात है। पर आप रजिस्टर करवाइए उसको, और उसके बाद में आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो कंपनी से टाई अप करिए, उसमें भी पीपीवी एफआरए आपकी मदद करेगा, थैंक यू सर, और थैंक उसके यू, बाद में आप काम करें। थैंक यू। एनीवन एल्स लाइक टू रेज एनी क्वेश्चन? हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स में से जो नए लोग आए हैं उनमें से कोई एक सवाल पूछे, पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ, कौन पूछ रहा है? टेक्निकल ऑफिसर्स में से कोई सवाल पूछ रहा है? नाम लूं मैं? ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं कोई? आप लोगों को सब समझ में आ गया या कुछ भी नहीं आया? ज्यादातर इंजीनियर है इसलिए उनके समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, आया है? क्यों भाई, नए टेक्निकल खड़े हो जाइए जरा, नए 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 टेक्निकल ऑफिसर जो ज्वाइन किए हैं, फटाफट जल्दी जल्दी खड़े हो भाई। और कौन है? खड़े हो, आप भी, आप भी। हाँ, ठीक है, आप लोगों की समझ में आया? और कौन बचा है? खड़े हो भाई, नए हो आप भी। हाँ, और किसी और कौन बचा है? आप लोगों की समझ में आ गया? आया? सर ने जो बताया आया है? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया है? ठीक है, चलिए बैठिए बैठिए बैठ जाइए। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछना, उसके पीछे एक साइकोलॉजी ये है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व, वी डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये फंक्शनिंग या ये काम हमारे लिए, अपने को लगता है हमारे लिए नहीं है। तो बहुत सी चलिए, ऐसी चीजें होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको इस एरा में रहना है तो इस तरह के मैकेनिज्म में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर इन्वॉल्व होना है तो ठीक है, ये एक प्रिलिमिनरी लेक्चर है, तो कोई ज़्यादा वो नहीं होता, बस आपको एक आइडिया लग गया कि इस तरह का मैकेनिज्म है। यू कैन रीड ऑन द साइट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक सजग रहने की बात है, ये मैं बहुत समय से एक लेक्चर देता आया हूँ हर जगह, कि फ्रूट्स में सिंगल प्लांट से वैरायटी बनती हैं। एक ट्विग भी अगर अलग है और उसको आप अलग से मेंटेन कर लेते हैं तो वो एक वैरायटी बनती है। नाउ इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू यू कि आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। इसको मैं आपसे जोड़ने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ बार बार, कि आपको इसमें इंटरेस्ट आए कि ये एक अर्निंग का सोर्स हो सकता है। मे नॉट बी योर प्राइमरी अर्निंग, बट सेकेंडरी अर्निंग, एंड दिस लीड्स टू अवर वेलबींग ऑफ द कंट्री, द एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है। फाइन, आगे बढ़े। सर एनी पीएचडी स्टूडेंट, कोई पीएचडी स्टूडेंट जो है यहाँ पर, वो लोग पूछना चाहे कोई सवाल? कितना तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने, ठीक है। और कोई? बहुत सारे पीएचडी के ब्रीडिंग के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, और कोई पूछ रहा है? पूछो कीर्तना, चलो तुम ही पूछो। These are dust traits. There are several of them. We just evaluate for those all those traits. And if your material is different from all the material, even for one trait, desist. It's not any one trait. But if you have something special trait and you want कि भाई इसका कमर्शियल वैल्यू हो सकता है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है, या रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत नहीं है। दैट इज फॉर योर कमर्शियलाइजेशन, that my web material is this, I have registered here. Now if somebody wants to take it for this character, okay, benefit sharing is there. ओके, That's all. सिट डाउन। ओके सर, थैंक यू सर। पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, अभी पूछना जरूरी है तुम्हारा तेज सिंह? काम नहीं, पूछो। हाँ। तो ये देखना है कि आपका मटेरियल कमर्शियल हो सकता है कि नहीं। अगर कोई स्पेशल रेट है तो 10 रिस्पॉन्स इज द फॉर्म कि हमारे पास है, तो ये करेक्टर है, आई वांट टू रजिस्टर, आप इसका बताइए। हमारे के ऑन साइट आपके पास है, आपको बाद में उसका रिपीटेटिव प्रोपोर्शन करके देना है 3 का।
ठीक है। डॉक्टर तेजवीर सिंह, नाउ यू कैन आस्क, या प्लीज सवाल पूछो, पूछो। पूछिए। हाँ, मैंने कहा नॉन नोटिफाइड बोलते हैं उसको। तो अभी नॉन नोटिफाइड के लिए अथॉरिटी अथॉरिटी 15 लोगों का एक ग्रुप है। उसने चेयरमैन साहब को कह दिया है कि अगर कोई वैरायटी ऐसे आती है जो नॉन नोटिफाइड क्रॉप की है तो आप प्रोसीजर में ले लीजिए। बाद में उसको नोटिफिकेशन का प्रोसेस बाद में चलता रहेगा, लेकिन आपकी वैरायटी को रिलेटेड वैरायटी से, या हम उपो में देखते हैं कि उसके कोई करेक्टर अवेलेबल है, या कहीं पे भी अगर हमारे को करेक्टर अवेलेबल मिलते हैं तो हम उन करेक्टर के बेसिस पे उसको इवेलुएट करके रजिस्टर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर, तो नॉन नोटिफाइड वैरायटीज को भी आप करवा सकते हैं। thank you sir, and I think that was the last question, and who has not asked the question will ask the opportunity. Okay, so and with this we are completing this session. We are really thankful to Dr. R.S. Sharma sir, who is one of the most experienced person and looking after the PVFRA related activities now. And we are fortunate to have him. I'm regret sir ki you had to wait for a long time to deliver the lecture, but due to the urgency of other speaker, forced to we have been forced to reschedule this talk. So with this, now we come to conclusion. Dr. Tejveer Singh, now it's your turn to for the vote of thanks. Please come. ठीक है सर, भेज दो। सो कैसा रहा वर्कशॉप? लेक्चर कैसे थे? Now we are at the end of this workshop. This is my privilege to propose vote of thanks. So first and foremost, I express my sincere gratitude to our director sir for giving this opportunity to organize this important workshop on the important topic, and also guiding us and encouraging us. By that we can organize this important event. And most important is our resource person. I express my gratitude to Dr. R.A. Sharma sir, Dr. Shival sir, Dr. H.B. Singh sir, Dr. Vikram Singh sir. सभी के लेक्चर बहुत अच्छे थे। आप लोगों को भी ये महसूस हुआ होगा। डॉक्टर शिवाल सर, डॉक्टर R.A. शर्मा सर को सुना, बहुत सारी चीजें बिल्डर्स जो भी होंगे या प्लांट बिल्डिंग सब्जेक्ट जिसका रहा होगा उनको समझ आई होगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उनके माइंड में रहे होंगे जो अभी क्लियर हुए होंगे। पेटेंट से रिलेटेड शिवाल सर का जो लेक्चर्स था वो भी बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि अब हमारे माइंड में ये जो नया साल स्टार्ट होगा हमारा पोर्टफोलियो IGFRI का पोर्टफोलियो, आई थिंक बहुत सारे पेटेंट फाइल होंगे इस नए इस फाइनेंशियल ईयर में। तो सभी के लेक्चर बहुत अच्छे थे। तो मैं सभी रिसोर्स पर्सन को अपनी तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। वी आर डीपली थैंकफुल टू UPCST क्योंकि वो हमारे स्पॉन्सर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो उनके स्पॉन्सरशिप के बिना प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं था। तो वी
our organizing team are thankful to our sponsor UPCST. मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ अथॉरिटीज का जिन्होंने RLB-CAU, काफरी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्टूडेंट को एनकरेज किया अलाउ किया इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारी टीम इसमें स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पवन है, इनका स्टाफ, जो भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प किए हैं वो कई दिन से लगे हुए थे, तो इन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इनकी एफर्ट के बिना ये प्रोग्राम करना सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं था। तो मैं इस पूरी टीम को और यादव सर को जो इंचार्ज हैं ITMU के, इन सभी को तहे दिल से इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर, साइंटिस्ट जो एज ए पार्टिसिपेंट जिन्होंने रजिस्टर्ड किया और पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड once again I thank each and one of you for your presence and contribution in making this workshop a grand success. Thank you all. एक चीज भूल गया, ठीक है। वी आल्सो थैंक टू आवर हेड ऑफ डिविजन्स, all the scientists and the administration and the finance who has supported to us to organize this program. और हमारी टीम ITMU की जो टीम है उसमें डॉक्टर के सिंह साहब हैं, डॉक्टर तेजवीर हैं, डॉक्टर सिमानी हैं। इन तीनों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत मेहनत की है। PME ने बहुत सपोर्ट किया है। PME इंचार्ज डॉक्टर RB कुमार साहब हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मेरी टीम को स्पेशली जो कई दिन से लोग काम कर रहे थे। तो thank you to one and all, and I hope that through this workshop we could have been able to generate interest in the IPR, and you will rethink whenever some results or data will come that how your data can be protected without even publication, and how you can earn that। HB सिंह साहब ने बोला 2-3 करोड़ रुपए सिर्फ एक से मैं अर्न कर रहा हूँ, इससे केवल एक कंसोर्शियम के से करने के लिए। और डॉक्टर तेजवीर सिंह हमारे खुद ही बहुत बड़े बेनिफिशरीज हैं। इनकी वेराइटीज हमने पिछले साल हम लोगों ने कमर्शलाइज की, एंड ही अर्न अबाउट 1 लाख रुपीज। तो ये सबसे बड़े बेनिफिशरीज ये भी हैं। लाइसेंसिंग के लिए कहा हुआ थिंग्स कैन बी गोइंग टू चेंज। तो विद दिस वी आर क्लोजिंग हियर, and you are requested to join us for a cup of tea out of this hall, and your certificates are kept on the tables where our research scholars are there. Go and tell your institute name, they will give you a certificate. Anyone who has not been given or who has not been able to get a certificate, please don't be discouraged. Write your name on the piece of paper, because total 165 people have registered, and we planned for 110 we expected not such a huge participation, so 110 certificate were there. So all those have been going to be distributed. Our senior people from the institute, like head of division, professor scientists, they will be given certificate in their chamber. I think tomorrow or day after, within 2 days, we are going to arrange the additional certificate for that purpose. So thank you. Jai Hind.